राष्ट्र के यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद जी के विचार हमें और देश के युवा को हमेशा से ही प्रेरित करते आए हैं। और उस समय जब पूरा विश्व ठहरा हुआ था, तब क्या राष्ट्र के युवा का मन और मस्तिष्क भी ठहरा हुआ था? बिल्कुल नहीं। युवा सपनों को, आकांक्षाओं को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने देना चाहिए, क्योंकि युवा नए आइडिया से, फ्रेशनेस से वो भरा हुआ होता है, ऊर्जा होती है, तेजस्विता होती है, शार्पनेस होती है, उस पर अतीत का बोझ नहीं होता। युवा विचार, उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा को दिशा देना किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक रहा है। इसलिए सर्वव्यापी इस महामारी के बीच में युवा महोत्सव का आयोजन एक कठिन चुनौती थी, पर पूरे देश के युवा को एक मंच पर लाना, उनको प्रोत्साहित करना, यह भी जरूरी था। इसलिए इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हुआ। पिछले 20 दिनों में राष्ट्र ने युवा प्रतिभा और इच्छा शक्ति का एक अविस्मरणीय उदाहरण देखा है। राज्यों के स्तर पर अनेक जगहों पर 7 लाख से ज्यादा युवाओं ने 24 प्रतियोगिताओं में भाग लिया। देश के युवा वर्ग को रचनात्मक और सकारात्मक गतिविधियों में शामिल रखना हमारी प्राथमिकता रही है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के साथ मिलकर इस वर्ष कई आयोजन किए गए। हाल ही में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार किए जाने का विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास भी किया गया। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड के हिमालयों में विंटर एल्पाइन स्किल्स क्लाइंबिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में भी पर्वतारोहण के कार्यक्रम आयोजित हुए। युवाओं के विचार और सोच को मंच देने के लिए राष्ट्रीय युवा संसद का 698 जिलों में आयोजन किया गया। इसमें 2,34,000 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से राष्ट्रीय स्तर के 3 विजेताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश के हर युवा तक पहुंचने का बीड़ा उठाया और इसके लिए राष्ट्रव्यापी प्रसार अभियान को जारी किया। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही युवा महोत्सव और युवा संसद तकरीबन 1,10,00,000 लोगों ने देखा। हमारे लिए यह एक सुखद अनुभूति है कि हमने देश के लाखों युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन कर इस महोत्सव की भव्यता को कायम रखा। इन सब आयोजनों के साथ अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव देश के युवा वर्ग को एक नवीन ऊर्जा और प्रोत्साहन देने का अनूठा प्रयास कर रहा है।
राष्ट्र के यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद जी के विचार हमें और देश के युवा को हमेशा से ही प्रेरित करते आए हैं। और उस समय जब पूरा विश्व ठहरा हुआ था, तब क्या राष्ट्र के युवा का मन और मस्तिष्क भी ठहरा हुआ था? बिल्कुल नहीं। युवा सपनों को, आकांक्षाओं को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने देना चाहिए, क्योंकि युवा नए आइडिया से, फ्रेशनेस से वो भरा हुआ होता है, ऊर्जा होती है, तेजस्विता होती है, शार्पनेस होती है, उस पर अतीत का बोझ नहीं होता। युवा विचार, उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा को दिशा देना किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक रहा है। इसलिए सर्वव्यापी इस महामारी के बीच में युवा महोत्सव का आयोजन एक कठिन चुनौती थी, पर पूरे देश के युवा को एक मंच पर लाना, उनको प्रोत्साहित करना, यह भी जरूरी था। इसलिए इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हुआ। पिछले 20 दिनों में राष्ट्र ने युवा प्रतिभा और इच्छा शक्ति का एक अविस्मरणीय उदाहरण देखा है। राज्यों के स्तर पर अनेक जगहों पर 7 लाख से ज्यादा युवाओं ने 24 प्रतियोगिताओं में भाग लिया। देश के युवा वर्ग को रचनात्मक और सकारात्मक गतिविधियों में शामिल रखना हमारी प्राथमिकता रही है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के साथ मिलकर इस वर्ष कई आयोजन किए गए। हाल ही में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार किए जाने का विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास भी किया गया। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड के हिमालयों में विंटर एल्पाइन स्किल्स क्लाइंबिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में भी पर्वतारोहण के कार्यक्रम आयोजित हुए। युवाओं के विचार और सोच को मंच देने के लिए राष्ट्रीय युवा संसद का 698 जिलों में आयोजन किया गया। इसमें 2,34,000 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से राष्ट्रीय स्तर के 3 विजेताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश के हर युवा तक पहुंचने का बीड़ा उठाया और इसके लिए राष्ट्रव्यापी प्रसार अभियान को जारी किया। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही युवा महोत्सव और युवा संसद तकरीबन 1,10,00,000 लोगों ने देखा। हमारे लिए यह एक सुखद अनुभूति है कि हमने देश के लाखों युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन कर इस महोत्सव की भव्यता को कायम रखा। इन सब आयोजनों के साथ अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव देश के युवा वर्ग को एक नवीन ऊर्जा और प्रोत्साहन देने का अनूठा प्रयास कर रहा है। राजस्थान चंदा है तू मेरा सूरज है तू। सुन रही है? क्या है? लल्ला रो रहा है भीतर। अरे रो रहा है वो, तो जाके देख ना। जब पहले कहती थी ओ लल्ला मेरा है, सारी दुनिया में कहती फिरती थी मैं हूँ उसकी। उधर बच्चा रो रहा है, इधर घुटनों में मुंह दिए बैठी है। मुंह दिए बैठी है, जाके देख उसे। लल्ला पेशाब कर दियो है। चपक लगा मुंह पे, चमक जाएगी तो मेरी बनना। हट कभी नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि पोतड़े का सुखा दिए तूने, बदल दूं तो फिर सो जाए लल्ला। अच्छी नींद से जागा। सीढ़ियों के नीचे अंधेरे में वहीं सुखाती हूँ हमेशा। ए भाई हाँ गए नानी कहती थी मेरी,
पोतड़े को अगर उजाले में सुखाया तो बच्चे को बुरी नजर खा जाती है। बहुत भली औरत थी रे मेरी नानी। मेरी माँ भी भली औरत थी, पर करती क्या मेरा? अरे छक्का जना था ना उसने। क्या हुआ रे? क्यों अलकार हो रही बैठे बैठा? किसी को क्या फर्क पड़ता है, हम मरे कि जिए? तेरे मरे दुश्मन। लल्ला की सोच, लल्ला की। क्यों, क्या हुआ? अरे पोतड़े तो मिल गए ना। मिल गए जी, और बदल भी दिए। लोरी सुनाई, सो गए नंदलाल। कितना सीधा है ना मेरा राजकुमार। तेरा राजकुमार जैसे मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो तू ही ले जाइए ना लल्ला को, पूरी होगा टीका दिलवाने। क्यों? तेरी क्या माँ मर गई है? या हाथ पाँव में मेहंदी रची है? मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? ए, पूछेंगे तो कहाँ से लाए? अरे बोल देना, आसमान से टपका है। उठा कर लाए हैं लल्ला को, तो किसी से डर है? खाकर क्यों लाएंगे? और क्यों लाएंगे उठाकर? और आपके पिल्ले सारे सब के सब। खाने का दर्द क्या होता है? मालूम है क्या किसी को? मुझसे पूछ। अरे पूछे कोई मुझसे। बाप की सूरत तक आता है मुझको। मामा की जान, मैंने रखकर तुझको करते नहीं क्या? अरे कहाँ से राजकुमार ने जाता? अच्छा हुआ जो छोटी उम्र में चली है। माँ नहीं कहती थी मेरी, भगवान राम के सेवक होते हैं किन्नर। भगवान राम 14 बरस के वनवास को चले, पीछे पीछे जनता चली। राम जी ने बोला, लौट जाओ सारे स्त्री और पुरुष। लौटते लौटे, अंत में भी लौटे, लेकिन पीछे हटे कहाँ किन्नर? देखा भगवान राम के साथी। अरे राम, तेरी गंगा मैली हो गई। अरे पापियों के पाप धोते धोते। अरे भाड़ में जाओ, भाड़ में। तुम्हारे बच्चे को क्या छू लिया? नाना हो गया क्या वो? बताओ कैसे है ईश्वर ने हाथ लगा दिया बच्चे को? दुआएं दिया मैंने उसको। इंसान का बच्चा हो या जानवर का, अंधा लूला लंगड़ा कुछ भी हो, सबको कलेजे से लगावे। अरे जमाने भर का प्यार लुटावे। पर हमारा कोई घर नहीं, हमारा कोई परिवार नहीं। हमको भी तो उसी ऊपर वाले ने बनाया है ना। पर हमको कलेजे से लगाने को कोई नहीं। छोड़ी हूं ना तेरे को कलेजे से लगाने को। हो ना, सेठ के लौंडे ने बाप को ही चक्कू मार दिया। रिश्तेदारी ऐसे पंचर हो गया है। देखती नहीं क्या तू? मैं तो कहती हूँ किसी को बड़ा ही ना होने देवे राम जी। जब बच्चा खेला दुनिया में, फिर दुनिया खत्म, सब झंझट ही खत्म। हमारी बच्चा कैसे चलेगा फिर? बच्चा बच्चा खेला दुनिया में, फिर दुनिया खत्म, फिर बच्चा बच्चा खेला दुनिया में, फिर दुनिया खत्म। बस ऐसे ही चलता रहे, शुरू खत्म शुरू खत्म। अगर ऐसा होता तो नहीं ना मेरी सोन परी। तू सोचती, मैं सोचती, मगर इधर आने को न
तो सोची ना मैं आ गए ना बातों पे लगा दिया तुमने मेरा बच्चा भूखा हो गया है अपने लल्ला का ऐसा ख्याल रखेंगे ऐसे पालेंगे जैसे राजकुमार बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे री बहुत बड़ा न छोटा अपने लल्ला को बनाएंगे खुशबूदार फूल बंध गए हैं मौसमों के सारे अब छोड़ तुम किसी से भेदभाव नहीं करेगा सब चुन चुन हवा के जैसा पानी के जैसा धरती के जैसा आकाश के जैसा कीड़ा पड़ा सारा बदन में कैसे कल जीवी बोली है उन्हें सिलेस के दूध पिया बच्चे ने अब तक सुबह से कुछ भी नहीं खा रहा है वो कुछ का नहीं तेरे को अब ठीक है पहले से 5 रुपए बांट के बोल दिया गुरुजी को सो रहा बिना हिला डोले लला सोची लल्ला छोड़ गया हमको पावी हो गई है क्या मुझको डर लगता है काहे का डर कहीं ना जाएगा हमारा जाया कभी हमको छोड़कर जाएगा तो नहीं ना नहीं कभी नहीं ये तो खेलेगा हमारे साथ फिर बोलना सीखेगा कभी तेरे को अम्मा अम्मा कह के पुकारेगा कभी मेरे को अप्पा अप्पा कभी तू अप्पा कभी मैं अम्मा चलना सीखेगा तो छुप जाएगा उधर उधर चारपाई के पीछे तू पुकारेगी लल्ला नहीं सुना रही उसने लल्ला जी ओ लल्ला लल्ला जी लल्ला कहाँ छुप गए लल्ला जी अरे आओ ना लल्ला जी लल्ला ओ मरकाना लल्ला 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 जी लल्ला लल्ला
बांसता है तेरा खोपड़ा चूहे मारे तेल से जारी चूहा लाला देख तेरी माँ को तू भी देख तेरी अम्मा को देख पार्वती भैया जो झूठा सपना हमें जीने का मकसद देता है ये क्या गलत है? डाल दे जान इस पर भी डाल दे हमें जीने का मौका दे दे माँ दे दे हमें भी जीने का चंदा है तू मेरा सूरज है तू चंदा है तू मेरा सूरज है तू मेरे ख्वाबों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख के इस टूटे दिल का सहारा है तू चंदा है तू मेरा सूरज है तू। स्वागत है आप सबका राष्ट्रीय युवा महोत्सव के चौथे दिन में। पिछले 3 दिनों में देश के युवाओं के अलग अलग रंग और चेहरे देखने को मिले। कहीं संगीत तो कहीं शब्द, कहीं ठहाके तो कहीं रंग। युवा ऊर्जा से ओतप्रोत मैं लेकर आई हूं चौथा दिन, और बाकी दिनों की तरह ये भी आप सबको मनोरंजन और ज्ञान तो देगा ही साथ देश की विविधताओं से भी परिचित करवाएगा। देश के चुनिंदा युवाओं के साथ अगर आप ज्ञान सागर में गोते लगाने को तैयार हैं तो चलिए मेरे साथ नॉलेज सेशंस में, जहां हम देखेंगे प्रतियोगी खंड, एलोक्वेशन कंपटीशन, और इसका विषय है यूथ एंड आत्मनिर्भर एरा ऑफ स्टार्टअप। तो सबसे पहले आ रहा है पहला राज्य त्रिपुरा। Today, in this example speech competition, the topic that I have chosen is communication skill. Well, if we talk about our skills, we have so many skills like drawing, painting, and all these stuffs. But nowadays, in the 21st century, it is one of the strongest, one of the strongest skill that we need to grow and we must have. That is communication skill. If we are not well in communicating, then how can we work? Whatever it is, if you are a sports person, business tycoon, politician, sports, and whatever you do, if you are a teacher and you don't have that quality of communicating well, you can't succeed in the society. The society won't accept you. If someone has a vast knowledge about any different topic or whatever in a different subject, but he can't express himself wisely and in the positive way, then that person can't be successful in his way. My friends has already said about this, but what we need to grow as a youth, as a responsible citizen of this country, if you want to go work and abroad, we must have that skill. If we can't be proper and we can't be confident on ourselves, then it will show on our face, on our expression, on our body language. So we must have increase that quality of communication skill. If I talk about any person who is sharing his experience about his all the life what he has gone through, but he can't express, then there is a lack of confidence. People would consider he has lack of knowledge about this. So
to improve day by day. It will give us a better way to present ourselves, to do well for our country, for our society, whatever we are. Let's talk about other skills. If someone is a writer, he can write so many novels, poems, and whatever he wants. But when it comes to express himself with people for whom he has written those, but he is not giving his best, he has some issues, some drawbacks to express himself, then it won't work. I guess it won't work. So if we have certain knowledge about anything, we must have that communication skill to work for our society, that we can relate to our people, whatever it is. If you talk about our in an office with our colleagues, if someone is a teacher with his students, his co-mates, if someone is a businessman or entrepreneur, if he can't express, if he has certain lack of energy to produce his products or whatever his services, then it won't work. With this belief that we as a youth of this country will build up that communication skill to present ourselves in the global platform, and we will bring a new sunrise for our country. With this belief, I would like to conclude my words here. Thank you. नेशनल युवा उत्सव, हम सबको पता है युवा उत्सव किसके लिए होता है? युवाओं के लिए होता है युवा उत्सव। पर इस नए युग में, इस नए दौर में हम लोग जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे हम लोग युवा को नहीं देख सकते ज़्यादा तादाद में, क्योंकि हमारे इस नए युग में एक परिवर्तन आया है, वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन की वजह से अब इस नेशनल युवा फेस्टिवल में या जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स होता है वहाँ पे युवाओं की उपस्थिति कम दिखाई देती है। और नेशनल यूथ फेस्टिवल हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे एज के जो लड़कियां होती है, जो लड़के होते हैं, वो इसके माध्यम से अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी जो स्किल है, वो सबको डेवलप कर सकते हैं और सबके सामने ला सकते हैं। नेशनल युवा फेस्टिवल हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल युवा फेस्टिवल के मदद से हम जब डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर उसके बाद स्टेट लेवल, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे जाते हैं, तो जब हम लोग ऊंचे स्तर पे जाते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे सुविधाएं आते हैं और हम लोग दूसरे से सीख सकते हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं। हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब मैं आई हूँ तो मेरे जो पहले जिन लोगों ने बोला, उन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, फिर उन लोगों से मैंने बहुत कुछ जाना। तो युवा फेस्टिवल इसलिए भी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। पर मैं बोलना चाहती हूँ, युवा फेस्टिवल में इस दौर में कम युवाएं आते हैं। उसकी वजह मैं बोलूँगी मोबाइल फ़ोन, क्योंकि सारे दिन सब लोग मोबाइल फ़ोन में घुसे रहते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपनी स्किल्स को दिखाना, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। पर अगर किसी को बोले कि युवा उत्सव में आए, युवा फेस्टिवल में आए, आके अपने स्किल्स को दिखाए, वो लोग नहीं आते, क्योंकि उन लोगों के अंदर एक ऐसा रहता है कि हम लोग स्टेज पे जाके कुछ कर नहीं सकते, हम लोग नहीं कर सकेंगे कुछ, वो सब उनके अंदर आ जाता है। और युवा फेस्टिवल से हम लोगों को ये भी सीख मिलता है कि हम लोग युवा जो है वो कितने क्रिएटिव हुए, इतने नए दौर में वो लोग और कुछ क्या कर सकते हैं, क्या सीखे वो लोग इस नए दौर में। और युवा फेस्टिवल में हम लोग देखते हैं वैरायटी स्टेट से, जब नेशनल लेवल होता है या स्टेट लेवल होता है, वैरायटी स्टेट से बहुत सारे युवाएं आते हैं। और हमारी इंडिया पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक कल्चर है, फिर बहुत सारे स्टेट के वैराइटीज कल्चर है, वो कल्चर को हम लोग जान सकते हैं युवा फेस्टिवल के माध्यम से। और युवा फेस्टिवल हम सब के लिए, यानी युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। थैंक यू। If you are not growing technically and spiritually, you are half as dead. A very good afternoon to one and all present over here.
First of all, I'd like to convey my hearty respect and welcome to all the dignitaries present over here. Myself Ipshita, and today my topic to discuss is about communication skill. So first of all, the main criteria of us in this generation, in this civilization, is the communication skill. If you are well talented and intellectual enough, but you have no communication skill, you can't feel comfortable to communicate with others in a joyful manner or with spirit, then there is no value of yours. And this communication skill, if you are good at communication, if you can communicate well with any of the person of the society, then you have a merit, you have a hike in the society. So in every sphere of life, we have this as main criteria. We are going to the interviews for something innovative, or we want to showcase our talents. Or if you have no communication skill, then you will face a major disadvantage in every sphere of the life. So if we try to elaborate the significance of communication skill in this platform, we can say that yes, I can say that many of the people are intellectual, and many one of our country can deliver speech for 4 minutes or 3 minutes, anything they can do. But if they don't have that communication skill, they can't stand here and they can't deliberate themselves in such sphere of life. So communication skill, we are trying utmost to improve our communication skill. For example, we can take help from various social apps. We can utilize internet to improve our communication skill. Like several apps are there in which one used to talk with foreigners, or like they can learn English speaking, or they can improve their communication skill through social media or like this. So definitely there are involvement of Google or social medias, or so many apps are there. The youngsters or the startup businessmen also, they are doing their utmost to change the society, to bring upliftment in the app or in the software skills. So I just want to say that God bless the Googles or the Google Encyclopedia, whoever he or she is. So for that we are mainly learning a communication skill. I can't say that anyone is going to some institutions or like this. Majority they are indulging their time in social medias or like so many apps to learn about the communication skill, to improve their communication skill. This is a must in every sphere of the life. And of course we have to be more otherwise we can't raise our voice. So we have to raise our voice in the nation building also. If we can't raise our voice, then being a woman, being a human of the nation, I have no value being the human of this nation. Sikkim. Swami Vivekananda says, the future lies in the hands of youths who are intelligent, who renounce everything for the service of others, and are obedient to themselves and country at large. Respected judges, guests of honors, my fellow participants, greetings of National Youth Festival 2021. I am Pragandip Gurung, representing Sikkim, and in the country of diversity, I am here to make some points that yes, era of startup will make the Indian youth Atmanirbhar. In our country, the greatest challenges for the youths is unemployment. Can this be removed by big billionaires or big businessmen? No. They are in a process to use new technology and reduce manpower. To tackle this problem, the government of India, under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, has started startup in India in 2015. We all know India is a land full of talented people. However, the youth doesn't have many opportunities to fulfill their dreams and ambition. Thus, this campaign is a great kickstart for the youths to fulfill their goals and succeed in life. Youths have tremendous energy level and needs to trap for new India. Therefore,
To tap this energy level and encourage the youth, government launched various schemes. Number 1, Prime Minister Financial Empowerment Scheme. Number 2, Make in India. Number 3, Prime Minister Digital India Initiative. Number 4, Prime Minister Kaushal Vikas Yojana. Number 5, Prime Minister New Entrepreneurs Startup in India. Youths have the fresh ideas and passion. I think youth should not focus on negative aspect, but should be positive and look forward towards better future. We, as a youth, make our own economy, own job sectors, because we only have an upcoming ideas. Ritesh Agrawal, the co-founder of Oyo, he's the richest billionaire of the world, who is just 26 years, and he's from our country itself. He believed in himself and turned his passion into entrepreneurship. I guess it's not easy for everyone to do this, as it takes noble idea, positive attitude, and local partners to reach a height. The youth needs to understand how, why, and where one should invest and should have an investment idea. I would like to quote a slok from Bhagavad Gita. Anathyam yovanam balyam sariram devya sanchayaha bhavat tabhantaram yanti tarnavatna taratnam. Meaning, all the children and youths have possession which can be turned into anything and any step and has a tendency to change. As it's clearly mentioned in Bhagavad Gita, the youths have so much of potential inside them, which they just need to nurture it out and come out with flying colors. The beginning for all is the same, but the end of everybody, it's not going to be the same. The successful people were like you and me, criticized, challenged, and struggled, who had the same 24 hours, not a minute less, not a minute more. To make youths really Atmanirbhar, we need a weapon, and that weapon is education. Education here doesn't limit to books and copies. And with National Education Policy 2020, the education has far-reach boundaries, inculcating skills, education, experimental education, information technology has totally made youths and students ready for dimensions that the new India want. Youth should always focus one thing, because it's said by all the leaders, all the great thinkers, that youths are the future. But one thing all the youths should remember is your present defines your future. So my dear brothers and sisters, it's time to raise our flag and do something for ourselves. You build your own dreams, otherwise someone else will hire you to build his dream. I repeat, you build your own dreams, otherwise someone else will hire you to build his dream. Thank you, and have a mesmerizing day ahead. The Atmanirbhar Bharat Abhiyan scheme is the chance for Indian startups to take charge of the innovations for which we are usually dependent on global suppliers. It is a framework for building up a self-reliant India which would be competitive globally, or a self-reliant India which shall stand on 5 pillars of economy, infrastructure, technology, demand, and vibrant demography. Under this scheme, facilities are being provided to the budding entrepreneurs and unemployed through district industry centers. It has become a platform for a large number of unemployed youth and startups to help them start business that will stimulate the growth of the Indian economy. Business, or MSMEs, have been badly hit due to COVID-19, needs additional funding to meet up its operational liabilities built up, buy raw materials, and restart business. Corona had put the industry into crisis. As a result of this, both the industry as well as the workers were in trouble. Against this backdrop, the central government implemented the Atmanirbhar Bharat Abhiyan scheme. Startups means to create new indigenous companies that are funded and home ground in India, which creates job opportunities and adds money to the country. Startups can empower our rural workforce better by creating jobs and bringing something fresh and new to our villages. Even Reliance started from a man selling textile, and ITC just sold tobacco in its initial years. Today, these companies have expanded to become one of the huge industry giants.
offering products and services to people all over the world, as well offering employment to thousands. As the youth of this country, we must try to use our education for better, far more than getting a job. As a youth, far more than getting a job, we must try to create jobs, reach for change, and make a country a better place to live in. That is what we must use our education for. An entrepreneurial spirit has curiosity, awareness, resilience, and determination, and this spirit is what each one of us needs to imbibe. This scheme is a unique opportunity for every Indian startups to locally produce, innovate, and affordable products. We must try to create a nation full of job creators and not just the job seekers. We must build a nation. We need to build smart villages and several hundred smart cities to become active hubs of livelihood enablement, innovation, and job creation. Indian youth have the ability to influence the policy making in the country. Henceforth, start small, start somewhere. Potential of the youth is immense in changing the country, one small step at a time. What do you mean by youth? Is it something related or the group for the particular age? Well, I don't think so. People above the 18 years of age are considered as a youth, which according to me is quite inappropriate. Youth as a term shouldn't be defined in terms of age, but in terms of mentally, feelings and emotions of a person towards the society. There are the people who aren't be 18 years, but had fulfilled their responsibilities towards the society. So, basically, India is the oriented country, which can do anything, from starting startups and doing the big things in the life. Being Atmanirbhar is something that come across the pandemic and has taken seriously. It takes efforts to start from anywhere to reach somewhere, for which strong dedication and zeal is required. It's well said, take rest if you are tired, but don't stop. I repeat, take rest if you are tired, but don't stop. According to the UN resolution, the people of age between 18 to 24 years are considered as youth. The word youth is itself fills us with imagination of energy and passion. They are the most powerful people in the society and holds the most important place. Youth are the engine of the society, without which we cannot function. Any progress that humanity has made in the past was driven by the energy of youth, whether it was winning the war, revolutions, or the plugging the fields. It is and was always the strength and the passion of the youth that has helped the society function. It is truly quoted that with great power comes great responsibilities, which we as the youth should shoulder upon and take up the responsibilities. We are the chain which should function simultaneously without breaking. The two main contests with today's youth are the driven away from the responsibilities are techno addiction and substances abuse, which has taken the numerous valuable lives that could function as the powerhouse to our nation. The current world needs more of the human resources and the technologies, which can sort out the problems. But the real problem is not the problems and finding out the solution, but the finding of the solution in such a way that we live not just a limited life, but a sustainable life. The current India should be the working more into sustainable development. Our youths should be taking up ideas about the different startups which are the eco-friendly, economically feasible,
and affordable as well as useful in the multiple ways. Startups isn't always about the big business or the companies or something. One can start from the grassroots. One can just do the wonder from the bottom. For example, Devakar Basnet sir, CLO of invacation.com, he is also from our beautiful state Sikkim, has started the things from the scratch and has come up with ideas of learning of the tourism, which can boost minds of the youngsters. Now, let's line up, be in a group, unite and collect ideas that can change the fate of the nation. We are the powerful, and with the power, we have the responsibilities to take the society into the right direction. We can and we will. Thank you. Punjab. Greetings, ladies and gentlemen. My name is Sahas Jamal, and today I'm going to talk upon the topic of youth, Atmanirbhar, and the era of startups. Gentlemen and ladies of the house, I standing here with 15 minutes in my hand at this magnificent, rather venerable institution. I was going to tell you and show you what actually the youth of this country is. Just like everybody, I frisked through so many websites, I went through so many articles, but I couldn't find anything lucrative or what the youth of this nation actually is. But in a poetic way, let me just express you my way. The youth is not an age. The youth is a positive idea. The youth is like the wild rain deluging with its wild flow. The youth is as silent and melodious and canorous like the koel bird. The youth is as bright as the wild morning, and it's as romantic as the wild sunset. It is as cool as the moon, and it's as bright as the hot California day. The youth is like a volcanic eruption, full of ideas, full of positive energy, and the youth is going to take those positive energy, because today we have 226 million Indian students poised, in other words, to enter higher education, going through schools, getting ready for higher education. Now, this is happening at the time when the rest of the world is aging, right? So by 2021, I mean this very year, the average age of China is going to be heading well past 46. The average age of United States is going to be heading well past 40. Europe 46, Japan 46, but the average age in India is still going to be 29. And those 29 years of people, the average age that we have in India is leading to almost 55,000 startups in India. This is what I call as Atmanirbhar. Today, on this very moment, on this very second, on this very youth, when I'm talking to everybody over here sitting on this very venerable institution, the youth is leading to almost 10,000 rupees of crores of fund that has been released by the government of India. If this is not Atmanirbhar, I don't know what is Atmanirbhar. But today I'm not going to give you some very basic examples, because I'm going to tell you a very small narrative. In the late 1950s, 7 women took a loan of 80 rupees to experiment with their cooking skills. Today, those 80 rupees have got converted to 800 crores. Today, those 7 women have got converted to 43,000 employees. And today, that mere 80 rupees company has got converted to Lijjat Papad. This is Atmanirbhar. This is the taste and essence of India that interests your palate. Alright, let me give you one more example. A 13-year-old boy literally had no money in his pocket because he came from a very middle-class family. He had no experience of the outside world because he was 13 years old. But he had a very vehement plan in his brain that he had to deliver parcels in Mumbai in the coming 24 hours. And today, the net worth of that company, the turnover of that company, the revenue of that company today is 1,000 crores. That is Atmanirbhar Bharat. If that is not Atmanirbhar Bharat, I don't know what Atmanirbhar Bharat is. A waiter working in a small hotel. He had no money. So he started borrowing money from his friends and from his family. And in that very hotel, on that very foyer, on that very opening of the hotel, on the 15th of February 2020, he got the Economic Development Association Award
for his wonderful association towards the economic development, because his company's net worth today is 10,000 crores. That is Atmanirbhar Bharat. But I am seriously not going to give you the most cliche examples like Oya, Zomato, Uber, because, well, they are famed all across the globe. But I'm going to get you to the most grassroots level of this country. If you just if you just turn the pages of the history, and if you look at Chandragupta Maurya, who was given justice by a simple priest named as Chanakya, and just like Chandragupta Maurya had given justice to the entire country by defeating Dhananand in the famous war, this Atmanirbhar policy is also giving justice to 1.38 billion people living in this country. Ladies and gentlemen, Atmanirbhar Bharat is not an easy thing to do. Startups are not an easy thing to do, because the world ain't all about sunshines and rainbows. It's a very mean and a nasty place, and I don't care. Nobody cares how tough you are. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is going to hit as hard as life. But it ain't about how hard you are hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, why don't you go get out what you're worth? But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers at anybody saying, I ain't what I want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. As beautifully Michael Jordan puts it, I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost more than 500 games. On 26 occasions, I was trusted to take the game-winning shot, and I lost. And I lost over and over and over again. And that is why I succeeded. But as a coin has two sides, as a simple fire in a house is used to light up a stove to cook the food and can be used to burn down the same house, startups have both positives and negatives as well. Now, what we have to offer to the world today is $5 trillion of economy as our GDP. What we don't have to offer to the world today are 3 new scams being placed in this country every day, leading to 21,046 scams in just the first quarter of 2020. What we have to offer to the world today is that a 60% GDP is based upon doctors, laureates, and professors and social scholars. But what we don't have to offer to the world today is that we are super poor. What we have to offer to the world today is that we are building millions and millions of statues all around this country. What we don't have to offer to the world today is that a farmer today is dying out on the streets. There's some confusion, ladies and gentlemen. Let's just face it and let's just accept it, that there's some confusion that has been creating a farrago of distortions. We can accept that. But this land is not known as the land of people, of students, where they are carrying anti-national slogans in Delhi. But this is known as the land of Chanakya. This is known as the land of Swami Vivekananda, who taught the world that more than tolerance, you should have acceptance. This is known as the land of where there are 55,000 startups today. And this is known as the land of the young, fruitful, and brilliant nation that we so call it as India. I'm so proud to talk about India. But when we further talk about India, there's so many things that people do have to take care of. There's so many people dying on the streets. Well, we cannot be super poor and we cannot be super poor at the same time. But today, as the clock is ticking and this time is winding up, let me just remind you all that I am reminded of what startup actually takes it to be. I'm reminded of how a startup needs a young, fruitful, energized brain who's ready to take and ready to transform the world. I am reminded of the fact that perhaps the roles that China had played in the previous generations could be ours in the next. I am reminded of the fact that we need brains to not just ask questions related to not just why, but why not, right? I am reminded of the fact that we need a brain which can process and synthesize information that it hasn't ever studied before. And
this brain and the father of startups, according to me, in my humble opinion, ladies and gentlemen, was Dhirubhai Ambani, who worked on a petrol pump station. Outside, just at the foyer of petrol pump station, there were two tea stalls. The first tea stall used to sell tea for 50 paisa, and the other tea stall used to sell tea for 1 rupee. So the 50 paisa tea stall was considered to be the middle class tea stall where people like me used to go and sip tea. And the 1 rupee tea stall was considered to be people for toffs, for intellectuals, for high class people, for rich people. Whilst the income of Dhirubhai Ambani was just 2 rupees. So he used to go on the 1 rupee tea stall and he used to sip tea over there every day. When he became rich, when he became famous, when he became very stable, he was asked that, why do you go on that 1 rupee tea stall and why do you sip tea over there every day whilst your income was just 2 rupees? He said, and I quote, when I'll go over there, when I'll sit between intellectual people, when my vision will be broadened by their vision, I will have the same thought process. And ladies and gentlemen, mark my words today, that Atmanirbhar and today's startups are just like those 2 rupee income, whilst the tea is just for 1 rupee. So startups today are just for 1 rupee, and we have to struggle. We have to come out of this phase, and I'm pretty sure that we will come out of this phase. Startups is just like that simple fire which lights up a stove in a simple village to feed the farmers. And it's just like that wildfire which can destroy and disturb each and every single village in this country. Today it's on us how to take on startups. Today it's our backbone. Today we have 226 million Indian students. Today we have 74.04% literacy rate. And today we have 37,000 colleges. So we can be the future. We are the future. It's just on us how to take on the future. Thank you so very much. Jai Hind. They are the proud rage with an undying will, a never-breaking confidence, and a desire to change the world. They are the leaders, they are the conquerors, they are the fighters. They are the youth. A very warm good morning to everyone present over here. Today, I, Garima, am here to share my views on the topic, Youth and Atmanirbhar, an era of startup. The bud of the nation has found its fragrant bloom. The bud of the nation has found its fragrant bloom and is yearning to breathe free. Well, it's very rightly said that the zeal of the youth, coupled along with the posterity of the nation, can work wonders for the country. And I believe youth is the age of discoveries, it's the age of dreams. And with India being self-reliant, India being Atmanirbhar, I am sure that youth has been given an opportunity to expose their talents, expose their limits, expose their dreams in the form of startups so that they can be made into someone great. Quoting Sir APJ Abdul Kalam, as he says, there are only 2 types of people in this world, the experienced and the young. Well, I most certainly believe that when this country is armed with the startups, especially by the youth, people of my age group, all of us can certainly make a change to bring positivity in our country, to bring development in our country, so that one day there is no looking back. No matter it's urban or rural, right from the DIY artists of our country to Adivasi women who are making herbal sanitizers, our country has got it all. This era of startup has got it all. I can solidly ascertain you that yes, the youth of the country is taking India's ship across the world. It's sailing through the meadows, it's sailing through the winds, and is passing the oceans bravely. My spiritual leader, Vivekanand, once quoted that you give me 100 nachikets, you give me 100 nachikets, and I will make India into the #1 country.
because he believed that the soil of this country can be only made more fertile with the persistence, perspiration, and patience of the youth. Today, startups are not merely just a weapon, but a boon in disguise itself. When the Honorable Prime Minister of our country, from the ramparts of the Red Fort, says that yes, across this pandemic, we are going to face lakhs of problems, but I can also assure you that we have got crores of intelligent minds. And today I can proudly say that yes, I am one of those 130 crore Indians who is more certainly, firmly determined to make a change, who has a desire to do something for the country. Today, I believe that this youth has broken the glass ceiling. This youth, with being number 4 on the startup list. This youth, with starting up 50,000 startups per year, is making a change for sure. I believe that in adversities, the noblest expression of human spirit is explored. And so is the youth of this country. Therefore, I can assure you that the 21st century belongs to India. Thank you. Good afternoon, one and all. I'm Gurveen Geet Kaur and going to participate in the allocation. But before saying anything, I want you to imagine. Imagine that you are unable to visit your family for the Diwali celebration or any other special occasion. How disheartening that would be. But what will you do for the next time? Maybe for the next time you will book your tickets earlier or you will invite your family to your place itself. But there was one boy, the boy named Fanendra Sama, who tried to find the answer to the question that why booking a ticket is so complex and why it can't be centralized. The same thing happened with him, but he think in a different way. And do you know what happened next? The same situation turned him to a proud owner of a company called Red Bus India. And currently, it has a business of 220 million of tickets per year. This is a site which allows you to book your tickets online very easily. This is the power of one youth. What about that 250 million youth? Can't they do wonders by beginning the era of startups and making not only himself, but this whole nation Atmanirbhar? That is, youth and Atmanirbharta, the era of startups. We often blame government and the population explosion for the high unemployment rate in India, that is nearly 8%. But do you know that China, in spite of having a larger population than us, have an unemployment rate lower than us? That is nearly 3.5%. And do you know why? Because of citizens there don't believe in taking jobs, but they believe in making jobs. And this strategy of the citizen have turned their country to take a lead in the startup ecosystem. At a convocation in Assam, the cabinet minister, Shri Nitin Jairam Gadkari ji, quoted the same. Naukri मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो. Further, he added that the youth of our country have great knowledge of entrepreneurship and they can do miracles which our country is expecting from them. And it's not wrong to say, grind in your 20s, build in your 30s, and chill in your 40s. We all know that the worth of the nation is the worth of the individuals composing it. And if you have ever visited the website www.startupindia.government.in, or have you seen the improvement in the performance of India in the Global Innovation Index, that it has got it ranked from 52 to 48, then you must have got the proof that the youth of the country is not only becoming self-innovative, but self-Atmanirbhar, but he's also making this whole nation Atmanirbhar. May it be the founder of Tech Security Solution, Trishni Arora, or may it be the world's youngest web designer awardee, Sri Lakshmi Suresh. They all are trying to make India Atmanirbhar in web and technology sector so that we may not have to look towards USA and China for the same. Then we have some engineering students like Namisha and Naveen who have given us an alternative to the American cells like Duracell.
They have recognized the hidden power of aloe vera plant, and they have converted its chemical energy into electrical energy, thus giving this world the first 100% eco-friendly aloe cell. And we have many other young entrepreneurs like Pooja Badamikar, who is using the 3 R's: reduce, reuse, and recycle in the real sense by converting the discarded tires into pretty footwears. And not only this, we all know that every year nearly 3 million people die because of the indoor pollution. Indoor pollution is 10 times more harmful than the outdoor pollution. And do you know what idea they got? They started a startup named Forest at Home, and they install indoor plants in your home, in your schools, in your colleges, and your institution, so as to remove the harmful gases from your place, to make you feel better, to make you breathe better, and to make you live better. And this is the power of youth, that they are not utilizing its knowledge just to make you feel better or to just make money, but they are trying to make this India Atmanirbhar, and they want to meet the sustainability goals, because a nation can't live off only on natural resources. If you have listened to the talks of our Prime Minister's radio talk, Man Ki Baat, then you all must be knowing about the 5 pillars of Atmanirbharta: infrastructure, technology, economy, demography, and demand. And in the initial phases, our government has recognized nearly 12 sectors like textile, manufacturing, and many other where we need to be Atmanirbhar. And these issues can be addressed very easily, because from Kashmir to Kanyakumari, we have been blessed with abundant art and artists. The only need is the fusion of that tradition with the modern technology, and the same is done by our youth. If you have ever visited Andhra Pradesh, then you must be knowing about the Idipakku toys. So our youth is going to invest their time and money in the traditional toys. And it has got triple benefit. How? First, it makes us Atmanirbhar in the global toy industry. We have a global toy industry of 7 lakhs crore, but the participation of India in this is very low. So our youth have decided to invest their money and their time in the global toy industry by utilizing the traditional toys. Second, they are non-hazardous and safe to use by any age group of the children. Third, and the most important, it connects us to our roots, and thus it saves our heritage. And not only this, our youth is not utilizing its knowledge just to make money, not only to make us feel better, but they're also contributing to make this society, to make the people around us feel happy. We have many social entrepreneurs among us. We have Uzon Hussain, who is a transgender woman. And do you know what she's doing right now? She has started her own startup named as Street Temptation, which is a cafe in Uttar Pradesh, and it was established just to give a message that treat everyone equally. We have many other social entrepreneurs like Ishita Nand, who is raising funds not only for India, but for Nepal as well, for the earthquake victims or many other places where we need funds. And this is just a trailer of a blockbuster movie which is yet to be released, because many startup funds, schemes, manufacturing and innovation zones have been established in more than 12,000 acres of area, and you can yourself imagine that how India will take a lead in the future. Today, Gujarat stands the best performer in the startup ecosystem ranking, but that day is not far when this whole India will take a lead in the startup ecosystem. After listening all this, we all know that everybody has contributed its maximum in every respective field. But even after this long talks and many examples, if you would ask me that name just one young entrepreneur whom you think have contributed the maximum in making India Atmanirbhar, then I have got the answer. My answer would be Ranjit Singh Desale, the recipient of Global Teacher Award 2020, for his endless efforts in using the new technology like QR-coded textbook, Flipgrid tools for the students with special needs, and that too in the remote and tribal villages. His investment may not be purely monetary, but his investment includes time, knowledge,
effort, and technology. And his profit may not be purely monetary, but consist of the increase in the attendance of a school student that was below 2% to exactly 100%. And that's the power of a teacher. Some may not consider him to be the entrepreneur, but I consider him to be the role model for all other young entrepreneurs, because to be good only to yourself is to be good for nothing. So always remember, let that little kindness spread wherever you go. Let that little kindness spread wherever you go. Let that little kindness from your heart gently pours. Let that little kindness from your heart gently pours. Thank you. राजस्थान। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, अरे डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की और राजमहल के राज मुकुट से तनकर आगे बढ़ने की। युग की सुषुप्त शिराओं में सड़ित ज्वाला भरती है और वह समाज मर जाता है जिसकी युवा शक्ति डरती है, जिसकी युवा शक्ति डरती है। सर्वप्रथम मां वीणाधारिणी को नमन। सम्मानित मंच, न्यायप्रिय निर्णायक गण, श्रुति श्रोतागण एवं मेरे प्यारे युवा साथियों, आज की इस प्रतियोगिता का विषय युवा, आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया। मैं इसे 3 अलग अलग श्रेणियों में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करूंगा युवा से। देख रहे हैं इस कार्यक्रम की थीम युवा है, आप और मैं युवा हैं। सुनने वाले, बोलने वाले, कहने वाले, बात को आगे पहुंचाने वाले सब युवा हैं। लेकिन युवा क्या है, मैं क्या समझता हूं, वो आपको बताता हूं। युवा मेरी नजर में वह है जो एक निश्चित आयु के दरमियान तो आता ही है, एक दायरा है आयु का, उसके अंदर तो वो आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने जीवन को आदर्श, सच्चरित्रता और कुशलता से जीता है और निश्चित तौर से अपने संस्कारों को अपने अंदर रखते हुए राष्ट्र को समर्पित अपना जीवन धन्य करने का ऐसा प्रयास करता है। वह युवा निश्चित तौर से अपने भविष्य की नींव बना रहा होता है। वह युवा निश्चित तौर से अपने साथ साथ परिवार, समाज, प्रांत और राष्ट्र की भविष्य की नींव को बना रहा होता है। और ये आप और मैं बखूबी जानते हैं कि जिस भवन की नींव जितनी मजबूत होती है उसकी इमारत उतनी ज्यादा मजबूत और बड़ी बन सकती है। अब मैं बात करने जा रहा हूं आत्मनिर्भर भारत। ये एक अभियान है, आप और मैं इसको सुन रहे हैं। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान, सर्वप्रथम इसकी बात की हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 का वह दिन था जिस दिन कोरोना महामारी से पूरा विश्व ग्रसित था और वे एक आर्थिक पैकेज लेकर भारत की जनता के समक्ष आए थे। उस समय उनकी यह दृष्टि भारत की जनता के समक्ष आई कि वे ऐसा भी कुछ सोच रहे हैं। वह दिन था और उस दिन के बाद से लगातार प्रयास किए गए और 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज भारत की जनता के सामने रखा गया, जो निश्चित तौर से भारत के सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 10% से ज्यादा है। आप जान सकते हैं कि कितनी महत्वाकांक्षी, कितनी महत्वपूर्ण ये योजना होगी। और इसे युवाओं को समर्पित किया गया। युवाओं को इसलिए समर्पित किया गया कि आत्मनिर्भर का अर्थात है कि हमें स्वयं पर निर्भर होना है। अर्थात एक शब्द में अगर मैं कहूं तो हमें अपने स्वयं की खोज करनी है। हम सभी जानते हैं कि हम डिग्रियां लेते हैं, हम उच्च शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन वह शिक्षा हम हमारे व्यावहारिक जीवन में या व्यापारिक जीवन में कितनी कर्मठता से उसका उपयोग करते हैं, वह जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। अगर हम देखने जाएं तो सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर को याद कीजिए, जिन्होंने अपने आप को पहचाना, अपनी क्षमताओं को पहचाना, अपनी कार्य कुशलताओं को पहचाना और उसकी बदौलत उन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में रेखांकित किया। तो आज के युवा को भी ये करना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। नौकरी पाने की होड़ से आगे बढ़ते हुए नौकरियां देने की होड़ में आना होगा, तब जाकर के हम आत्मनिर्भर स्वयं होंगे और दूसरों को भी आत्मनिर्भर कर पाएंगे। एक तीसरा शब्द जो हमारे बीच आ रहा है, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया क्या है? याद कीजिए आप, 15 अगस्त 2015 का दिन, लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री अपना उद्बोधन दे रहे होते हैं और उस उद्बोधन के दौरान वो एक शब्द लेकर के आते हैं कि स्टार्टअप इंडिया। अब ये क्या उन्होंने उसे बताया, लेकिन उसकी विधिवत शुभारंभ हुई एक दिन और याद कीजिए, 16 जनवरी 2016। स्थान था दिल्ली का विज्ञान भवन और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री और साथ में तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जी जेटली, बहुत सारे प्रभावी
जनों के साथ में बैठ करके इस योजना की लॉन्चिंग करते हैं। उसमें क्या है, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताने जाऊं तो स्टार्टअप इंडिया में यह था कि भारत के युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए एक नई ऊर्जा, नई चेतना, नया संप्रेषण प्रदान करना। अर्थात क्या पहले स्टार्टअप नहीं होते थे? मतलब सरकारी कार्यशैली को इतना आसान बना देना कि वह युवाओं तक पहुंचे। युवा अपना स्टार्टअप करना चाहे, कोई नया इनोवेशन लेकर आए, कोई नई डिजाइन लेकर के आए और उस पर आकर के वो अपनी बात को रखें, अपने विचारों को रखें और उसको आधार बना करके वो उस पर कार्य करें। लेकिन ये कैसे संभव होगा? आप और हम जानते हैं कि भारत की सरकारी कार्यशैली इतनी ज्यादा जटिल होती जा रही है कि उसमें युवा आना नहीं चाहते। इसलिए कुछ उन्होंने इसमें बदलाव किए, जैसे एक स्व प्रमाणिकता, अर्थात आप अपने उद्योग के लिए अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको स्व प्रमाणित कर सकते हैं। इसके साथ साथ कर में छूट, अनुभव में फायदा दिया है और एक सरकारी टेंडर लेने के लिए जो बयाना जमा कराना होता है उसकी प्रोसेस को भी उन्होंने सरल किया है। यह था स्टार्टअप इंडिया। अब मैं आपसे एक बात करूं, भारत के उन युवा को याद कीजिए जो युवाओं के आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद जी। जब वे विदेश में जाते हैं और जाकर के सबसे पहला शब्द उनके मुंह से निकलता है कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो निश्चित तौर से पूरा सभागार, वो धर्म संसद तालियों की गूंज से गूंज उठती है, क्योंकि उन्होंने गर्व किया अपनी संस्कृति पर। अपना पहनावा नहीं छोड़ा, अपने संस्कार नहीं छोड़े, अपनी भाषा नहीं छोड़ी और आत्मनिर्भर बनकर के दिखाया कि हाँ, भारत भी कुछ है। हम क्यों दूसरों के संस्कार अपनाएं, हम क्यों दूसरों की भाषा अपनाएं? हम ऐसा काम करें कि दुनिया को हमारी भाषा समझने की आवश्यकता होने लगे, तब जाकर के युवा आत्मनिर्भर होगा, स्टार्टअप इंडिया होगा और हम जाकर के हमारी बात को आगे तक पहुंचा पाएंगे। एक बहुत सुंदर पंक्तियों से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान क्या था और क्या हो रहा है। कि वृद्ध भारत विश्व भर को ज्ञान सिखलाता रहा और ज्ञान का, विज्ञान का सन्मार्ग दिखलाता रहा। अरे जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस और बुल्गारिया, फ्रेंच, स्वीडन, नॉर्वे भी सीख कर जाता रहा और धूम जिसकी मच रही है आज इस संसार में, वह देश अमेरिका भी हमारा शिष्य कहलाता रहा। वह देश अमेरिका भी हमारा शिष्य कहलाता है। एक बहुत छोटे से उदाहरण से आपको बताऊं कि आत्मनिर्भर कैसे हो पाएंगे। एक कक्षा में अध्यापक जी आते हैं, एक फटा नक्शा देते हैं और उसे बच्चों से कहते हैं कि इसे जोड़ करके लाओ। आप और मेरे जैसे बच्चे खूब प्रयत्न करते हैं लेकिन वो नक्शा नहीं जुड़ता। लेकिन एक बच्चा उसमें से आता है, उस नक्शे को जोड़ कर लाता है। अध्यापक जी हैरान कि ये तूने कैसे कर दिया? जब उसने जवाब दिया कि इस नक्शे के पीछे एक मानव बना था, मैंने तो मानव के अंगों को जोड़ा, ये मेरा भारत बन गया। तो हमें भी एक दूसरे को जोड़ना है। अर्थात प्रतिस्पर्धा के युग में हमें आत्मनिर्भर तब होंगे जब मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं मेरी आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर करूंगा, मैं मेरे साथियों को आत्मनिर्भर करूंगा और तब जाकर के आत्मनिर्भर मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राज्य और मेरा राष्ट्र, और तब जाके राष्ट्र की उन्नति होगी। याद कीजिए, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, तो हम तो वे लोग हैं, हम हमारी संस्कृति को भूल गए, हम हमारे संस्कारों को भूल गए। तब जाकर के हमें ये कहना पड़ता है कि आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया। तो सोचिए, अंत में मैं आपसे एक बात बताऊं कि आत्मनिर्भर भारत में 2 चरणों में काम होगा। पहले चरण में इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा, खिलौने, प्लास्टिक इत्यादि ये सारे उपकरणों पर कार्य किया जाएगा और दूसरे चरण में जाकर के हम स्टील, फार्मा कंपनियां, रत्न एवं आभूषण, इन क्षेत्रों पर कार्य करेंगे। 2 भागों में बांटने की जो तैयारी की गई वो इसलिए की गई क्योंकि एक साथ जोर ना पड़े, एक साथ सभी को समझाना ना पड़े, अधिवेशन बुलाया जाए तो जनता को अधिक इकट्ठा नहीं करना पड़े, धीरे धीरे उस क्षेत्र से जुड़े लोगों को बुलाया जाए और उन्हें बताया जाए। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और मध्यम उद्योग, इन सभी के लिए योजनाएं हैं। 16 से अधिक योजनाएं लॉन्च की गई और आपको गर्व होगा कि श्रमिकों और किसानों के लिए विशेष रूप से 11 योजनाएं हैं जिसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि किसानों की आय को दुगुना किया जाए। तो ऐसी दूरदर्शिता अगर हमारी सरकार रखती है तो हमें भी रखनी होगी, सहयोग करना होगा और आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ
स्टार्टअप इंडिया में हमें नए इनोवेशन लाने होंगे, हमें हमारी सोच को तकनीक के साथ जोड़ करके धरातल पर लाना होगा, एक नींव के साथ में बहुत उम्दा इमारत का निर्माण करना होगा और तब जाकर के स्टार्टअप इंडिया का निर्माण होगा। आप और मैं युवा हैं, युवाओं के माध्यम से युवाओं की बात है, समझाने का तरीका सबका अलग हो सकता है, लेकिन अंत में अर्थात एक ही निकलता है कि मैं और मेरा भारत शिखर पर हो और किसी के आगे नहीं झुके। क्योंकि याद कीजिए, अंत में मैं आपको बताऊं कि भारत क्या था, कि कलहण के काव्य में राम के अस्त्र में, परशुराम के शस्त्र में, सावित्री सीता में, पद्मिनी की चीता में, कृष्ण की गीता में, अर्जुन की वीरता में, युधिष्ठिर की धीरता में, चैतन्य की चेतना में, मीरा की वेदना में, राम के विश्वास में, सबरी के विश्वास में, उपमन्यु के वनवास में। और इस तरह के काम जब हम करते हैं तब अंत में राजस्थान में कहते हैं कि राणा प्रताप और शिवा के स्वाभिमान में, कर्ण के कुंडल कवच दान में, अशोक के धर्म में और कामायनी के मर्म में, महाभारत के युद्ध में, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में जो मेरा भारत बसा करता था, युवाओं को भारत बसाना है। जय हिंद, जय भारत। If I can get some young men of heart and energy, I shall revolutionize the whole world. A very good afternoon to honorable judges and august audience. This is Anupriya and I am here to speak on a topic that is alluring, adorable, prodigious, profound and very close to my heart. The topic for today's elocution, Youth and Atmanirbhar, an era of startup. My opening remark was a quotation of Swami Vivekananda, who held a strong belief on youth and youth power. In fact, since 1985, 12th of January every year is celebrated as National Youth Day to remember Swami Vivekananda, whose thinking, philosophy and guidance galvanized youth into a potent workforce. Youth have always been acted as a catalyst to change, growth and transformation. In the years to come, this young generation will make the most formidable contribution in steering the world on the path of peace, development and prosperity. It is this youth who is being relied upon to turn the vision of our Honorable Prime Minister of Atmanirbhar Bharat into reality. Here I remember former SBI Chairman Shri Arundhati Bhattacharya, who once said that I often mule over often quoted statement of Mahatma Gandhi. You must be the change you wish to see in the world. I believe that this is primarily addressed to youth, the trustees of tomorrow. And it is especially relevant in India, since India is a country which is going to be among the youngest of the nations by 2020, with 60% of its population falling in the working age group. Today, we the youth are drawing upon the ideas of Mahatma and we are ready to leave its imprint on the world. Today, in 2021, artificial intelligence has become accessible to everyone. Whatever we do using a smart connected device is powered by artificial intelligence and machine learning based calculations running at the background of the program. Every smartphone camera powered by Google Lens is able to guess what it is seeing, translate foreign languages and even speak out the text. As we type, mail client is able to predict what we are going to write next. Results are being served even before the query has been completely typed on the streaming services. Maps are recalibrating on the basis of real-time data about the blocks on the way. All these technological innovations are happening these days, and the workforce behind all of it is the youth of India. This youth with pep, pizzazz, pluck and potential, when they move ahead and march ahead on the path of making India an Atmanirbhar nation, then there is no doubt that India will be able to attain its goal very soon. Our acceleration, accentuation and escalation towards an Atmanirbhar Bharat becomes evident when we see Dipendra Goyal's Zomato, a company that is present across 10,000 cities in 24 countries. It becomes evident when we see Paytm, a company initiated by Vijay Shekhar Sharma, which today
conducts 5,000 transactions in a second. And it has not only helped us in marching on the path of Atmanirbhar Bharat, but has contributed in digital India as well. We see Sachin Bansal and Binny Bansal's Facebook, which is a famous Flipkart, which is a famous startup these days. We have also witnessed Sri Harsha Majiti's OYO, and we have witnessed various organizations which have been initiated by youth. And these organizations have been booming up the markets of India. Youth is the time to dream, dream, dream. Convert those dreams into thought, and then these thoughts into actions. And this is exactly what the youth of India has been doing. We understand the importance of dreaming. We understand the importance of hope. We understand that hope keeps the child in us alive. Hope keeps the flame of life burning bright. Such is the power of hope. A dying man hopes for longer life. A sick man hopes for healthy life. A poor man hopes for rich life. An unsuccessful person hopes for success. Whatever might happen, hope always remains alive. Where there are chances of success, there is hope. Where there is life, there is hope. And we understand that. Not just with the help of hope, with our determination, with our ability to dream, just as Martin Luther King had. With abilities, we are marching ahead because we want to take the baton of innovation from our seniors. At the same time, we also understand the importance of guidance and blessings for our seniors. We understand that if we need young and valiant soldiers to fight across the borders of the country, we also need senior generals to make crack-free defense strategies. We know that if we need Ankit Bhati and Bhagyesh Agarwal of Ola, we also need Azim Premji and Ratan Tata, who have today become the pride of India. The innovation of youth and the ability of youth becomes evident when we see the lightest satellite happen, when we see our country excelling on the path anywhere and everywhere. We do not really know how institutions will develop in our country, where the youth have been known to think of the unthinkable. However, we know that the initiatives for development of these institutions will come from youth. They will make their own strategies for operation and collaboration as they go ahead. They will use modern technologies, not just these smartphones. You and I will be a part of the journey. Just as Alad Law says that the next generation is smarter than mine. Today, the baton of development of India and the baton of taking India on the path of becoming Atmanirbhar is in the hands of youth. The effervescence of youth is contagious. And as per ex-president Dr. APJ Abdul Kalam, who wrote in his article, India, a developed nation before 2020, which was published in an edited book, Growth in Globalized India, Options and Opportunities. Dr. APJ Abdul Kalam talked about a girl from Darba village of Haryana. The girl's name was Anukriti. She asked a question from him. And the question was, so why 2020? Why can India not become a developed nation before that? This question indicates the zeal, enthusiasm and excitement amongst youth to live in developed, progressive, peaceful and Atmanirbhar Bharat. And this excitement is the roadmap for reaching a country which is self-sufficient. In 2020, when the whole world has fallen down on its knees, India remained positive, youth optimistic, as a result of which the number of startups increment in India was 60%, as per the statistics presented by Startup India. All this tells us that youth have understood their role, their responsibilities, their duties. They have understood that these entrepreneurship, the idea of becoming Atmanirbhar is not just all about self-sufficiency, but it is also about generation of employment within the country. It is also about stopping brain drain from the country. In the year 2016, the number of unemployed people had decreased to 44.25 million from 46.78 million in the year 2014. And the same period also witnessed an increment in the number of startups initiated by the young graduates of India, making India the third largest startup system in the world. We have understood that for us
to become empowered, for us to become a force to reckon with, it is important for us to be self-sufficient, to have ample amount of employment. But the truth today is that there are two Indias in the country. One is training at the leash, eager to spring forth and live up to all the objectives that the world has been bestowing upon us. But the other India is the leash. One India says, give me a chance and I'll prove myself. The other India says, prove yourself first and maybe then you'll get a chance. One India wants, the other India hopes. One India leads, the other India follows. Conversions are taking place. With each passing day, more and more people from the other India are moving on to this side. And quietly, while the world is not watching, a pulsating, dynamic new India is emerging. An India whose faith in success is much greater than its fear for failure. An India that no longer boycotts foreign-made goods but buys out the companies that make them instead. An India which is trying its best to fly. Time, they say, is a very bad motorist. It rarely ever signals while taking a turn. And this, ladies and gentlemen, is that rarely ever moment when the history is turning a page. Over the past 72 years, we as independent nation, we have sprung, fallen, rolled over, gotten up and dusted ourselves. Today, times have brought us to the time's greatest precipice. Change is about to take place. And the other India, a tiny little voice at the bottom of our minds, is still looking down on the ravine and hesitating. The other India is looking up at the sky and saying it's time to fly. According to a book, Sindia, How India and China Are Revolutionizing the World, edited by Pete and Gavido, they discussed that just as Massachusetts Institute of Technology and Stanford Institution helped in the progress of Silicon Valley, in the similar manner, the institutions of India are helping the youth of the country and encouraging the youth with scientific aptitude and entrepreneurial mindset to go ahead and work towards Atmanirbhar Bharat. This becomes evident that our developmental phase has started up in the country and youth are the major contributors for the same. Youth is ready to take up the baton of innovation. The famous duo Antonio Philip and Shreyas Jain of the Bangalore-based startup hold under 25 entrepreneurs summit every year. And every year the young entrepreneurs come there and they voice their opinions, claiming that India matters to me and I would love to matter to India. The youth of the country, with the help of their mind, muscle, power, heart and energy, will help in the development of the country. And not just the education institutions, but the government as well is helping the youth in doing the same. With the help of organizations such as the Atal Incubation Mission, Mudra Fund and various other setups which have been initiated by the government, the youth are being encouraged to be better on every single day and put up their entrepreneurial ideas in front of the people. At the end, I would just like to conclude by saying something for youth. Just look into you, look in your heart. There is something in there, something like a spark. It is so magnificent, just like the vigor. It's the power of youth you need to sever. Thank you. Jai Hind. युवा हूं, मैं युवा हूं, मैं युवा हूं। सोच रखते हैं हम कुछ नया कर दिखाने का, हम में जोश है सोच को परिणाम तक पहुंचाने का। हौसला रखते हैं नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का। हौसला रखते हैं नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का। चलो प्रयास करते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का। नमस्कार आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों। आत्मनिर्भर
होना हमारी देश, हमारी समाज और प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यह कहा था कि एक राष्ट्र की शक्ति आत्मनिर्भरता से है, किसी से उधार लेने में नहीं। हमारे देश की प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश की शक्ति आत्मनिर्भरता से है, किसी और से उधार लेकर काम चलाने में नहीं। और आत्मनिर्भरता से ही एक राष्ट्र सबसे ऊपर सर्वोपरि राष्ट्र बनता है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पर एक बात कही कि कोरोना संकट के बाद जो विश्व की स्थिति बन रही है वह काफी चिंतनीय है और ये स्थिति हमें सिखाती है कि इसका एकमात्र उपाय है आत्मनिर्भर भारत। जी हां, आत्मनिर्भर भारत। एक राष्ट्र के रूप में हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। हम आज बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं क्योंकि इतनी बड़ी आपदा के बाद भी ये जो आपदा थी हमारे लिए एक संकेत लेकर आई है, हमारे लिए एक संदेश लेकर आई है और हमारे लिए एक अवसर भी लेकर आई है। हमारी भारत की संस्कृति, हमारे संस्कार आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा ये बोलती है वसुदेव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति पूरे विश्व को एक परिवार समझती है और इसके अलावा हमारी जो संस्कृति है वो पृथ्वी को मां समझती है। मां, ऐसी संस्कृति, ऐसी मातृभूमि, जब ये मातृभूमि एक आत्मनिर्भर बनेगी तो उससे सुखी राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किंतु यहां पर एक सवाल यह बनता है कि आखिर कैसे बने हम आत्मनिर्भर? तो इसका उत्तर भी है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भरता का संकल्प। भारत देश को सबसे अधिक युवाओं का देश कहा जाता है और ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक देश की सबसे ताकतवर शक्ति युवा शक्ति है, क्योंकि युवा ही सबसे अधिक ऊर्जा, नया जोश और नई उमंग का स्रोत होता है। तो यदि आज यहां पर बैठी हुई युवा पीढ़ी और प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि आज से हम किसी और पर निर्भर नहीं होंगे, हम खुद स्वदेशी अपनाएंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब हम पूरे विश्व को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाएंगे। क्योंकि हम अगर ठान लें तो हम कर सकते हैं। कोई लक्ष्य, कोई राह मुश्किल नहीं। आज तो चाह भी है और राह भी है। अगर हम सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएं, अपनी क्वालिटी, अपनी गुणवत्ता, अपने संसाधन को और भी बेहतर बनाएं, तो एक दिन पूरा देश हम पे निर्भर होगा। वह सीखेगा भारत देश से, फिर से ये भारत देश सोने की चिड़िया कहलाएगी और केवल सोने की चिड़िया नहीं, सोने का अंबर कहलाएगा। क्योंकि अगर मैं वर्तमान में इतिहास के पृष्ठ को पलट कर देखूं तो इतिहास में जब हमारा भारत देश स्वतंत्र था तब हमारे देश के लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों पर निर्भर रहते थे। किंतु जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब यह आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होता रहा और आज हमारा देश पूरे विश्व में कोहिनूर की भांति चमक रहा है और चमकता रहेगा यदि हमारा पूरा भारत देश आत्मनिर्भर बनेगा। और आज तो विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं आत्मनिर्भर होने के लिए, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में, और हर एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि हम आत्मनिर्भर बने, हम आत्मनिर्भर बने और हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बने। और इस कोरोना संकट के बाद भी जिस प्रकार हमारा देश उभरा है उसके लिए मैं काफी तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत सराहनीय की बात है कि आज इतने कोरोना संकट के बाद भी हमारा देश आत्मनिर्भर बनने को कह रहा है, हमारा देश आगे बढ़ने को कह रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरी जरूर है, लेकिन देखो आज फिर से युवा मंच पर एक नहीं अनेकों युवा आ रहे हैं और बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने की, अपने आप को आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर बनाने की। और ऐसे ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी कई योजनाएं चलाई है आत्मनिर्भर भारत बनाने हेतु। जैसे कि कुछ योजनाओं के मैं नाम लेना चाहूंगी। प्रधानमंत्री वाणी योजना, प्रधानमंत्री फ्री सोलर पैनल योजना, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना, जिससे भारत की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी। प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना, जिससे कोई भी महिला अपने इस योजना से जुड़कर खुद आत्मनिर्भर बन सकती है। और इसके अलावा स्वामित्व योजना, स्वनिधि योजना और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिससे भारत का हर व्यक्ति रोजगार पा सकता है, बेरोजगारी दूर होगी। जब इतना सब कुछ हमारे देश में होगा तो सोचिए ना एक बार युवाओं, कैसे हमारा भारत देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। ये इतने प्रयास किए जा रहे हैं हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु, किंतु मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि हमारा भारत देश आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब यहाँ की युवा पीढ़ी स्वयं आत्मनिर्भर बनेगी, जब हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे, जब हम में विश्वास होगा, हम अपने आप पर विश्वास करेंगे। क्योंकि अगर विश्वास दूसरों पे किया जाए तो वह ताकत अगर विश्वास खुद पर किया जाए तो वह ताकत बन जाती है और दूसरों पर किया जाए तो कमजोरी। तो हमें किसी की कमजोरी या फिर किसी पर निर्भर नहीं होना, ना तो किसी व्यक्ति पर और न ही किसी अन्य देश पर। हमें अपना काम खुद करना है और इसके अलावा यदि हमें अपने जीवन व्यतीत करना है तो किसी और के कंधों की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि हमारे देश के वीर जवान भगत सिंह ने भी यही कहा था कि जिंदगी तो सिर्फ अपने दम पर जीत जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। तो बस हम सभी को भी आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत करनी है और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेना है। क्योंकि देश को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना है, लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का लाभ बताना है, अब पूरे देश को कुछ कर दिखाना है। हाँ, अब भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली सबसे पहले तो निर्णायक मंडल और सभा में उपस्थित सभी मेरे साथियों को मेरा शैक्षिक नमन। तो आज का हमारा जो विषय है आत्मनिर्भर भारत, दैट इज यूथ एरा ऑफ स्टार्टअप्स। तो यहाँ पे आके बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, स्टार्टअप इंडिया के ऊपर, मेक इन इंडिया के ऊपर। उसको काफी देर से मैं सुन रही थी और मुझे लगा क्योंकि यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताते थोड़ा सा इतिहास का परिपेक्ष भी बताया गया कि महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। स्वराज्य का जो उन्होंने आइडिया दिया था वहां से इनकी पूरी शुरुआत हुई थी। तो उसी गति में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो मैं संस्कृत के श्लोक से अपने वक्तव्य का प्रारंभ करना चाहूंगी कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है सहैव धर्मः च देश काले प्रतिष्ठितः। अर्थात धर्म वो है जो देश के हिसाब से, काल के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। भारत जिसका सन 1990 में धर्म था कि वो अपने उदारीकरण की नीति के साथ आगे बढ़े, अपनी जो मार्केट है, अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसे अलग अलग देशों के लिए खोले। आज उसी भारत का ये धर्म बन चुका है कि अपने यूथ को, अपने युवा को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए और अपने आप को और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए वो खुद आत्मनिर्भर बने, खुद ऐसी चीजों का निर्माण करे जो हम बोल सकते हैं कि मेड इन इंडिया हो सकती है या इन हाउस प्रोडक्शन हो सकता है जिन चीजों का। तो भारत का जो धर्म है वो पहले से बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गया है और इसीलिए परिवर्तित हो गया है भारत का जो युवा है, उसका जो यूथ है, उसका धर्म। तो जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे इतिहास का भी परिपेक्ष रखा गया, गांधी जी के बारे में बताया गया कि उन्होंने स्वराज से, जब हम अंग्रेजों से आजादी ले रहे थे उस समय से शुरुआत की थी आत्मनिर्भर भारत। हम सब जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का जो पूरा आइडिया है, जो इसका उद्देश्य है, वो आज का नहीं है, वो कई सालों पहले से भारत में है, लेकिन इसकी जो गति मिली, जो एक मोमेंटम मिली, वो हाल ही के वर्षों में मिली। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे आत्मनिर्भर भारत का जो आइडिया है वो एरा ऑफ यूथ का, स्टार्टअप से उसका लिंक हो चुका है, हमारे जो युवा है उससे उसका लिंक हो चुका है। तो किसी भी विषय के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें उसके दोनों पहलुओं को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
उसके दोनों पहलू की कितना हम अचीव कर चुके हैं, क्या हमने पाया है और क्या पाना रह गया है, या क्या कमियां या खामियां अभी तक रह गई है। तो पहली बात करते हैं कि हमने आत्मनिर्भर भारत में युवाओं के तौर पर स्टार्टअप्स के अगर हम उपलक्ष्य में बात करें तो हमने कितना कुछ पाया है। भारत आज पूरे विश्व में 33% जेनेरिक मेडिसिन का उत्पादन करता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि अगर हम पूरे विश्व के हिसाब से देखें तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है। लेकिन उस उपलब्धि में भी एक छोटा सा तथ्य छुपा है, वो ये कि इसके लिए जो हम रॉ मटेरियल्स लेते हैं, यानी जो कच्चा माल लेते हैं, उसमें से 70% हम चाइना से आयात करते हैं। तो अब अपने आप में देखिए, इस एक तथ्य के ही दो पहलू हैं। हम एक तरफ 33% जेनेरिक मेडिसिन का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन 70% जो कच्चा माल है वो हम चाइना से लेते हैं। तो इसमें आत्मनिर्भर भारत का जो हम आइडिया देखते हैं वो कितना हद तक अभी हम उसको अचीव कर पाए हैं, किस हद तक हम उसमें आगे बढ़ पाए हैं और कितनी कमी रह गई है, हमें ये तथ्य ही बताता है। फिर हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे रक्षा उद्योग। हाल ही में भारत ने करीब 101 ऐसे डिफेंस प्रोजेक्ट्स, माफ कीजिएगा, डिफेंस प्रोडक्ट्स को एक्नॉलेज किया था। 101 ऐसे रक्षा से जुड़े हुए संसाधनों को पहचाना था जिसमें हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, यानी कि जिसे भारत में निर्मित किया जा सकता है। इसमें कई सारे रेडार्स थे, इसमें कई सारी मिसाइल्स थी। तो हम देखते हैं जब भारत में 26 जनवरी मनाया जाता है, रैली निकाली जाती है, तो हर साल तेजस की बात बहुत ज्यादा आती है। तेजस को कहा जाता है कि वो भारत में निर्मित एक एयरक्राफ्ट है, लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, लेकिन HAL तेजस जो है उसका रेडार हम आज भी इजराइल से मंगाते हैं। तो वो पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है, यानी कि पूर्णतः भारत में निर्मित नहीं है। तो इस एक दूसरे तथ्य से हमें पता चलता है कि हमने कुछ कदम लिए हैं, लेकिन कुछ कदम अब भी बाकी हैं। तो अगर हम ये कहीं यहाँ पे खड़े हुए साल के अंत में कि हमने आत्मनिर्भर भारत के तौर पर कई सारी चुनौतियों को पार कर दिया, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अपने आप में आधा सच होगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तौर पर हम आगे तो बढ़े हैं, लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे मील के पत्थर हैं जिन्हें हमें अचीव करना, जिन्हें हमें प्राप्त करना हमें बाकी है। फिर हमने बात की यहाँ पे मेडिसिन की, जेनेरिक मेडिसिन की, हमने बात की रक्षा उद्योग की। तो अब आगे बात करते हैं खिलौनों के बारे में। सुनकर बहुत असमंजस सा हो जाता है कि खिलौने जैसी चीज जो भारत में लोकली कहीं भी बन सकती है, हम खिलौने तक चाइना से मंगवाते हैं। तो चाइना जो है इस चीज का आप देख सकते हैं, हम एक तरफ भारत और चीन का युद्ध जो है वो हर समय इस तरीके से टेक्निकल वॉरफेयर भी चलता है और प्रॉक्सी वॉर भी चलता रहता है भारत चीन के बीच में। और अभी डोकला पे जो हुआ उसके बाद से आत्मनिर्भर भारत सोशल मीडिया पे हर जगह ट्रेंड करने लगे। लेकिन एक युवा के तौर पर अगर हम एक छोटी सी पहल नहीं कर सकते, हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार भारत को एक दिन में आत्मनिर्भर भारत बना दे, लेकिन खिलौने जैसी चीज है, खिलौने ऐसी चीज है जो हम सब में से लगभग सभी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, और काफी सारे तो हम लोग ऐसे भी, क्योंकि स्कूल के भी कुछ बच्चे मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, तो शायद से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी किसी न किसी प्रकार से खिलौनों की इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो भारत में 33% जनसंख्या ऐसी है जो 15 की आयु से कम है, और आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट चाइना के लिए बन जाता है अगर खिलौने जैसी एक छोटी सी चीज भी हम चीन से भारत में मंगवाते हैं। अब खिलौनों के बाद बात करते हैं चप्पल। जो चप्पल आप सभी ने पहन रखी है, चप्पल जूते जैसी छोटी सी चीज का मार्केट जो हम चाइना को दे देते हैं वो लगभग 2500 करोड़ से भी ऊपर है। तो आप देखिए इतना सारा पैसा हम बाहर ले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उम्मीद करते हैं कि सरकार एक ही दिन में ऐसी नीति बना दे जिससे भारत आत्मनिर्भर बन जाए। तो हम, क्योंकि आज यहाँ पे विषय सिर्फ आत्मनिर्भर भारत नहीं है, विषय में युवा भी शामिल है, तो युवा के तौर पर हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या अचीव किया है, छोटी छोटी सी चीजें जहाँ पे हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है वोकल फॉर लोकल का नारा अपने आप में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अपने आप में एक दूसरे के पर्यायवाची हो सकते हैं। अब वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो हमने देखा छोटी छोटी सी चीजें कोविड के दौर पर कितनी बड़ी उभर के सामने। IIT हम बात करते हैं, IIT में हम कहते हैं कि हमारे देश के जो फाइनेस्ट माइंड है वो जाकर IIT में बैठते हैं। तो IIT के कुछ छात्रों ने ऐसे वेंटिलेटर्स बनाए जो हम बाहर से वेंटिलेटर्स मंगाते हैं उससे 70% ज्यादा सस्ते दामों में उन्होंने वेंटिलेटर्स बनाए। ये अपने आप में एक इतनी बड़ी रकम है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों से हमारा यूथ जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में, देश को आत्मनिर्भर बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अभी तक हमने बात की कि कहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ हम पीछे रह रहे हैं। अगर मुझे इसको सम अप करना होगा तो मैं कहूंगी कि हम जब किसी भी पॉलिसी की बात करते हैं, किसी भी नीति की बात करते हैं, तो बहुत जरूरी हो जाते हैं हमारे 3 पहलू, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, पॉलिसी यानी कि नीति, और सिटीजन यानी कि हमारा जो नागरिक है, हमारी जनमानस। तो सरकार जो है वो नीति
बात आती है जनमानस पर, और भारत युवाओं का देश कहा जाता है। भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या, बल्कि 1/3 आबादी जो है वो युवाओं की है। तो ऐसे में हमारा बहुत बड़ा ये धर्म और ये कर्तव्य बन जाता है कि आत्मनिर्भर भारत में हम भी अपना योगदान दें। और ये योगदान कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पे आत्मनिर्भर भारत ट्रेंड करने से, बॉयकॉट चाइना ट्रेंड करने से, या फिर वोकल फॉर लोकल ट्रेंड करने से हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे? हम आत्मनिर्भर बनेंगे जब हम अपने छोटे छोटे जो हमारे उत्पादक हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जब हम उनको सपोर्ट करेंगे। हम आत्मनिर्भर बनेंगे जब हम बड़े बड़े आउटलेट्स में खाना खाने की जगह जो ठेले वाले हैं, जो छोटे छोटे कामगार हैं, उनसे चीजें खरीदेंगे, उनके पास खड़े होकर खाएंगे। सुनने में बहुत अजीब लगता है, हमें लगता है ट्रेंडी नहीं है, फैशनेबल नहीं है, क्योंकि ट्रेंडी हो जाता है सिर्फ सोशल मीडिया पे आई सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत लिखना। लेकिन हम असल में युवाओं के तौर पर कितना उस चीज को फॉलो करते हैं, कितना उस पर कार्यरत करते हैं, वहां पर सारी बात आकर, सारी बहस वहां पर आकर खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है हमने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ अचीव करना अभी रह गया है, लेकिन हाँ, जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, अगर इसी गति से बढ़ते रहे तो बहुत जल्द भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा। अब क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत और युवाओं की बात कर रहे थे, तो मुझे ध्यान है, मुझे सुबह एक डाटा दिख रही थी कि भारत में क्योंकि विषय में स्टार्टअप भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, तो भारत जो है वो विश्व में स्टार्टअप्स के नाम पर तीसरे पायदान पर आता है। यानी कि भारत ऐसे तीसरे पायदान पर है जिसमें ऐसे देशों में जो सबसे ज्यादा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं या जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स होते हैं। हम बात कर ले वेदांतु की, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ बच्चे घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। हम बात कर ले वाव मोमोज की। अब किसने सोचा था मोमो जैसी चीज भी हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली इसके लिए एक अलग से आउटलेट बनाया जाएगा और वो करोड़ों का एक स्टार्टअप बन जाएगा। हम चाय पीने के लिए 5 रुपए 10 रुपए देते हैं, किसने सोचा था चाइनीज जैसा एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो करोड़ों कमाएगा और भारत की जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो स्टार्टअप्स किसके दिमाग में आते हैं? स्टार्टअप्स यूथ के दिमाग में आते हैं, क्योंकि हम यंग माइंड है, हम यंग ब्रेन। तो हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? और जैसा कि मैंने कहा, आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक दिशा है जिसमें हम सबको मिलकर आगे काम करना है। और जब हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो 2018 का डाटा देखें तो लगभग भारत में 2500 से ऊपर स्टार्टअप्स थे, लेकिन उनमें से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उसे सपोर्ट नहीं किया। तो अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर भारत का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन ये आइडिया, ये उद्देश्य कब सक्सेसफुल होगा? तब स्टार्टअप बनेगा जब हम यानी कि यूथ इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली और सोशली। तभी भारत का जो आत्मनिर्भर भारत का आइडिया है, जो सपना है, उसे हासिल किया जा सकता है। धन्यवाद। वो भारत जो सोने की चिड़िया था, मेरा आत्मनिर्भर भारत था। वो भारत जिसकी शालीनता देख पश्चिमी लग जाए, मेरा आत्मनिर्भर भारत था। जितना कम हो उतना कम है। ये जिसे कोई कवि अपनी कविताओं में न समेट पाए, ये जिसे कोई लेखक अपने लेख में न समा पाए, ये जिसकी सरहदों में रह के भी, सरहदों में रह के भी पल पल बढ़ता जाए, मेरा आत्मनिर्भर भारत था। सभा मंडल निर्णायक मंडल को मेरा शत प्रणाम। आज इस सभा में सभी लोगों को मेरा शत प्रणाम। मैं आप सभी के समक्ष आज के हमारे इस विषय युवा और आत्मनिर्भर भारत, इस पे आप सभी के समक्ष अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत करना चाहूंगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं आत्मनिर्भर भारत का सपना देखता हूँ। मैं वो सपना देखता हूँ कि सोने की चिड़िया को आज फिर सोने का कर दिया जाए। मैं ये सपना देखता हूँ कि हमारे यहाँ का हर एक युवा आत्मनिर्भर हो। प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा कि आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कहता कि मैं अपने आप पर केंद्रित रहूं और सिर्फ अपने आप पर केंद्रित रह जाऊं। मेरी आत्मनिर्भरता, मेरे देश की आत्मनिर्भरता कहती है कि मैं खुद को इतना सक्षम बनाऊं कि किसी की जरूरत ना हो, किसी की जरूरतों की वजह से दुख ना हो, और अपने देश को इतना सक्षम करने के बाद अपने पड़ोसी देशों, अपने पूरे विश्व को सहायता प्रदान करूं। वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का प्रत्येक व्यक्ति हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना सहयोग देगा, अपना योगदान देगा, परंतु फिर भी ये भारतवर्ष की भारत सरकार आज युवाओं को पुकार रही है। उसका एक बड़ा स्पष्ट छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि माननीय महोदय, आज वहाँ उपस्थित सभी गण, एक 50-60 वर्षीय व्यक्ति से अगर उसका अनुभव पूछा जाए, उससे कहा जाए एक उदाहरण के तौर पर कि जो लोग भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाते हैं, उनके पास कई तरह के सकारात्मक पहलू होंगे, सकारात्मक अनुभव होंगे, पर कई हद तक उनके पास बहुत सारे नकारात्मक अनुभव होंगे, क्योंकि उन्हें कहे कि हमने अपनी उम्र में
संभाला नहीं जा सकता। और यही नकारात्मक सोच, उनकी सोच उनके उमंग को रोक देगी। वहीं दूसरी तरफ हमारा युवा जो पूर्ण तरह उमंगों से भरा है, नया जोश, नई उमंगें, नई नई कलाओं के विचार, वो इस भारत को, वो असंभव को संभव कर दिखाने में सक्षम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में मुख्यतः 5 स्तंभों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा तंत्र, हमारी आधारिक संरचना, हमारी जनसंख्या तथा हमारी मांग, ये हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सबसे बड़े 5 स्तंभ हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो भी कहा, आज मैं सभी को आप लोगों के युवा पे केंद्रित करके बताना चाहूंगी। मुझे तो लगता है ये 5 स्तंभ पूरी तरह से एक युवा के लिए ही है। पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जहां पहले हमारे यहाँ की युवाओं के कदम उठने से पहले ही रुक जाते थे क्योंकि आर्थिक सहायता नहीं दी जाती थी। हमारे यहाँ की वो उद्घाटन जिन्हें शुरू होने से पहले खत्म कर देना पड़ता था क्योंकि आर्थिक सहायता नहीं थी, रोजगार नहीं था। आज उसी के लिए हमारे राज्य सरकार ने, हमारे भारतवर्ष ने 30 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया ताकि इस भारतवर्ष को, युवाओं को रोजगार मिल सके, इनके काम शुरू हो सके, हम नौकरी करने वाले नहीं नौकरी देने वाले बन सके। वही हमारा दूसरा स्तंभ हमारी मांग। भारत को हमेशा से दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है और अनेक देश, अनेक तरह की कंपनियां हमारी इस बाजार को इस्तेमाल करके अपने आप को ऊंचा बनाती हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहूंगी, भारत जो हमेशा से लोगों का बाजार रहा है, आज भारत के निर्माताओं का बाजार बनेगा क्योंकि हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने का सपना अब साकार होगा। हमारा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हमारा तंत्र, जहां आए दिन मिलने वाले सरकारी काम होते थे, अब वो नहीं होंगे। ये तंत्र इतना सशक्त और सख्त होगा कि हमारी यहाँ की महिलाएं, जो कि भारत की युवा आबादी का 50% से ज्यादा है, वो हमारी पूरी तरह से कोशिश होकर, पूरी तरह से अपने आप को सक्षम बनाकर हमारी आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगी। हमारा चौथा स्तंभ हमारी जनसंख्या। भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और मुझे कहते हुए बेहद गर्व महसूस होता है कि भारत दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है। इस युवाओं की संख्या को, इनको पोषण देना ही हमारे पूरे भारतवर्ष का दायित्व है। वही हमारा अंतिम स्तंभ पर सबसे जरूरी स्तंभ है हमारे यहाँ की आधारिक संरचना। बिजली, पानी, अस्पताल, विद्यालय जैसी वो आवश्यकताएं जिन्हें पूरा करने में पहले ही हमारी भारत सरकार या हमारा भारतवर्ष कभी सक्षम नहीं था। कितनी कन्याओं को आगे विद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता था क्योंकि उनके गांव से उनके विद्यालय दूर होते थे। अब इस तरह की आवश्यकताएं भारतवर्ष में ऐसी जगह उपलब्ध कराई जाएंगी जहां युवाओं को अपने आप को विकसित करने के पूरे मौके मिलेंगे। जहां कश्मीर में युवा खाली होने की वजह से पत्थरबाज बनते थे, जहां कश्मीर में कोई भी अपने उद्यान में काम शुरू करने से डरता था, आज वहां तंत्र इतना मजबूत है, आज वहां आधारिक संरचनाओं को बनाने की इतनी चेष्टा की जा रही, इतनी कोशिशें की जा रही है कि अब वो युवा पत्थर नहीं, अपने हाथों में चिकित्सक बन के इंजेक्शन उठाएंगे, अपने हाथों में कर्मचारी उठाएंगे और अध्यापक करेंगे, अफसर करेंगे। वही दूसरी तरफ हमारे शास्त्रों में बड़ा ही सही श्लोक कहा गया है, सर्वम सर्वशम दुखम, सर्वम सर्वशम दुखम, सर्वात्मं वशम सुखम, एक विद्यात् सर्वेषम लक्षणं सुखम दुखम। अर्थात दूसरों पे आश्रित रहना किसी भी कार्य में हमारे दुख की वजह है, अपने पे आश्रित करे गए कार्य हमारे सुख की वजह है। अगर संक्षिप्त में कहूँ कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहना तुम्हारे दुख की सबसे बड़ी वजह है, अपने आप पर निर्भर रहना तुम्हारे सुख की सबसे बड़ी वजह है। हमारी युवाओं को तय करना है भारत को सुख की तरफ भेजना है या दुख की तरफ भेजना है। हमें अपने आप को, अपनी युवाओं को, जहाँ आर्यभट्ट, विवेकानंद जैसे बड़े बड़े लोग हुए, ये बूढ़े होते होते तो समझदार हुए नहीं, ये भी कभी युवा थे। इन सभी को दिया हमारे भारत ने और आज युवा है जो इस भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। युवा हो तुम जाग उठो, युवा हो तुम जाग उठो, जोश हो तुम बढ़े चलो,
दिल तुझ पर नतमस्तक है, वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। नमस्कार, मैं कोड नंबर 4 आज आप सभी के समक्ष आत्मनिर्भर युवा एक नए युग की शुरुआत हेतु वक्तृत्व भाषण के लिए उपस्थित हुई हूँ। यदि आप ध्यान से चिंतन करें तो आत्मनिर्भरता एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में ही संपूर्णता का महत्व बताता है। यदि विश्व में सबसे अधिक युवा किसी देश में है तो वो है भारत। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? इसका अर्थ है भारत में सबसे अधिक ऊर्जा, अवसर, हुनर और कुछ कर दिखाने का जुनून है। यदि युवा है तो आकांक्षाएं हैं, यदि युवा है तो रुचियां हैं, युवा है तो खुशियां हैं, और यदि युवा है तो आत्मनिर्भरता के साथ साथ नए युग की शुरुआत भी है। न प्रेम पुजारी न अबला नारी, वर्तमान युवा है आत्मनिर्भर और स्वेच्छाकारी। वर्तमान युवा उदारवाद में विश्वास रखता है। हम युवा जानते हैं कि विकास के क्षेत्र में डिजिटल सेक्टर का कितना महत्व है, इसीलिए वर्तमान युवा अपनी क्षमताओं को डिजिटल सेक्टर में उपयोग कर रहा है तथा सफलता भी पा रहा है। वर्तमान युवा के हृदय में सहयोग और समानता का भाव रहता है। वर्तमान युवा उद्यमी करने में तजस्सुम चाहत रखता है, इसीलिए उदाहरण के लिए देख लीजिए, ज्यादा दूर नहीं, हमारे विद्यालयों में ही हमारे उप मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए गए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम में विद्यार्थी कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज का युवा स्वच्छंद मानसिकता का है तथा आज का युवा रचनात्मक विचारों का है। उसे किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। अब एक कॉलेज का विद्यार्थी भी इतनी क्षमता तो रखता ही है कि वह पढ़ाई के साथ साथ कुछ कार्य या श्रम करके अपनी शिक्षा को आर्थिक सामर्थ्य बना सके। आज का युवा अपनी खूबियों तथा अपनी खामियों पर ध्यान देने लगा है। वह जानना चाहता है कि वह किस चीज के काबिल है, वह पहचानना चाहता है कि उसकी जिज्ञासा किस क्षेत्र में है तथा वह जानना चाहता है कि वह अपनी क्षमताओं का प्रयोग उद्यमी बनने में कैसे कर सकता है। आज का युवा अपने माता पिता तथा अपने देश के लिए सामाजिक, नैतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से योगदान देना चाहता है। भारत देश आईटी सेक्टर, मेक इन इंडिया, मेडिकल साइंस, उद्योग तथा प्रोडक्शन में कितना आगे बढ़ चुका है। यह सब क्या है? एक नए युग की शुरुआत ही तो है। युवा अपने आप में विचारों का होना चाहिए। लोग विदेशियों को सर पर चढ़ाने लगे, लोग विदेशियों को सर पर चढ़ाने लगे कि हम घर पे बना रहे थे, वो बाहर से मंगाने लगे। आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और सम्मान के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान देती है। आज के समय में आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी योग्यता है। दूसरों पर निर्भरता न केवल हमें कमजोर करती है बल्कि हमारी काबिलियत और सामर्थ्य से भी हमें दूर कर देती है। यदि आज का युवा सबसे पहले खुद को आत्मनिर्भर बनाएगा तभी वह देश को भी आत्मनिर्भर बना पाएगा। तभी नए युग की जो नींव है वो मजबूत हो पाएगी। व्यक्तिगत तौर पर आत्मनिर्भर होने के 3 मूल मंत्र हैं, अर्थात
व्यवस्था पर आधारित हो। चौथा पिलर, डेमोग्राफी। विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है, हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। और पांचवा पिलर है डिमांड। अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। विकास परिवर्तन का हो गया है जब युवा शक्ति सजग हो जाए, जब युवा शक्ति सजग हो जाए। मित्रों, यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या हमारी मातृभाषा कभी अंग्रेजी थी? नहीं ना। तो फिर क्यों एक विदेशी भाषा के ना आने पर हमारे आज के युवा को अधीन महसूस कराया जाता है? भारत का युवा अब आत्मनिर्भर भाषा में भी काफी दिलचस्पी दिखाने लगा है। भारत का युवा आज हिंदी तथा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है। अर्थव्यवस्था में सबको भागीदारी निभाना है। अर्थव्यवस्था में सबको भागीदारी निभाना है। लोगों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना है। लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का लाभ बताना है। हम युवाओं को ही नया युग बनाना है। हम युवाओं को ही नया युग बनाना है। मित्रों, भारत के युवा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी नया युग लेकर आएंगे और लाभ भी रहे हैं। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे IBM ग्रुप, गूगल LLC एंड अल्फाबेट INC, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, मेगामार्ट और नोकिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO जानते हैं कौन है? वे सब भारतीय हैं, भारतीय युवा हैं और सबसे जरूरी बात आत्मनिर्भर है। यदि भारत का युवा सबसे पहले खुद को आत्मनिर्भर बना लेता है तो भारत को सोने की चिड़िया बनाने से कोई नहीं रोक सकता। माना कि मुश्किल है कठिन रास्तों पे चलते जाना, पर नामुमकिन नहीं अपनी मंजिल को पाना। ना गवार है मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना, ना स्वीकार है मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना। जो भी है पाना खुद के बल पर है पाना, खुद के बल पर है पाना। मित्रों, कोई भी व्यक्ति उम्र से युवा नहीं होता। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति उम्र से युवा नहीं होता। मेरा मानना है कि भारत का हर नागरिक, इसके हृदय में भारत के प्रति आत्मसमर्पणता की भाव हो, इसके हृदय में भारत के प्रति कुछ करने का जुनून हो, वो युवा है। यहाँ आप युवा हैं, यहाँ उपस्थित आप सभी युवा हैं। बस जरूरत है तो कुछ कर दिखाने की, जरूरत है तो ज्ञान में प्रचुरता की, जरूरत है तो घनिष्ठता की, जरूरत है तो आत्मनिर्भरता की। बिखरे सिक्कों को बटोरते हुए और अपनी वाणी को विराम देते हुए यहाँ मैं आपसे प्रेरणा की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ के भारत के युवा, थक कर न बैठ के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद। जम्मू एंड कश्मीर। ईश्वर की कसम, अल्लाह की कसम, ईश्वर की कसम, अल्लाह की कसम, ये ताना बाना सब बदलेगा, बदलेगा सब बदलेगा, सारा जमाना बदलेगा। ईश्वर की कसम, अल्लाह की कसम, ईश्वर की कसम, अल्लाह की कसम, बस एक कदम, बस एक कदम, एंड दैट वन कदम इज आत्मनिर्भर भारत। Esteemed galaxy of intellectual present over here, and my dear brothers and sisters, I am Priyatosh Devrakal from District Doda, UT J&K, and today I has been given a wonderful opportunity to put my views on very mesmerizing and burning topic, and the topic is Atmanirbhar Bharat and youth. So basically, what is Atmanirbhar Bharat? What was the need of introducing it, and why was it introduced? Atmanirbhar Bharat means self-reliant India. This
term got major boost during the time of coronavirus pandemic when Prime Minister Narendra Modi announced 10% of GDP as economic stimulus package to stressed economic sector by incentivizing job opportunities and providing more and more money directly into the hands of the ordinary people. According to one estimate provided by the Economic Times, there are more than 60 million MSME unit in India, which is currently employing more than 130 million population, thus contributing to one-third GDP of India and 40% export. And Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, he made it absolutely clear that there are 5 pillars of Indian economy. First is your demand, infrastructure, science and technology, system, demographic dividend. Let me move you towards some statistics and figure. Human Development Index, which is released by United Nations Development Program, we Indians have a poor ranking of 131. Our neighborhood states are performing better than India. In ease of doing business, we have a poor ranking of 63rd. So we need to look at all these issues. And if I can attribute this fact to Swami Vivekananda, what Swami Vivekananda has said that, he has said that if we want to bridge the gap between East and West, we need to go to Vedas. But I am of the strong opinion that apart from Vedas, we need to believe in our manufacturing sector, because world progress is centric to India's progress. And I strongly believe that we can introduce entrepreneurship skills, we can actually introduce skill-based learning to our primary student, because this is the ultimate aim of Atmanirbhar Bharat, to make each and every individual self-reliant. Education, it is the first thing without which a man cannot be a man. Educated are those who have learned much, who have remembered much, and have made use of their knowledge in their practical life. These kind of person who implement their knowledge in their practical life, these person are said to be an educated person in the real sense. We need to believe in our strong ideology, and because I think at present time the way we are enjoying prominent position in our international relation, be it Quad Group, be it SCO, be it SARC, I think we need to take advantage from this, and we need to be vocal for local. We need to promote make in India. Vande Bharat is one of the best example that can be included in Made in India. So I think there are a lot of areas where we can actually excel, because ultimately we have to implement, we have to visualize the concept of Atmanirbhar Bharat, and this can be only attributed when we can emerge as a global manufacturing hub. And the problem with the Atmanirbhar Bharat is that it has only talked about the supply side, it never has talked about the demand side. So we Indians, we have to generate the demand both from domestic economy as well as from the economy from the abroad. And most importantly, if I can attribute all of this, we need to believe in a strong education system. I think education is only the weapon that can cure every kind of want that are prevailing in society, and all the products that will be manufactured through Atmanirbhar Bharat, I think they must have global acceptance, they must have global credibility as well. And this is what I think Atmanirbhar Bharat is all about. Ann, Vastra, Shiksha, Avas और चिकित्सा, अन्न, वस्त्र, शिक्षा, आवास और चिकित्सा इन 5 निम्नतम आवश्यकताओं का हिस्सा है। मिल बांटने का हर व्यक्ति को अधिकार, कहते हैं बारंबार भारतीय सरकार। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। Good afternoon, panel, and everyone with their auspicious presence over here. Myself, Nandita, and this is me voicing my opinion on Atmanirbhar youth and the era of startups. Now, first of all, let us understand the meaning of Atmanirbhar Bharat. There's a thing called trade deficit, which is the subtraction of total amount of imports and total amount of exports. Now, this trade deficit, in the case of India and China, it is 5 times to that of imports. And imports are 15 times to that of the exports. Now, in this case, we have to study more about it. So, let's talk about what Prime Minister of Independence has said about it. He gave 20 lakh crore as the social economic funding of it. And he gave 3 main mottos, which are the Vocal for Local, the Atmanirbhar Bharat, and Make in India for Making World. To understand it more, let's give an emphasis on the very basic conditions which are required for the purpose of it. Number 1 being the work conditions of a specific population. Now, if there's kind of a laid-back work culture, which is in the case of India, and if there's a lack of active involvement, which certainly affects every section of the population, the youth and everyone else. Number 2 being the inheritory jobs and the frequency of inheritory jobs getting chosen. A lot of people want to continue with their jobs and businesses like their parents did. Now, this is quite suppressive to the concept of startups getting induced and entrepreneurships getting induced.
Also, if overworking is kind of capitalized, which is the case with foreign world countries and many second world countries like Japan, and which should not be the case with India, because startups, entrepreneurship are new concepts here in India. Now, these were kind of the hindrances we could possibly experience. The very high and the very narrow constricted part of the system, which consists of people of high power, and several times do these people of high power want the power to be fairly distributed among all the parts of the system. And these people of high power are a clear threat to constructive thinking. A very important aspect when it comes to entrepreneurships and Atmanirbharta getting induced in a society is the quality of risk-taking, which is not very much well taught in our society. The education system to its very core has only helped in making of mindsets who do not question. We feel like we are not supposed to question because the Marxist education system does not really focus on liberation of one's personality and the development of it. And neither does it focus on constructive idea building. Because enough awareness about government's program is just not enough when we talk about a big change. But working at the very basic and psychological level will surely do it. The making of Atmanirbhar Bharat is a two-way game, in which we cannot just wait for the big and the influential parts of the system, watch undergo some change, and it will then trickle down to the very basic core of system. Or we could talk about the change from that very basic core system. But it will be most effective if changes take place from both the tiers, the topmost functioning as well, and from the bottommost functioning as well. In the modern day era India, the very important skill is the capitalization of one's interests, passions, and whatever he likes to do. If one he knows it, he would win in the future. In the age of internet, we can do whatever we want, and all we got to do is just to permute and combine the things and present the desired output. Now, this was all about my opinions on Atmanirbhar Bharat. I'm taking myself off the stage. Thank you so much. उत्तर प्रदेश। मैं वंश चतुर्वेदी आज के विषय युवा और आत्मनिर्भर स्टार्टअप का दौर के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मेरा पहला स्थान आया था और एलोकेशन विधा में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। युवाओं में जो सूर्यमय असीम ऊर्जा है, जो उनकी संभावना है, उसका वास्तविक अर्थ, उसके व्याख्यान जीवन की मात्र 3 अवस्थाओं से ही लग जाता है। जहां एक ओर वृद्ध अपनी स्वर्णमयी अपनी जीवन की बीती हुई यादों में अतीत में विस्मृत है, तो वहीं बालक नवसृजन की ओर, अपने भविष्य की ओर कल्पनाओं में व्यस्त है। इन दोनों के मध्य वास्तविकता का आलिंगन करता हुआ युवा ही एकमात्र वह सृष्टि है, वह परिणति है जो वास्तविकता का आलिंगन करता है, क्योंकि वह जानता है वह अपने भविष्य को सजाने के लिए अपनी अतीत से शिक्षा लेकर वर्तमान को सजाता है। वह जानता है कि शौक के दीदार गर हो तो नजरों में नूर पैदा करना पड़ता है, क्योंकि वह उसी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है जिसने उसे स्टार्ट से ही सिखाया है, प्रारंभ से ही सिखाया है। वही स्टार्टअप जो कि हम वास्तव में आज इस भारत सरकार के द्वारा इस पूरे विश्व में, बल्कि हमारे युवाओं को तेज बनाने के लिए कर रहे हैं कि कर्मण्येवादि कारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगवस्तु कर्मणि। यही आत्मविश्वास, यही वर्तमान की संयमित ऊर्जा जिसने उसे पूरे विश्व में आगे बढ़ाया है, उसकी अपने आत्मबल की संस्कृति जिसने उसे जीवित बनाया है, जागृत बनाया है, और स्वम स्वम कुरु व ना अस्ति उद्यम समो बंधु का ज्ञान जो उसे उसकी संस्कृति से मिला है, आज इस भारत के ही नहीं वरन पूरे विश्व के सृजन के लिए युवाओं को कर्णधार बना चुका है। इन दोनों में आज के समय में स्टार्टअप के दौर में पैदा की गई ऊर्जा आज युवाओं को आत्मनिर्भर ही नहीं, सफल, सुफल व पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे खड़ी है। महोदय, एक बात पूर्णतः स्पष्ट है कि वह युवा शक्ति ही है जिसके कंधों पर किसी भी निर्माण या विध्वंस की नींव रखी जा सकती है। इसका स्पष्ट उदाहरण बना है वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में पुराने स्थायित्व से खड़े हुए व्यवसायों को कंधे की टक्कर देता प्रबल स्टार्टअप का नेतृत्वकारी युवा। यही कारण है कि आज भारत विश्व की स्टार्टअप इकोसिस्टम की तीसरी सबसे बड़ी इकाई बनकर उभरा है, जिसका स्पष्ट गवाही देती सामने वर्ष 2013 से 2018 तक की साल दर साल 12 से 15% की दर से बढ़ती वार्षिक वृद्धि दर सामने खड़ी है।
आज के समय में युवाओं की परिणति से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस प्रकार नेतृत्वकारी युवा हमारे देश में इस स्टार्टअप के जरिए प्रत्येक क्षण अपने रोजगार को स्वयं की आशाओं के साथ, स्वयं की अनुपूर्ति के साथ स्थापित कर रहा है कि इस पूरे विश्व में उसने एक प्रतिमान लाया है, एक ऐसा प्रतिमान जिसमें रोजगारों की सबसे बड़ी संभावना भारत में इस स्टार्टअप के माध्यम से ही पैदा की गई है। सरकारी आंकड़ों को ही ले लेते हैं। एक सरकारी आंकड़े के माध्यम से 2016 तक 1,87,004 प्रत्यक्ष व 5,60,000 अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए जा चुके हैं और प्रदान किए जा चुके हैं। नेस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार तो वर्ष 2025 तक इस भारतवर्ष में पूरे के पूरे 50 लाख से भी ज्यादा रोजगार सृजित हो रहे हैं और सभी रोजगार उन युवाओं को प्रदान किए जाएंगे और उनकी जो उद्यमकारी क्षमता है, उनकी संस्कृति है, उसको सृजनात्मकता के साथ उनकी बौद्धिकता को एक स्वतंत्र आकाश प्रदान करेंगे, जिससे कि निश्चित ही उनकी सृजनात्मकता किसी बेहतर स्तर में बढ़ेगी। इस भारतीय युवा में इस भारतीय बाजार की उन्नत समझ, बदलते तकनीकी, हम सभी जानते हैं कि हमारी तकनीकी में कितना तीव्र बदलाव हो रहा है, उसकी सुदृढ़ जानकारी जो एक युवा के पास बहुत तीव्र गति से होती है। भारतीय समाज में जो विविधता है उसकी सुस्पष्ट जानकारी, उसकी सार्वभौमिक पकड़, इनके साथ साथ सरकारी माध्यमों से, प्रक्रमों से, उन अलग अलग योजनाओं से उसे दिया जाने वाला प्रोत्साहन और उसके खुद कुछ कर गुजरने की, अपना खुद कुछ कर गुजरने का जज्बा आज विश्व में असीम संभावनाओं का भारत की ओर द्वार खोलता है। महोदय, इसी का स्पष्ट प्रमाण है वैश्विक स्तर पर नामचीन कंपनियों में से एक फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थापित स्टार्टअप्स को इस वैश्विक रूप से निवेश प्रदान करना। इसी प्रक्रम में गोल्डमैन के द्वारा 10,000 से भी ज्यादा न्यू महिला एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाने वाला प्रशिक्षण, जिससे कि प्रत्येक क्षेत्र में नई महिला एंटरप्रेन्योर्स आगे आ रही हैं, बढ़ रही हैं। यह सिर्फ और सिर्फ युवा शक्ति के लिए नहीं, बल्कि नारी सशक्तिकरण के लिए भी अपने आप में एक प्रतिमान स्थापित करता हुआ क्षेत्र है। इसी के साथ साथ पिछले 2 वर्षों में 14% तक नई महिला एंटरप्रेन्योर्स की वृद्धि अपने आप में एक प्रतिमान स्थापित करती है। जहां ये सारी चीजें इस तरह स्थापित होती हैं महोदय कि 26 वर्षीय रितेश अग्रवाल, 23 वर्षीय विशाल जैन, यहां तक कि 18 व 16 वर्षीय क्रमशः श्रवण व संजय कुमारन बंधु इस पूरे विश्व के सामने स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूरी की पूरी एक स्वतंत्र मानसिकता पैदा कर रहे हैं। सृजनात्मकता, आत्मनिर्भर व इस क्षेत्र में अपने आप को सफल बनाने के लिए नई संभावनाओं का खोल रहे हैं। एक वैश्विक सृजन के माध्यम से पूरे विश्व के सामने नई स्वप्न देखने की दुनिया को खोल रहे हैं और इसे वास्तविकता में उतारने पे खोल रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा शर्मनाक लगता है, अफसोसजनक प्रतीत होता है, एक बहुत बड़ी मांग बेरोजगारी। महोदय, शर्म आती है और वास्तविकता का भी दर्पण है कि यह निश्चित तौर पर उन युवाओं के द्वारा या तो नकारात्मक परिप्रेक्ष्यों की ओर झुकाव है, जो कि निश्चित सामने प्रतिलक्षित होता है, या फिर सरकारी नौकरी को ही एकमात्र रोजगार मान लेना। ऐसे लोगों के लिए हमारी उसी संस्कृति की बात करूंगा जिसने हमें बचपन से पाल कर आगे बढ़ाया है, कि उसी ने कहा है कि उद्यमेन ही सिद्धन्ते कार्याणि ना मनोरथे, उद्यमेन ही सिद्धन्ते कार्याणि ना मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में मृग खुद नहीं जाता, उस प्रकार बिना उद्यम के कभी भी किसी भी सफल रूप से कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता। यही उद्यम की सृष्टि है जिसने हमें भारत को भारत बनाया है, बल्कि पूरे विश्व में एक प्रतिमान के स्थाप से दोबारा से उस विश्व गुरु की छवि पर पहुंचाया है। यही वह सृष्टि है जिसने कि हम लोगों को निरंतर आगे बढ़ाया है। हमारे युवाओं में स्वावलंबन और निरंतर आगे बढ़ने की जो छवि है, जिस प्रकार से इसमें आगे बढ़ती है और इनके क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाती है, भारत सरकार जान चुकी है कि एक युवा ही है जो इस विश्व का सृजन कर सकता है, निरंतर आगे बढ़ा सकता है। शायद इसीलिए वर्तमान में अभी कुछ क्षण पहले एक प्रोग्राम के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया वक्तव्य स्किल, रीस्किल व अप स्किल अपने आप में एक प्रतिमान स्थापित करता है, जो युवाओं की सृष्टि की ओर, उनकी ताकत की ओर पूर्ण रूप से आलोकित करता है। और इसी के माध्यम से शायद केंद्रित होती हुई नई शिक्षा नीति के भी माध्यम से 6ठी कक्षा से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रवेश एक बहुत ज्यादा सम्मानजनक विषय है।
कि बालकों में ही अपने रोजगार के प्रति, अपने स्वाभिमान व आत्मनिर्भरता के प्रति एक जागृति पैदा की जाए कि वह इस क्षेत्र में आगे निकलने के बाद ऐसे स्टार्टअप के दौर में, जिसके लिए कुछ विद्वान लिखते हैं कि आज के स्टार्टअप के दौर में, स्वर्णिम कहे जाने वाले दौर में, विश्व में युवा के लिए सबसे बड़ी संभावनाएं खुली हैं। दोनों हाथ फैलाकर बस उसे अपने सपनों को अपने उद्यम से जोड़ना है, जिसके लिए प्रोत्साहन के लिए हम सब लोग खड़े हैं। हम सभी लोग उन मांगों को आगे रखते हैं और सरकार हमारी उन मांगों को एक स्तर पर पहुंचाती है। और आज के वर्तमान में आने वाले ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्वयं में एक प्रतिमान स्थापित करती है और वहां से निकलने वाले प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से दिया जाने वाला नया अवसर इस पूरे विश्व में आत्मनिर्भरता का एक साक्ष्य के रूप में पैदा हुआ है, जिसने उसे एक नया आयाम प्रदान किया है। स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, इन दोनों के मध्य में आज विश्व की स्वयं की आत्मनिर्भरता के साथ साथ भारत के विश्व गुरु के परचम का भी कर्णधार महोदय युवा बनकर उभरा है। और इस पूरी संस्कृति में एक बात स्पष्ट है कि कोई युवा एक उम्र बाधित दौर नहीं है, यह एक जीवंत श्रृंखला है, स्वयं के आगे बढ़ने का प्रमाण है, एक आत्मसम्मान का प्रतीक है, स्वावलंबन की सृष्टि है, जिसने उसे आगे बढ़कर निरंतर उद्यम करने के लिए प्रेरित किया है, हमेशा आगे बढ़ने की सोच के साथ बढ़ाया है। अगर यह नहीं होता तो सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों हाथ से हीन एक पुरुष को भुंटा बेचकर देखकर, बावजूद उसके हाथ नहीं है, हम लोग ताली नहीं बजाते उसके आत्मसम्मान के प्रति, क्योंकि वह अपनी सारी की सारी विभ्रंशताओं को छोड़कर निरंतर प्रवेश करता है अपने यापन के मार्ग पे, अपनी आत्मनिर्भरता की सृष्टि पे। आखिर यही एक आत्मनिर्भरता हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसके लिए युवा वास्तविक उस युवा को परिणत करता है जिसने कि शिकागो में जाकर यह विषय उन्हें भूलने का नहीं है, क्योंकि वही हमारा भारतीय आत्मबल है, विवेकानंद। वह कोई नाम नागरिक नहीं है, वह एक जीवंत श्रृंखला है, वह एक विचारधारा है जिसने आत्मनिर्भर बनो हम सभी युवा सृष्टि में प्रत्येक विश्व में एक चिर युवा के रूप में स्थापित हुआ। हम उसी की संतति हैं, हम उसी सभ्यता के अंग हैं। आखिर इसी चीज को हम लोग आगे लेके चलते हैं महोदय। ऐसे में एक बात जब बड़ी अफसोस सी फील होती है, अब अपना बड़ा अफसोस सा महसूस होता है कि इस आत्मविश्वास के दौर में, इस आत्मसम्मान, इस स्वावलंबन, इस आत्मनिर्भरता के दौर में हम लोग कुछ ऐसे परिप्रेक्ष्यों में अपने आप को विभ्रंशित पाते हैं, खोता हुआ पाते हैं, जहां पर हम ये भूल जाते हैं कि आज जब अखिल विश्व हमारे पूरी योजनाओं के माध्यम से, नए नए दौर के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, यहाँ तक कि हमारे अपने सपने, जैसे मान लीजिए किसी को अब कैमरा चलाना पसंद है, वह स्किल पैदा करे, अपने अंदर किसी ना किसी तरह का कौशल पैदा करे और उस कौशल को सही मायनों में स्थापित करे और अपने आप को आगे बढ़ाए। यही आत्मविश्वास है, यही वह आत्मविश्वास है, वही स्वावलंबन है जिसने इस पूरे विश्व में आत्मनिर्भरता का द्योतक बन इस युवा शक्ति को सबसे ऊपर पहुंचाया है। यह युवा वह मानसिकता है जिसके लिए कहना पूर्ण रूप से उचित होगा कि पंख होने से कुछ नहीं होता, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अरे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है, वही जान हमारी युवा शक्ति का प्रतीक है। आज हमारे इस स्टार्टअप के दौर में आलिंगन करती खुद की एक नवसृजन की दौर, जिसमें कि प्रत्येक युवा को एक आत्मनिर्भरता होने का एक स्वाभिमान प्रदान किया है, प्रत्येक क्षण पे बढ़ते कदमों के साथ नए सृजन के साथ जोड़ा है, नवधारा में लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने आगे लेके आया। विभिन्न योजनाएं प्रमाण हैं, स्पष्ट हमारे सामने सात्विकता प्रदर्शित करती हैं कि आखिर एक कारण होता है किसी भी नए सृजन पे अपना खुद का करने का जज्बा खत्म हो जाता है, वह होता है निवेश। भारतीय इस युवाओं को दिया जाने वाला सरकार की ओर से प्रोत्साहन, यह अपने आप में एक प्रतिमान दर्ज करता है। बस जरूरत है उस योग्यता को अपने अंदर धारण करने की, उसे धरातल पर सत्य प्रदर्शित करने की। बस उसी युवा शक्ति के लिए एक आवाहन के साथ स्वलिखित कुछ पंक्तियों के साथ अपने वक्तव्य को विश्राम प्रदान करूंगा कि जीत की भी विजय हो तुम। जीत वह है जो उसे भी जीत कर स्वयं को विजयी घोषित करेगी कि जीत की भी विजय हो तुम श्वास में विश्वास लिए, जीत की विजय हो तुम श्वास में विश्वास लिए, दुर्गम भी तुमने पार किए हैं आरंभ का एहसास लिए, जीत की विजय हो तुम प्रारंभ का एहसास लिए,
दुर्गम में तुमने पार किए हैं, श्वास में विश्वास लिए। बुक्षित को भोजन मिले निर्जन के वो कंद हो, अरे बुक्षित को भोजन मिले निर्जन के वो कंद हो। अखिल विश्व गर अरण्य है तो उसमें भी तुम सिंह हो, अखिल विश्व गर अरण्य है तो उसमें भी तुम सिंह हो। मैं उस सिंह को सलाम करता हूं। आज स्टार्टअप का दौर आप सभी के आगे आत्मनिर्भर बनने के लिए, आंगन करने के लिए सामने खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। My name is Monica Shrivastava from Uttar Pradesh, second position. Today I am here to express my views over the topic Youth Atmanirbhar, the era of startup. Firstly, I would like to state or describe about youth. We the youth, or we the youngsters in our language, constitute a great huge population in this nation, and we have a keen thirst to soar higher and higher, having a young blood. First of all, I would like to relate youth and Atmanirbhar both simultaneously. Youth, we the youth and Atmanirbhar. Atmanirbhar means self-reliant or being independent. The global outbreak of COVID-19 has brought a sudden pause in the fast-moving lives of the people of machine era. In order to boost up the economy, Prime Minister Narendra Modi has launched the mission of Atmanirbhar Bharat, or the self-reliant India, in May 2020. This is just for the youth to get self-reliant, and as well as our nation wants to have the India in most of the probable place. Now I would like to relate both of them. Atmanirbhar Bharat, or the self-reliant India, as we the youngsters have a young blood, a keen thirst to soar higher, and a keen place to go and earn. Instead of getting jobs, or instead of wandering here and there for government jobs especially, we have the keen thirst, or we can go higher to create the job. And here comes the startup. I would like to define startup. What is a startup? It is an indigenous way to create the job in order to boost up the economy, getting revenues and offering job opportunities to the unemployed. We know that India is having a great number of unemployments. There are sort of unemployments here where people are having seasonal unemployment, disguised unemployment, and there are some who are just leaving the jobs just because they are not getting it. Here comes the Atmanirbhar Bharat relating with the youth. The startup can have many objectives, as it can boost the economy, as well as it can also boost up the revenues and making ourselves self-reliant, thus making the nation self-reliant. I would like to give some examples. Paytm, Zomato, Swiggy, they are all Indian startups. Startup is basically an idea that comes to your mind to start anything new, to have anything new, and to soar high in your dreams and get the success. Now, I would like to tell that in India, in 90 seconds, there are records that 3 thoughts of startup come in every youngster's mind. Isn't it incredible? I think so, yes it is. We the youth, or we the youngsters, have great idea of startup, but we don't go for it because I think there is some changes needed in our way also, like the schooling or the education we get, or the perspective in which the startups has been seen or perceived till now. During the lockdown days, I have read in newspapers that there are many people who lost their jobs and started a good startup there. For example, I would like to cite is a Chhattisgarh Adivasi woman who started to get a startup job,
and she used and she started making sanitizers at that moment, because I think that was the need of the hour. So she started making sanitizers, and now she is earning 60 lakhs per annum through that. So you can imagine that easily, that startups are giving you profit. I know there's risk in everywhere. Where without risk, you cannot do anything. But in startups and youth, we can say that we will soar higher at that moment. Swami Vivekananda said, if you see at the highest, if you aim at the highest, you shall reach to the highest. And we, the youngsters, as Swami Vivekananda said, have the muscles of iron and nerves of steel. So we can do anything. If we relate it to the startup and Atmanirbhar Bharat, there was 16 tranches. 16 tranches has been given by the Prime Minister of India, including MSMEs, NBFCs, etc., about the nation to gain back its name. As we all know, after this pandemic, this year 2020, most of the development countries have shattered their economies, and so was India. India too is lagging behind many things like unemployment, lacking economy rate, GDP, etc., etc. But if you think that I can do it, and all the youngsters gather together and say, we will make India a self-reliant nation. Nothing matters if you are here and you say, I will do this or that. There's no range or rank in jobs. Just have a thought, go for it, and I'm sure you will get it. At last, to conclude up, I would just like to say that Zomato, Swiggy, Paytm, at some point of time, they were just a small startup, and now they are growing into MNCs. Isn't it incredible? I think so, yes, it is. There are many companies like Reliance, ITC, which started from the root level. Obviously, we have to start from zero, then we'll get some points. And hard work is needed, of course. Now I would like to tell you that Atmanirbhar Bharat, or self-reliant India, why only youngsters are being called up? Why we the youngsters have been called up there? Because we are having the third largest idea of startup in the nation. According to a survey of The Print, we have studied that we Indian youngsters are having the third largest population of youngsters, as well as we are having the third largest rank in startups also. So why don't we gather up together and make our India self-reliant? We the youth can do this. Don't you think so? I think yes. We the youth can stand and start up. Being a commerce student, I would like to point out that business is not so risky. At least we have to get something. I think every shopkeeper, starting from the shopkeeper, businessman, even that fruit vendors or vegetable vendors nearby, take that risk of getting some profit. So a small idea of entrepreneurship can go long and make you have the heights of sky and kiss the sky. At last, I would just like to say that we the youngsters have all the power to soar higher, to go higher, and to kiss the sky. We the youngsters have all the power, and that's why our Prime Minister Narendra Modi relied on us and is asking us to join hands to make our India again Atmanirbhar, or the self-reliant one globally. One thing I want to point out is that this startup, the era of startup, which just has been very trendy these days, the era of startup will surely lead to the globalization of our local things.
So at last, I would just like to say that promote local to be global. Thank you. समस्त समस्याओं का समाधान है युवा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म चिंतन को आदर्श वाक्य अग्रीकृत करते हुए अपने स्वयं को सभी प्रकार से अंगीभूत करते हुए है युवा। एक विधान, एक संविधान, एक निशान को अंगीकृत करते हुए आज के समय में स्वयं को स्थापित करते हैं युवा। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को स्थापित करते हुए, स्वयं के आदर्शों में चिंतन करते हुए, आज की व्यवस्था के साथ स्वयं में चलने के साथ, आज की समग्रता के साथ है युवा। आज का विषय है आत्मनिर्भर है युवा, स्टार्टअप का युग। हम सभी जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की समग्रता के साथ किस प्रकार वैश्विक व्यवस्था के रूप में स्वयं को स्थापित करने के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक समग्रता और मिलजुल के प्रयास करने का कार्य है। आत्मनिर्भर भारत, आज भारत का युवा माता भूमि पुत्रोहम पृथ्विया के भांति अपने आदर्श को, अपने चरित्र को, अपने विवेक को, अपने ज्ञान को और अपने शील को जिस प्रकार से चरितार्थ करते हुए समस्त विश्व को 21वीं सदी में भारत की सदी बनाने के लिए तैयार है, उस सदी के माध्यम से, आत्मनिर्भर अभियान के माध्यम से समस्त भारत जिस प्रकार से आपदा में अवसर को खोजकर अपने 130 करोड़ जनता के साथ विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र की शक्ति होने के साथ अपने आप को स्थापित कर रहा है, इसके अनुरूप आज आत्मनिर्भर का चिंतन हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत के साथ जिस प्रकार से हम अपने आप को जोड़ते हुए देखते हैं कि आत्मनिर्भर में हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, आत्मनिर्भर में हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर में हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर में हम अपने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की बात करते हैं। आत्मनिर्भर की हम अगर यहाँ पे व्याख्या करें तो उसमें सबसे प्रथम हमको देखना होगा कि हमारी देश की जो सबसे मूल अर्थव्यवस्था है वो क्या है। हम देखेंगे कि हमारी देश की जो सबसे पुरानी अर्थव्यवस्था है वो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, अपने हिंद स्वराज के किताब में लिखा था कि जिस तरीके से अपनी माँ, एक माँ अपनी पुत्र की सुरक्षा पूरे विश्व से करती है, उसी प्रकार से भारत को अपने प्राथमिक उद्योगों की सुरक्षा करनी चाहिए। इस स्वदेशी जागरण के अनुरूप, इस स्वदेशी आंदोलन के अनुरूप, जब इस भयंकर महामारी कोरोना के समय में संपूर्ण वैश्विक जगत अपनी अर्थव्यवस्था से एकदम हिल गया था, उस समय भारत ने दशा और दिशा दिखाने का काम किया और आत्मनिर्भर भारत अभियान एक समग्रता के रूप में और एक वैश्विकता के रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई देता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के माध्यम से देखें तो किस प्रकार से जब शहरी अर्थव्यवस्था में, शहरी अर्थव्यवस्था के विचार में, वैश्वीकरण के विचार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती गई और इन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कमजोर पड़ने के साथ साथ किस तरीके से शहरीकरण का विस्तार हुआ और इस शहरीकरण के विस्तार होने के साथ साथ सभी अपने आप को एक अर्थ केंद्रित व्यवस्था समझने लगे। लेकिन इस कोरोना के समय में यह सबको महसूस हो गया कि हमको एक मानव केंद्रित अर्थव्यवस्था बनने की आवश्यकता है। आपदा नहीं है भारी, आपदा नहीं है भारी, कर लो अवसर की तैयारी, अब है आत्मनिर्भर की बारी। इस उद्घोष के साथ हम अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, जहां हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र में 130 करोड़ की जनता में 45% रोजगार हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मिलती है। हम अपने देश के निर्यात में 50% ग्रामीण अर्थव्यवस्था के माध्यम से भेजते हैं।
हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के माध्यम से 6500 प्रकार के ऐसे उत्पादन करते हैं जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ते हैं। हम अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उन सभी प्रकार के ऐसे उद्योग, उन सभी प्रकार के ऐसे ग्रामोद्योग की कल्पना करते हैं जिससे हमारी भारी और बड़ी उद्योग चलती हैं। अगर हम आत्मनिर्भर भारत में सूक्ष्म, लघु, मध्यम इस प्रकार के उद्योगों को देखेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारी श्रम शक्ति कैसी है। हम अपनी श्रम शक्ति को केवल और केवल एक आजीविका के माध्यम से, केवल और केवल एक श्रम शक्ति के माध्यम से प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इसको किस तरीके से मशीनों और उपकरणों के माध्यम से जोड़ सकते हैं, किस तरीके से श्रमिक की संख्या, उनकी आजीविका की संख्या रोजगार के माध्यम से जोड़ सकते हैं, इस प्रकार की कार्य करने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान के अनुरूप हम आज के समय में देखेंगे कि किस प्रकार से बिहार में रहने वाला एक IITian युवा जब देखता है कि हमारे गांव में केवल और केवल पारंपरिक खेती करके लोग उत्पादन करते हैं, जबकि इजराइल में जितने एरिया में हम गेहूं और धान उगाते हैं उतने एरिया में वो इजराइल में फूल उगाकर हमसे ज्यादा धन को अर्जित करते हैं। तब वो जैविक खेती की बात करता है, बैक टू विलेज की बात करता है। इस बैक टू विलेज की बात करने के साथ वहां पे हम ऑर्गेनिक खेती को देखते हैं जिससे हमारे फसल एक संपूर्ण मात्रा में स्वयं के दोहन के अनुरूप निर्यात करने के अनुकूल होते हैं। इसके अनुरूप हम आगे जाते हैं तो देखते हैं कि मत्स्य पालन में, कुक्कुट पालन में, ग्रामोद्योग के बाद आगे जाएंगे तो मत्स्य पालन में, इन सभी प्रकार की स्थितियों में आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है उन सभी योजनाओं के साथ जोड़ते हुए हम स्वयं को अपने आप में स्थापित कर सकते हैं। आज अपने देश में एक कितनी बड़ी युवा शक्ति है जिसको मेक इन इंडिया के माध्यम से, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के कार्यक्रम के माध्यम से, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कार्यक्रम से, उसको सभी प्रकार की क्रियाओं से स्वयं को जोड़ते हुए, एक स्टार्टअप के माध्यम से जोड़ते हुए स्वयं को स्थापित कर सकता है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने मन की बात में व्याख्या की कि किस प्रकार जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को हम उपभोग और उपयोग में नहीं लाते हैं, लेकिन अगर हम उस अपशिष्ट पदार्थ को उपयोग और उपभोग में लाएं तो हमारी जीविका कितने आगे जा सकती है, इसको भी हम एक स्टार्टअप का रूप दे सकते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वीरेंद्र यादव जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, हरियाणा के मूल निवासी हैं, उन्होंने पराली को इकट्ठा किया, पराली के माध्यम से एक स्टार्टअप को जन्म दिया, उन पराली को जाके पेपर मिल और एग्रोफार्मा में देने लगे, जिससे वो प्रति वर्ष लगभग 50 लाख रुपए कमाने लगे। आज उस पराली के माध्यम से एक वो रोजगार सृजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे हम देखेंगे सिक्किम की आदरणीय गुरुंग जी किस प्रकार से स्वयं एक हैंडक्राफ्ट बनाते हुए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, MSME के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वहां पे कितनी महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। मैं गोरखपुर से आता हूं। गोरखपुर में एक स्थान है भटहट, उस भटहट में एक गांव है औरंगाबाद। औरंगाबाद का एक हस्तशिल्प निर्मित टेराकोटा एक ऐसे सामग्री के रूप में आता था जिसका कोई पहचान नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से टेराकोटा को स्थान मिला। टेराकोटा को स्थान मिलने के कारण आज टेराकोटा GCI टैगिंग पा के वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान दे रहा है। इस प्रकार से हम देखेंगे
कि किस तरीके से युवा उद्यमी अद्वैत ठाकुर मात्र केवल 17 साल की उम्र में कंप्यूटर कोडिंग सीख के, वेब डेवलपिंग करके अपने आप को और अपने साथ साथ कई लोगों को रोजगार देके भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। हम सभी आज के इस वैश्वीकरण के युग में भारत की सदी के रूप में अपने आप को, अपनी युवा शक्ति को लगाने की आवश्यकता है। हर जगह थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, हर जगह थोड़ी बहुत जटिलता होती हैं, लेकिन मैं यहां भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की वाक्यों को कहना चाहूंगा। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों के पार नहीं है, किंतु डूब जाना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। भारत का युवा ऐसा है, भारत का युवा इन्हीं जटिलता के साथ, भारत का युवा इन्हीं आदर्श के साथ, भारत का युवा इन्हीं सोच के साथ, भारत का युवा इन्हीं शांति के साथ अपने आदर्शों को लेते हुए, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को लेते हुए स्वयं को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देना चाहता है। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, उन्होंने अपने पुस्तक में भी इसका जिक्र किया है कि अगर भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ दिया जाए तो भारत एक वास्तव में ऐसी शक्ति बन के उभरेगा जो पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से समुद्री मछुआरों का मदद करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उनकी मदद कर रहा है, जिसके माध्यम से आज हम सी फूड में, ईज टू डूइंग बिजनेस में विश्व बैंक द्वारा जो सूची दी गई है उसमें पूरा 14 स्थान की छलांग लगाए हैं। हमारी निर्यात बढ़ी है, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी है, हमारी सभी प्रकार की चीजें, हमारी सभी प्रकार की वस्तुएं बढ़ी हैं। मैं अपनी सभी बातों को समावेशित करते हुए ये कहना चाहूंगा कि आज का युवा जो वास्तव में इस कोरोना और वैश्विक कोरोना के समय में संपूर्ण विश्व को एक रास्ता दिखा रहा है। आज भारत का ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आज भारत का प्राथमिक और मध्यम अर्थव्यवस्था, आज भारत का जो उद्योग है वो संपूर्ण विश्व में अपनी एक दशा और दिशा देने को तैयार है। उत्तराखंड। हम अंगुल काट कर ऋषियों के चरणों में अर्पित करते हैं, अक्सर अपना बचपन शौर्य को समर्पित करते हैं। सिकंदर की शमशीर झुका दी भारत के फौलादों ने, शासन को नाकाम कर दिया एक वीर आजाद ने। दस्तखत है इस मिट्टी की समूचे आसमान को, ये नव भारत है, ऐलान करो सारे जहान को, ऐलान करो सारे जहान को। परम वंदनीय मां शारदे, उपस्थित अधिकारी महोदय, निर्णायक मंडल, खेल शिक्षा एवं खेल को समर्पित मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों, मैं मोहित चंद्र प्रेती राज्य उत्तराखंड से आप सभी के सामने युवा आत्मनिर्भर एवं स्टार्टअप के युग विषय पर अपने शब्द रखूंगा। महोदय, युवा जिस शब्द को हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, जिस प्रकार वायु अनियंत्रित होकर बड़े बड़े तूफान प्रलय तक ला देती है, उसी प्रकार वही वायु जब प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो वो हमारे शरीर को नवजीवन देती है। उसी प्रकार युवा जब सभ्य तरीके से आगे बढ़ता है तो वह देश का प्राण अर्थात देश को आगे बढ़ाता है, और वही युवा जब अनियंत्रित होकर आगे बढ़ता है तो वह बड़ी से बड़ी शासन व्यवस्था का भी अंत कर देता है। बात करें युवाओं के आत्मनिर्भर होने की, आज हर युवा कुछ न कुछ कार्य कर रहा है, परंतु उसके पास लक्ष्य की कमी है। लक्ष्य अर्थात नक्शा, इसी नक्शे अर्थात नक्शे को प्रदान किया भारत सरकार ने, जिसमें स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाए गए। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। परंतु महोदय, मुझे दुख तो तब होता है आज जिस युवा के कंधे पर देश को सजोने संवरने की जिम्मेदारी है, उस देश का युवा आज कोमल बेड की सीट पर बैठकर अपने कोमल हाथों की अंगुलियों से 4x4 इंच की स्क्रीन पर अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा होता है। उस युवा को सोचना पड़ेगा, क्योंकि युवा एक वेग है, युवा एक गति है। जब वह गति सही राह पर चलती है तो प्रगति के दौर पर चलती है और देश का भविष्य सुनहरा होता है। आज बात करें युवाओं में नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने की,
क्योंकि आज हम पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, परंतु हमें जरूरत है ए फॉर अब्दुल कलाम, बी फॉर भगत सिंह, सी फॉर चाणक्य जैसे नैतिक मूल्यों को पढ़ने की। बात करें हमारे भारतवर्ष की, यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष के युवा न केवल भारत में वरन पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, जिसमें सुंदर पिचई जी का नाम सर्वप्रथम रूप से आता है। ये नाम भारत की व्यवस्था के लिए एक अंगुली है, क्योंकि भारत का युवा भारत में न रहकर विदेशों में कार्य कर रहा है। उसे उस युवा को समझाना पड़ेगा कि भारत में रहकर कार्य करने के लिए अपनी देशभक्ति से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका उदाहरण हमें रामायण जैसे महाकाव्य में मिलता है। जब रामचंद्र भगवान लंका में रावण को मारकर जाते हैं तो उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं, भैया क्यों ना इस नगरी को हम अपनी राजधानी बना लें। उस समय प्रभु राम एक सुंदर सा व्यंग्य प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। अर्थात अपितु ये सोने की लंका सुंदर है, स्वर्ण से बनी हुई है, परंतु जन्म देने वाली भूमि स्वर्ग से भी महान होती है। इस प्रकार के नैतिक मूल्यों को हमें आगे ले जाना पड़ेगा। और बात करें आज, भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार की बीमारियां, कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि आज भारत विभिन्न प्रकार के वेंटिलेटर, मास्क का खुद ही रूप से प्रयोग कर रहा है, वो भारत में खुद ही इन्हें निर्मित कर रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि भारत को भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अंत में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा, इतिहासों में जो हुआ नहीं, इतिहासों में जो हुआ नहीं, इस बरस इस बार हो, शिशुपाल के गिरवा स्थल पर सुदर्शन का प्रहार हो, मान सिंह सा तना है सीना तो प्रताप का भाला पार हो, युवाओं का पतन बनी है रावण तो राम का अवतार हो, खुद से करें नव भारत का निर्माण, इस नारे का ऐलान करें, सचमुच सारे जहां से अच्छा अपना हिंदुस्तान करें, अपना हिंदुस्तान करें। जय हिंद, जय भारत। आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर से निकला है वो सत, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधे को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ए युवा तू उठ, तू चल, तू आत्मनिर्भर बन। ए युवा तू उठ, तू चल, तू आत्मनिर्भर बन। ये देश आगे बढ़ चलेगा, ये देश आगे बढ़ चलेगा। A very good morning to one and all present here. My name is Mohit Singh. I'm from Pithoragarh, उत्तराखंड। हम पिछली 21 शताब्दी में हमने सुना था कि भारत 21वीं शताब्दी का राजा होगा, और हमने कोरोना से पहले की वैश्विक व्यवस्थाओं को भी देखा था, भली भांति जानते हैं। और कोरोना के समय का, जो कोरोना महामारी के समय का काल है, उसे भी हम बहुत ही नज़दीक से उस समय को पहचानते हैं। जब हम इन दोनों खंडों को भारत के नज़रिए से देखते हैं, तो तब भी जो हमारा सपना था 21वीं शताब्दी में विश्व विजय होने का, वो आज सिर्फ एक सपना नहीं, आज एक हर युवा की जिम्मेदारी भी है। अब सवाल है कि जिम्मेदारी है तो कैसे इसे पूरा करें, और इस सवाल का इस विश्व में आज एक ही उत्तर है, वो है आत्मनिर्भर। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, एका पंतसह प्रदर्शिति, मतलब कि हमें खुद सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा। नाउ आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज द आत्मनिर्भर एंड व्हाई आत्मनिर्भर। वी हैव अ लॉन्ग ट्रेड डेफिसिट विद चाइना व्हिच इज ऑलमोस्ट द 51+ बिलियन। ट्रेड डेफिसिट मीन द टोटल एक्सपोर्ट माइनस द टोटल इंपोर्ट, एंड दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज फॉर अस, फॉर द इंडिया। नाउ how these issues are creating due to a lot of problems such as the dumping of the materials, and a lot of things are there. And what will happen when we will be a Atmanirbhar, when we will be a self-reliance? We will make our own products. That is the Atmanirbhar. We will start up from the basic. We will make our own dreams complete on our accessories. That will be a Atmanirbhar. Now, government has done a great initiative for the Atmanirbhar. I will talk about first the 5 pillars. The 5 pillars are economy, infrastructure, the system, the vibrant demography, and a demand. When we talk about the 5 phases, the 5 phases are different types. Like for the MSMEs, for the agriculture, for the different vibrant industrials, there are 5 different phases which are working. And what other than this government has done or initiate, the government has initiated such as like they have relaxation on the taxes, they have relaxation on the corporation taxes, they have given a good opportunity to the startup companies.
Now when I talk about or think about the concern, the first thing came into my mind is the Swiggy. The Swiggy is the example, the Byju's are the example. For being a Atmanirbhar, this is the best thing for everyone over here. We, the people of the India, will create the opportunities on ourselves. We will be a Atmanirbhar, we will be a self-reliant. The government have given us a lot of opportunities for being at the pinnacle of the summit. And we will be at that pinnacle. Not very soon, but we will be. We will take time, no issue. We will be there with the time. But what is the thing? The government is organizing all these things very properly because they want this Yuvaah, those Yuvaah who are sitting and listening to me over there, and me Yuvaah. And we have to be a self-reliant and to take our country in the pinnacle of the summit. आगे नहीं आओगे तब तक नया सवेरा कैसे लाओगे? सर्वप्रथम माँ वीणा धारणी को मेरा सादर नमन तथा मंच पर आसीन न्यायप्रिय निर्णायक मंडल अथवा सभी श्रोतागण को मेरा सादर नमस्कार। मैं सिमरन दिवाकर देहरादून डिस्ट्रिक्ट से युवा एवं आत्मनिर्भर भारत पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। माफी होगी, गलतियों के लिए माफी चाहूंगी। आत्मनिर्भर भारत एवं युवा। सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि युवा क्या है। युवा नए सोच और नए ऊर्जा का वो स्रोत है जिससे देश की भविष्य किया जा सकता है। सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो युवा है वो मेरे देश का भविष्य है। अगर युवा नहीं होंगे तो मेरा देश कभी भी भविष्य में उन्नति नहीं कर पाएगा। आत्मनिर्भर भारत को युवा से क्यों जोड़ा और कैसे जोड़ा गया? सर्वप्रथम आत्मनिर्भर का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भर का अर्थ है कि किसी और पर निर्भर न होकर स्वयं पर निर्भर होना। और कोरोना संकट के दौरान हमारे भारत को ये जरूरत पड़ी कि अब आत्मनिर्भर होना है, अब भारत को कुछ नया कर दिखाना है। क्योंकि कोरोना संकट काल में किसानों को, मजदूरों को हमने देखा, प्रवास करते हुए देखा, पलायन करते हुए देखा, और दूसरा वेंटिलेटर वगैरह सबकी कितनी ज़रूरत हुई थी जब हम दूसरे देशों पर इसके लिए निर्भर थे। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमें आईफोन की जगह लावा का फ़ोन यूज़ करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान जब प्रारंभ हुआ था तो लोगों ने अपने फ़ोन से जितने भी चाइनीज़ ऐप थे उनको अनइंस्टॉल मार दिया था और उन्हें लगा था कि शायद इससे हमारा आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान होगा। परंतु मैं कहना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य ऐप को अनइंस्टॉल करने से नहीं है, बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करना है कि वो टेक्नोलॉजी जिसको हम बाहरी देशों से लेते हैं, हम उसका प्रयोग करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी को हमारे भारत में विकसित किया जाए और हमारे देश के युवा में इतना कौशल विकास हो कि वो उस प्रणाली को अपने भारत में बनाए। स्टार्टअप का योग आत्मनिर्भर भारत से सीधे संबंधित है। स्टार्टअप का उद्देश्य है कि स्वरोजगारों को प्रोत्साहित करना अथवा हम युवाओं को नए स्वरोजगारों के लिए नए नए उद्देश्य प्रदान करना जिससे उनकी आर्थिक मदद की जाए। ये किसान पर भी निर्भर होगा, किसान क्षेत्र में आत्मनिर्भरता होगी, तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता होगी आदि सभी। अंत में मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूँगी कि हे भारत, तुझे अब आत्मनिर्भर होना है। हे भारत, तुझे अब आत्मनिर्भर होना है। सोना धरती से फिर उगलना है, खेतों को उर्वर होना है। सोने की चिड़िया नहीं, तुझे सोने का अंबर होना है। सोने की चिड़िया नहीं, सोने का अंबर होना है, ना किसी और पर निर्भर होना है। हे भारत, तुझको स्वयं आत्मनिर्भर होना है। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति। दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव। I am Chandrakanta presenting Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu in Youth Festival। यहाँ मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। यहाँ बुद्ध के उपदेश और ईसा मसीहा के बलिदान की गाथा होती है। मैंने सुना है यहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम से थी है। फिर क्यों हो गए हम इतने निर्भर कि आज आत्मनिर्भर होने की बात होती है। असम की चाय हो या दक्षिण के मसाले विदेशियों को आकर्षित करती है, तो हिमालय में स्थित
वैष्णो देवी में चढ़े नारियल की पूर्ति केरल और तमिल जैसे राज्य से होती है। फिर क्यों हो गए हम इतने निर्भर कि आज आत्मनिर्भर होने की बात होती है। जहाँ विविधता में एकता है वहाँ आज आत्मनिर्भरता की बात होती है। नमस्कार, सभी को प्रणाम करते हुए मैं जानी चंद्रकांता आज के विषय पे अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, युवा वर्ग ही किसी देश का मजबूत स्तंभ होते हैं, क्योंकि युवा वर्ग पर ही देश की प्रगति निर्भर होती है। जब कोई समूचे भारत की आत्मनिर्भरता में बात करता है तो मेरा मन करता है कि उसकी टोपी हवा में उछालूं और उसे ये बताऊं कि भारत का अर्थ किसी दुष्यंत के बेटे भरत से नहीं, अपितु भारत का अर्थ खेतों से है, जहाँ आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आशा, शक्ति और मजदूरी का बीज बोया जाता है। आत्मनिर्भरता का सही अर्थ किसी पे निर्भर न होकर खुद पर निर्भर होना होता है। यह शब्द जितना एक व्यक्ति के लिए जरूरी है उतना ही देश, गांव आदि के लिए जरूरी है। यदि हमारा देश खुद पर निर्भर रहेगा तो उसे किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब दुनिया से जुड़े रहते हुए आर्थिक विकास के साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना संकट में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए की है। इस अभियान के अंतर्गत भारत के लोगों को कामकाज करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी एवं यह प्रयत्न किया जाएगा कि आने वाले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की वस्तुएं स्वयं तैयार करे, अर्थात आत्मनिर्भर बने। परंतु इस मन से मैं आज ये हमारे युवा वर्ग से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि भारत सरकार के प्रयासों से हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है आत्मविश्वास। आत्मनिर्भर भारत की पहली शर्त यह है कि भारत का हर युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो। आत्मनिर्भर भारत की नींव हर वो युवा है जो अपनी शर्त को आत्मनिर्भर रखता है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये कदापि नहीं कि हम वैश्वीकरण से मुंह मोड़ लें। आज पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। हमारा भारत आत्मनिर्भरता बनेगा जब इस देश का युवा वर्ग IIT और IIM से निकलकर विदेशों के बदले इस देश की गांवों की सड़कों का रुख करेंगे। हम आत्मनिर्भरता बनेंगे जब हमें न्यूटन, आइंस्टाइन के साथ साथ गांधी, नेहरू, विवेकानंद जैसे महापुरुषों की जीवनी पर अध्ययन कराया जाएगा। हम आत्मनिर्भरता बनेंगे जब इस देश के युवा रोजगार पाने के लिए नहीं अपितु रोजगार देने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भरता बनेंगे जब इस देश की स्कूलों में विद्यार्थियों को खुद को सीखना और अपनी शक्ति पर विश्वास करना सिखाया जाएगा, और ये संभव है नई शिक्षा नीति 2020 से। आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए लोकल फॉर वोकल। हमें हमारे स्थानीय पदार्थों पर गर्व होना चाहिए। आजादी के 75 वर्ष से जब हम एक कदम दूर है तब हमें लोकल फॉर वोकल का मूल मंत्र स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। हम आत्मनिर्भरता बनेंगे जब इस देश के युवा हिंदी बोलने पर गर्वित महसूस होंगे। हम आत्मनिर्भर तब बनेंगे जब इस देश का युवा हिंदी बोलने पर और अपनी शक्ति पर गर्वित महसूस करेगा। हम आत्मनिर्भर तब बनेंगे जब हमें अपनी समस्याओं के लक्षणों को इलाज पाने में सक्षम होंगे। हमारे देश में लोगों में माताएं आती है, भूत प्रेत आते हैं, मरे हुए इंसान आता है। मेरा प्रश्न है आपसे कि हमारे देश के लोगों में, हमारे देश के युवाओं में स्वामी विवेकानंद क्यों नहीं आते? हमारे देश के नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी क्यों नहीं आते? यकीन मानिए जिस दिन ये गुण चरित्रार्थ होंगे उस दिन हमारा भारत आत्मनिर्भरता की चरम सीमा पे होगा। आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है तो केवल है कि हर भारतवासी अपनी शक्ति को पहचाने। आज हमारे देश का युवा हर वो कार्य करने में सक्षम है जो वह ठान ले, और ये हमारे देश के युवाओं ने कोरोना काल में सिद्ध कर दिखाया है। हमें हर वो कार्य करना चाहिए जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता के लिए हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर तो बनेगा ही, साथ ही हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। मैं इस देश की एक साधारण युवती हूँ। हमारे देश में हर वो प्राकृतिक संपदा है जो हमारे पास है। हमें हर वो कार्य करना चाहिए जिससे हम स्वावलंबी बने। हमारे देश में ये सपना केवल एक युवती का नहीं अपितु 128 करोड़ भारतवासियों का होना चाहिए, और ये सपना जब साकार होगा जब हम अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलकर इस धरोहर पर कुछ काम करेंगे। सामाजिक समस्याओं में हमें भेदभाव से ऊपर उठकर समानता
लानी होगी। वैज्ञानिक चेतना को हमें विकास करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमें यह तय करना होगा कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर बच्चे किताबों के वजन के तले ना डूबे, उनका सर्वांगीण विकास करना होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें यह तय करना होगा कि कोई गरीब इलाज के अभाव में अपना दम ना तोड़े। और इन छोटी छोटी समस्याओं के बाद राजनीतिक क्षेत्र में हमें ये तय करना होगा कि हमारा युवा मतदान तक सीमित न रहकर राजनीति में प्रत्येक रूप से सामने आकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाए और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि माँ भारती तभी होगी मजबूत जब हम आत्मनिर्भर, जब हम खुद बनेंगे शक्ति और आत्मविश्वास के दूत। धन्यवाद। महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं अमीषा अनिरुद्ध भगत, राज्य महाराष्ट्र, जिला रायगढ़। किसी ने बड़ा खूब कहा है, ए भारत तुझको आत्मनिर्भर होना है, ए भारत तुझको आत्मनिर्भर होना है, धरती ये फिर से उगलेगी सोना, खेतों को उर्वर होना है। अब तुझे सोने की चिड़िया नहीं, तुझे सोने का अंबर कहलाना है, ए भारत तुझको आत्मनिर्भर होना है। और इसी आत्मनिर्भरता पे बात करते हुए नमस्कार, मैं अमीषा भगत, धर्म से भारतीय किंतु स्वभाव से महाराष्ट्री, आपके सामने विषय प्रस्तुत कर रही हूँ, युवा और आत्मनिर्भर स्टार्टअप का युग। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत क्या है? हमारे स्वयं पूर्ण भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा बनाने के लिए माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी और इसी के साथ साथ उन्होंने स्टार्टअप इंडिया की भी घोषणा की थी। हमारे देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हम युवा है और इस आत्मनिर्भर भारत योजना में सबसे बड़ा हिस्सा भी हमारे युवकों का ही है। कोरोना महामारी के दौरान जब हजारों नौकरियां दांव पे लगी थी, तब तारीख 15 अगस्त 2020 को माननीय पंतप्रधान जी ने एक घोषणा की थी। वो घोषणा थी स्टार्टअप इंडिया की। इस स्टार्टअप इंडिया के तहत भारत में कई छोटे मोटे नए उद्योगों की शुरुआत हुई थी और इसी स्टार्टअप इंडिया में एक बड़ा हिस्सा हम युवकों का भी था, जहां चित्रागांव के सुनील नाम के एक युवक ने मुर्गी का पालन और अंडों का उत्पादन लेना शुरू किया और खुद तो आत्मनिर्भर बन ही गया और उसी के साथ साथ कई अन्य युवकों को भी नौकरी का अवसर प्रदान किया। और एक तरफ बिहार में अर्नब नाम के लड़के ने विदेशी कंपनी में करोड़ों रुपए की नौकरी छोड़ भारत में खेती में तंत्रज्ञान का प्रयोग कर आत्मनिर्भर बनने का सोचा। दोस्तों, यही है आत्मनिर्भर भारत में युवाओं की भूमिका। कहा जाता है कि आज का युवा सोशल मीडिया में बहुत व्यस्त है, लेकिन इसी सोशल मीडिया का उपयोग कर आज के युवा ने आत्मनिर्भर भारत में और स्टार्टअप इंडिया में एक बड़ा सा हिस्सा लिया है, एक बड़ी भूमिका बजाई है। दोस्तों, जब माननीय पंतप्रधान जी ने वोकल फॉर लोकल कहा था, जब आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी, तब उन्होंने कहा था कि वोकल फॉर लोकल बनो। मतलब भारत देश के हर छोटे छोटे गांवों में, घर घर में, कुटीर उद्योगों में बनने वाली छोटी छोटी चीजों को दुनिया भर में प्रचलित करना है। आज देखा जाए तो इडली का पिज्जा भारत के कई घरों में बनता है, तो क्यों भारत की कोई चीज किसी अलग देश के घरों घरों में नहीं बनती? और इसीलिए वोकल फॉर लोकल बनना है। और इसी वोकल फॉर लोकल को समझते हुए हमारे युवकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कई जगह पे, कई घर घर में, कुटीर उद्योगों में बनने वाली चीजों की खरीदारी शुरू की, जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कई सोशल मीडिया पे साबुन से लेके अत्तर तक, दियो से लेके मोमबत्ती तक, कलाकारी से लेके टोकरियों तक, बनारसी से लेके येवला पैठनी तक, कई छोटी मोटी चीजें, भारत में बनने वाली चीजें इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दुनिया भर में प्रचलित करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, हम भारत के युवा हैं, हमारे हाथों में शक्ति है, हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम उड़ भी सकते हैं, हमारी उंगलियां उठती है, हमारा हाथ नारों के साथ लहरा सकता है, हमारी जबान मचलती है, हमारा सिर इनकार में भी हिलता है, हम किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, हमारी आहों से चित्कारे हैं और चित्कारों से हुंकारे हैं। अब हम युवकों को संगठित होना है और इस आत्मनिर्भर भारत की योजना को अच्छी तरह से समझना है और भारत को एक दिन विश्व विजेता नहीं,
विश्व गुरु कहलाना है। और आज इस स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर कहलाएगा। और इसी के साथ साथ एक दिन ऐसा आएगा जब अब विकसनशील भारत विकसित भारत कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत। गुजरात। Arise, awake and stop not until reach the goal. उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक चले रहो। बहुत प्रसिद्ध वाक्य है जिसका स्वामी विवेकानंद जी, जो हमारे युवाओं के आदर्श है। 12 जनवरी को एक ऐसे युवान का जन्म हुआ जो शायद किसी को नहीं पता था कि आगे भारत की सूरत मूरत बदलने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद जी का पूरा नाम था नरेंद्र नाम था उनका, पूरा नाम नरेंद्र था। और उन्होंने जो कोलकाता में बेलूर मठ है जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जी के पास से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही सामान्य परिवार से आते थे, लेकिन उनके विचार अत्यंत आदर्शवादी थे, एक प्रखर विद्वान जैसे थे। उन्होंने कन्याकुमारी में 3 दिन तक एक ही पत्थर पे बैठ के, समुद्र के बीच में बैठ के ध्यान किया था जब उन्हें शिकागो जाना था। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए तब भगवा वस्त्र, अत्यंत साधारण परिवेश, और लोगों को लगा कि ये क्या बोलेंगे। तब जब उन्होंने अपने वक्तव्य की शुरुआत की तब उन्होंने बोला, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। तब जाकर मैं आपको उनके विचारों का एक दृष्टिकोण, एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जब उन्होंने शिकागो से वक्तव्य के बाद नीचे उतरे थे और एक नारी ने, एक औरत ने उनसे पूछा कि मुझे आपसे शादी करनी है। तब स्वामी विवेकानंद जी ने जो उत्तर दिया वो अत्यंत हृदयस्पर्शी। उन्होंने बोला कि आप को मुझसे क्यों शादी करनी है। तब वो जो लेडी थी, औरत थी, उन्होंने बोला कि आप जैसा विद्वान मुझे मिले तो। तब उन्होंने कहा कि आप मुझे आपका बेटा मान लो, तो आपका मैं पति नहीं बल्कि बेटा हूँ और आपसे ज़्यादा करीब हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारी जगहों पर वक्तव्य दिए हैं, युवाओं को आदर्श के मार्ग पे लेके गए हैं, और उन्होंने कई बार कई जगहों पर गुरु की तलाश की, लेकिन फिर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी में अपना गुरु माना और उनको गुरु माना, और उनके पास से कई सारी शिक्षाएं, कई आदर्शवादी विचारों को उन्होंने प्राप्त किया। विवेकानंद जी नारी, औरतों को लेके उस समय में जब नारियों का कोई स्थान नहीं था, तब उन्होंने कहा था कि हे भारत, तू ये ना भूल कि तेरी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री और दमयंती जैसी नारियां हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को विद्याभ्यास के प्रति भी जागरूक किया था, लोगों को जागरूक किया था, और हमेशा वो एक आदर्श बन के युवाओं के लिए रहे हैं। उनके देहांत के बाद भी आज भी स्वामी विवेकानंद जी के पथ पर अनेक युवान चलते जा रहे हैं। हमारे भारत को जो स्थान दिलाया है उसमें विवेकानंद जी का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग रहा है। मैं स्वामी विवेकानंद जी हमारे आदर्श, युवाओं के जो आदर्श है, उन्हें मैं और कई सारे यूथ जो बच्चे हैं वो आदर्श मानते हैं, और 12 जनवरी को ही नहीं सिर्फ, लेकिन प्रत्येक दिन उनके विचारों पर चलने वाले लोग भी अक्सर है। मैं यहाँ पे अपना वक्तव्य पूर्ण करती हूँ। अस्तु। पुदुचेरी। In front of you to present my opinion on youth and Atmanirbhar, an era of startup. The word youth and its importance reminds me the philosophy of Swami Vivekananda and the ideals for which he lived and worked. He will continue to be a great important for the Indian youth. 12th January, the birth anniversary of Swami Vivekananda, is observed as National Youth Day to rekindle the eternal message of the great potential and son of India. India is considered one of the youngest nation in the world with about 65% population under 35 years of age. The youth and indeed the most dynamic and vibrant segment of the population in any country. The only way to make the youth to realize the relevance of Swami Vivekananda's words
is to educate the youth to equip themselves to stand on their own legs, attain secular learning that build characters and instill human values in the students. Among the various ways suggested to rebuild the Indian society is education. Education is the primary means of empowering the people. Focus should be laid towards the nation's building, a transformed society inspired by dignity, freedom and individuality. A nation is more than its geography, that people despite their diversities come together to accomplish higher collective goals. They make a country more equitable. We have a long way and have an equally a long way to go. As the young nation, we still need to build an institution that can stand the test of time. It is high time for the youth to come forward once again by shedding their fears and take up the cudgels to shape up the Bharat by turning the decaying into vibrant, bringing sick to health, making the weak strong, and bringing stability where there is a volatility, showing meaning where it is lost. While most youth aspire to achieve a meaningful existence, not all are equipped with the mental and physical stamina to pursue such a goal. Therefore, youth should be overcome sorts of fears and become stronger physically and mentally. This very well implies that a strong mind lies in the strong body. Atmanirbhar comes with a fearlessness. During these uncertainties of COVID-19 pandemic, a new mission to make the youth self-sufficient is on air. This is a self-reliance project that helps the youth to trust their own capabilities and abilities to equip themselves with self-sustainable skills. The youth can attain their Atmanirbhar through the educational institution to empower themselves and make themselves socially productive, accountable and dynamic citizens. Apart from developing self-confidence, they can identify their strength, potential and possibilities. Self-reliance is the only road to true freedom, and being one's own person is its ultimate reward. Youth have no need to depend on others to feed them. What they need, they have the capability to attain. Youth today will not wait to seek jobs. Instead, they create new jobs. Especially, the Indian youth will not be a job seeker, but a potential job creator. Through the set of vocational, employable and entrepreneurship imparted to them at different ways of education and training. Youths are the future technology, and being Atmanirbhar, a bigger and the most important part of a global economy. I am a part of the youth category, and I promise to contribute my best in the nation building and make the India Sare Jahan se acha. Jai Hind. I am here to deliver a monologue from William Shakespeare's poem titled The Hollow Crown. The historical background of the poem, The Hollow Crown, goes like this. In this poem, King Richard II is reminded of power of death that overshadows everything else, including the power of emperors, and refer them as powerless commoners at a moment noticed. Here the monologue starts. Let's talk of graves, of worms and epitaphs. Make dust our paper, and with rainy eyes write sorrow on the bosom of the earth. Let's choose executors and talk of wills, and yet not so far. What can we bequeath? Save our deposed bodies to the ground. Save our deposed bodies to the ground. Our lands, our lives and all our boiling brooks. Our lands, our lives and all our boiling brooks. And nothing can we call our own. And nothing can we call our own but death. In that small model of the barren earth,
which serves as paste and cover to our bones. For God's sakes, let us sit up on the ground and tell sad stories of death of kings. How some have been deposed, some slain in war, some haunted by the ghost they have deposed, some poisoned by their wives, some sleeping killed. How some have been deposed, some slain in war, some haunted by the ghost they have deposed, some poisoned by their wives, and some sleeping killed, all murdered, for within the hollow ground, all murdered, for within the hollow ground that drowns the mortal temple of a king, keeps death his ghost, and there the antic sits, scoffing his state and grinning at his pomp, allowing him a breath, a little scene to monarchize and be feared and kill with looks, infusing him with self and vain conceit, infusing him with self and vain conceit, as if this flesh which walks about a life were brass impregnable, and human dust comes at the last, and human dust comes at the last, and with a little pin bores through his castle wall, and a farewell king, and with a little pin bores through his castle wall, and a farewell king. Cover your heads and mock not flesh and blood with solemn reverence. Cover your heads and mock not flesh and blood with solemn reverence. Throw away respect, tradition, form, ceremonious duty. Throw away respect, tradition, form, and ceremonious duty for what you have, but mistake me all this while. For what you have, but mistake me all this while. I live with bread like you, feel wants, taste grief, need friends, subjected thus. How can you say to me, I'm a king? How can you say to me, I'm a king? I take immense pleasure in taking part in the virtual NSS Youth Festival under the category of Monologue Deliver. Today, I am standing in front of you to present a monologue from one of the best poems of William Shakespeare titled The Hollow Crown. The historical background of The Hollow Crown is, in this poem, King Richard II is reminded as the power of death that overshadows everything else and overshadows everything else, including the power of emperors, and refer them as powerless commoners at a moment's notice. Here the monologue starts. Let's talk of graves, of worms and epitaphs. Let's talk of graves, of worms and epitaphs, made dust or paper, and with rainy eyes, write sorrow on the bosom of the earth. Write sorrow on the bosom of the earth. Let's choose, execute us, and talk of wills. Let's choose, execute us, and talk of wills. And yet not so far. What can we bequeath save our deposed bodies to the ground? And yet not so far. What can we bequeath save our deposed bodies to the ground? Our lands, our lives, and all our boiling brooks. Our lands, our lives, and all our boiling brooks. And nothing can we call our own but death. And nothing can we call our own but death. And that small model of a barren earth, which serves as space to cover our bones, which serves as space and to cover our bones. For God's sake, let us sit upon the ground and tell sad stories of the death of kings. How
some have been deposed, some slain in war, some haunted by the ghost they have deposed, some poisoned by their wives, some sleeping killed. How some have been deposed, some slain in war, some haunted by the ghost they have deposed, some poisoned by their wives, some sleeping killed, all murdered for within the hollow crown, all murdered for within the hollow crown, the rounds and the mortal temples of a king, the rounds, the mortal temples of a king. Keeps death is court, and there the antique sits. Keep death is court, and there the antique sits. Scoffing his state and grinning at his pomp, allowing him her breath, allowing him her breath. A little scene to monarchize. Be feared and kill with looks. Be feared and kill with looks. Infusing him with self and vain conceit. Infusing him with self and vain conceit. As if this flesh which walls about our life were brass impregnable. As if this flesh which walls about our life were brass impregnable. And humoured thus comes at the last, and humoured thus comes at the last, and with a little pin boys through the castle wall, and with a little pin boys through his castle wall, and farewell king. Cover your heads, and mock not flesh and blood with solemn reverence, and mock not flesh and blood with solemn reverence. Throw away respect, tradition, form and ceremonious duty. Throw away respect, tradition, form and ceremonious duty. For you have but mistook me all this while. For you have but mistook me all this while. I live with bread like you. Feel want, praise grief, need friends and subject others. Feel want, praise grief, need friends and subject others. How can you say to me, I am a king? How can you say to me, I am a king? Karnataka. And good afternoon to the each and every participants and my dear friends. Myself Yuvaah Mubin S. Badge from Akka Mahadevi University, B.Ed Department. My topic is national integration. I want to speak on this topic related to 5 subtopics. First is definition. What is national integration? National integration is feeling of oneness or the awareness of being one, irrespective of your religion, irrespective of your caste, irrespective of your color, irrespective of your gender. When we leave all this apart and feel that we belong to one nation and we have one constitution, then comes the feeling of national integration. S. Radhakrishnan has said that national integration is not something which we can build with bricks, cement or with some constructions. It is a feeling which needs to be developed in the mind and in the heart through the education and through the proper training. A person who is having a national integration, he always strives for the development of nation. This is about the definition of national integration. What is national integration? Then second comes why we need a national integration. We need national integration for national development. We can only develop when we are all together. When we are all separated, you are different, you belong to different religion, you are poor, I am rich. When we differentiate like this, then there is no development which can take place in India. Especially in the nation like India, where we cannot find this kind of cultural diverse, this kind of language diverse, this kind of different things in other countries. But only in India we have this much of a differentiation, but still we live together and still we follow one constitution. As Jawaharlal Nehru said that India is a melting pot, which means that though we have so many different religions, caste, gender, everything, but still we work for the nation development. We need this national integration for nation development in all the categories. For technology, you can take in science, you can take in army, anything. We need this national integration. And for third subtopic is what the things which support national integration are. First thing is national anthem. These things like they support national integration. Whenever we hear national anthem,
anthem will be like irrespective of whatever we belong, we just stand up and give respect to the national anthem. National anthem is increasing or supporting the national integration. Second comes the national symbols, whether it is our symbol of a flower, it is lotus, or whether it is our national bird, which is peacock, whatever national symbols, national anthem, national flags, these all things supports our national integration. This helps to improve our national integration. You can feel it whenever there is national anthem going on. You don't think about your religion or you don't think about your gender. You just stand up and give respect. This is how it is, encouraging our national integration. And then why would the things which are different, which are causing the hurdles or which are carrying the barriers for the development of national integration is, first is casteism. Because of casteism, national integration is not developing. When we start to think, first when we leave our thinking that we belong to India, except that we start thinking that we belong to this particular caste, we belong to this particular religion, then national integration diminishes. When second thing is when we build economy, when there are rich people, like they differentiate poor people, they see them like worms, they are poor, we should not talk to them. Or when we do this, then the national discrimination. And then the third thing is when national political parties, they play a major role in differentiating the things, they causing hurdles in the national integration. As in one of the speech Atal Bihari Vajpayee said in Hindi that सत्ताएं आएंगी सत्ताएं जाएंगी but एक ही रहेगा वो देश हमारा, वो हमेशा ही रहेगा. So these are like when we think only about other things, then national the integration doesn't take place. So instead of leaving all this behind, our gender, our religion, our color, our caste, when we think only about national things, then national integration develops, and it is must in a country called India for its development. Thank you. माँ का शिखर है हिमालय, माँ के चरण के सेवा में है हिंदू महासागर, ऋषि संत वीरों का जन्मभूमि है इस भारत देश के पुण्य सभी मनुष्यों को मेरा सागर का सब प्रणाम. मेरा एक विषय है इंटीग्रिटी, यानी एकता के साथ जीवन प्रदान करना, यानी लाइफ गिविंग विद इंटीग्रिटी. इसका मतलब को हमें समझाने की जरूरत नहीं है. हम भारतीयों के खून में इंटीग्रिटी है, यानी एकता है. हम हर दिन हमारे काम कोई दूसरों के प्रयोजन के लिए करते हैं, लेकिन स्वार्थी बनकर नहीं. सिंधु के नागरिकता से भी हमें पता चलता है कि आज के जो नया जनरेशन है सोच लेते हैं हमारा ही टेक्नोलॉजी है. नहीं है. उस समय जो एकता के काम से सिंधु के नागरिकता के लोगों ने काम किया, वही काम आज हमें टेक्नोलॉजी का एक मार्ग दिखा रहा है. आजकल के युग में पार्टियों के एक संगम में सभी झगड़ा करता है, लेकिन एक भी सोच नहीं लेता कि जब स्वतंत्रता के संग्राम चल रहा था कोई जाति नहीं था, कोई भेद नहीं था, सभी एक ही थे, विश्वास भारतीय था. इसी एक दिन में कोई भी एक बार सोच ले हमारा खून एक है, हम जो भी काम करते हैं देश की उन्नति के लिए करते हैं, तो क्यों चाहिए भाई ये झगड़ा. तो दे देते हैं जान. आपको मैं और एक बात बता देता हूं. सभी बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद के समय हिंदू और मुसलमानों के एक झगड़ा हुआ था, लेकिन सच तो किसी को नहीं पता. आपको एक नाम बताता हूं, सुन लो, आपकी मेमोरी में नहीं होगा. के मोहम्मद, ये नाम तो कोई सुना है. तो एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने ही बताया कि बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर है. मुसलमान है, लेकिन उन्होंने दिखाया मैं भारतीय हूं. आपको दो उदाहरण में देता हूं, शिवाजी की, टिप्पू सुल्तान की. दोनों भारतीय थे, लेकिन उनमें उस समय में जो विश्वास था एक साम्राज्य का. लेकिन जब हम आगे चलते हैं हमें बहुत सारे ऐसा व्यक्ति मिलते हैं जो भारतीय भाव को हमारे हृदय में रखकर सबके लिए अच्छे काम करते आ रहे हैं. जैसे कि बहुत है, जैसे अलीग्रह मूवमेंट चला, उस समय भी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या फिर बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी समझा कि हमें जाति का भेद नहीं है, लेकिन विश्वास का एक जुगत चाहिए. लेकिन क्या किया ब्रिटिशों ने, जो अंत समय में स्वातंत्र हमारे हाथ में था, उस समय कर दिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन. लेकिन अभी भी अब जाके पाकिस्तान वालों से पूछो भारतीय कैसे है, वो बताते बहुत अच्छे मानव है. और आके भारत देश में पूछो पाकिस्तान वाले कैसे, बहुत अच्छे लोग हैं. वहां के लोग एकता के भाव अभी महसूस करते हैं. वहां पे एक बॉर्डर हो सकता है लेकिन भेद नहीं. लेकिन वहां का जो नायक होता है उस पर निर्भर होता है कि वो क्या करता है, कैसे काम करता है. जो आज की जो केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय हो, ऐसे विद्यालयों में सब जाति का विद्यार्थी आके पढ़ते हैं, लेकिन उनके मन में एक ही भावना को लगाया जाता है कि तुम भारतीय हो, किसी जाति या फिर भेद का नहीं. ऐसे पुण्य भूमि में हम क्यों करें इस जाति का भाग, दे देते हैं जीवन सबके लिए. सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा खून दे दो मुझे, स्वातंत्र देता हूं तुम्हें मैं.
तो उसी समय सुभाष चंद्र बोस जी के जो मन में एक भावना था वही है आज की भावना होना चाहिए। आप सबको भी पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस जी बाहर गए और जापान और जर्मनी से मदद मांगे। वो तो क्यों मदद करेंगे, जर्मनी और भारत है, वैसे उन्होंने नहीं सोचा। उनको भी पता है कि भारतवासियों से पहले तो बहुत ही ऐसा फीलिंग है जो उनके अंदर एकता दिखाता है, इसलिए उन्होंने भी मदद मांगा और मदद दिया भी। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं भारत देश पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो सब बोलते हैं कि यहाँ पर जाति नहीं चलती, जीवन के लिए जो मूल्य है उन्हें दिया है बुद्ध, द लाइट ऑफ एशिया करके अर्नोल्ड कहते हैं। ऐसे बातों को हम बोल सकते हैं लेकिन कर सकते हैं, ये शक्ति तो अपने अंदर होगी। एक ही एक बात जान में ले लो भाई, कौन है सांस है, आते हैं जाते हैं, देश के लिए कुछ जाके ही कहते हैं। इसीलिए मैं बताता हूँ जाति का बात छोड़ो, जीवन की बात लो। जो समृद्धि है उसके लिए जीवन करते हैं, लाइफ गिविंग फॉर इंटीग्रिटी। देश के लिए कुछ भी आए, वो कष्टकर जीवन हो या फिर नष्ट हो या सुख हो, हम होंगे एक ही है। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ, जो तिरंगा है हमारा ध्वज है, उसमें जो 3 रंग है उसको सभी जाति मानते हैं, लेकिन हमारे जो तिरंगा है वो भी दिखाता है कि शौर्य है, शांति है, समृद्धि है, लेकिन जाति नहीं है, क्योंकि हम भारतीय है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ಕಬ್ಬೂರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಧಾರವಾಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ BA ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಘರಿಯಸಿ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಹೊತ್ತ ನಾಡಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ 4 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕರೋನಾ ನಂತರದ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಪರವಾಗಿ ನಾನೊಂದು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಯಾಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ತಂದೊಡ್ಡಿದಂತಹ ಸವಾಲನ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿತ್ರರೇ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು -3.9ಕ್ಕೆ GDP ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗವೇ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3% GDP ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರದಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇದೀಗ ಕೊರೋನಾದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ, ಕೆಲಸ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ $4,000 ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಿತ್ರರೇ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಚೀನಾದ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ 50 ಒಮ್ಮೆ 60 ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು, ಇದೀಗ ಸಹೋದರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಬ್ಗಳು ಲಾಸ್ ಆದವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೇವಲ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜಾಬ್ಗಳು 2,45,000 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2,45,000 ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಈ ಕೊರೋನಾವನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿದೆ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ $1 ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಸಾಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ನಾವೇ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಗುಳಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೋಜು ಮಾಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮಿತವ್ಯಯದ ಬದುಕು ಆಗಿದೆ. ನಾವು $1 ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದಂತಹ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೊರೋನಾ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು.
ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸವಾಲಿರಲಿ, ಆ ಸವಾಲಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಕೊರೋನಾ, ಅದು ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ದೇಶವಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ರಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅದು ಕಲಿಸೋಯ್ತು. ಅದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತು, ನಮ್ಮ ಏನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಯಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತನ್ನ ಏನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮಿತ್ರರೇ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಭಾರತ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೊಸತನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೊಸತನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವತಿಯರಿಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಣೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ 1,000 ಮಂದಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಲ್ವೇ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಂತೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ದೂರದೆ ಬಂದ ಸವಾಲನ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಲಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೊರೋನಾವನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಡಿಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Kerala. I am Steffi Akra, representing the state of Kerala. Today I am presenting elocution competitions on the topic Youth and Atmanirbhar, the era of startup. We are in the midst of fight for life against coronavirus, and of course we are near to cure. To convert this pandemic epidemic of COVID-19, we have to face the opportunities. So let's utilize the era of startup by planning, framing and implementing innovative ideas into action. Our country is rich in capabilities and manpower, especially the power of youth. India has the world's largest youth population of medium age 26 by the statistical study of 2015. So sure, the youth-led startups can transform India to a self-reliant India. Even though startup is a small step which can give a big leap towards economy, infrastructure, technology-driven systems, vibrant demography and demand. Here comes the relevance of our topic. Youth and Atmanirbhar, the era of startup. How youth and Atmanirbhar is interconnected with startup, and how we the Indian youth can be self-sufficient, what makes the Indians to become self-reliant. Let me quote the words of Mahatma Gandhi. Your beliefs becomes your thoughts becomes your words, and your words becomes your action. Sure, the thoughts of today's youth are ripen as an action in the form of a new startup. Through the startup, the youth can make our India independent and competing in the competition for the global economy. The youth have the potential to cope up with the problematic situations and uncover all the opportunities. India had boycotted all the Chinese products past 2 months before. And now they were created the replica of those products within a couple of days. And now the Indians are giving vocal to the local products to promote those products in this global market. Through the startup, the job seekers are to be the job governors. There were several of the startups who turned into multinational companies and a unicorn in a business sector, having crores of rupees of turnover per year. The Byju's, Vedantus, and Academy are the certain examples for the student learning education app systems shows a prominent role in the history, and it is a milestone of the startup India. In this pandemic situations, every states need extra care and resources on healthcare, employment, and infrastructure. Startup is a business venture for employable and self-employed.
reason to invention of the COVID vaccines by the Indian scientist, the production of several lakhs of the PPE kits in collaboration with the automobile industries to produce the ventilators, the manufacturing of 70 Make in India products by the DRDO, the low-cost ventilator Pranavayu by IIT Roorkee, and the Karnataka-based startup company who have invented a tackling device to identify the COVID-19 with the help of the artificial intelligence. And these all are the few examples which shows the capability of the Indian scientists, IT professionals, and technocrats. They are ready to face any challenge. In these preceding conditions, we should convert these preceding conditions into an opportunity to make a self-reliant economy. And due to the locally available the goods, the talents, the skills, and the manpower, we want to gradually reduce the imported things from the crude oil to heavy machinery. Only youth can recoup the economy. Sure, the youth can regain the strength of the economy in the global market through self-reliance. On World Youth Skill Day, the Prime Minister addressed the youth of this India. Learning new skills and reskilling one's skills are the demand of the time. And today, to make our India self-reliant and self-sufficient, we need two basic facts: this knowledge and the skills. They are inevitable in their day-to-day employment life. But today, the youth are netizens instead of citizens. We are spending our much more of the time in the social medias for liking, sharing, internet buffering, and so on. More than 5 crores of the Indian youth have completed their skill development program, and still this campaign on. Youth are packed by power, potential, innovative ideas. Through the new startups, they can create much more employment opportunities soon in the country. Through the startups, they can improve the substantial growth in the e-commerce. By the startup, we can uplift the weaker sections and empower the migrant laborers who are drastically affected by COVID-19. Through the Atmanirbhar project formulated by our Prime Minister, the youth can begin the startup and fill the gap between the demand and the supply for the essential goods and services in the present debilitating situation. Only youth can recoup in this economy. To make our India self-reliant and self-sufficient, we need to upgrade the youth to meet the employment needs in the technology sector of the 21st century. No doubt, youth are the future of any country. The India can lead over several nations. Around 65% of the country's population is below 35 years, and 50% of the country's population is below 25 years. With huge, well-educated and skilled manpower, we can make our India that is uniquely poised to realize the demographic potential and reap the advantage of the vast human power that can change our country. Yes, this is the fact that the Indians are heading over several MNCs due to the breadth of knowledge and their talent. Youth is pivotal in revolution. They have a different potential to change the course and the dynamic of the country. The youth are packed with several types of the technologies and skills and everything. Much of the India's growth credit goes to the youth of the country. We have no doubt about that. The period of the youth is the power behind to make them self-reliant, which have their health, their ambition and energy. To channelize these energies through startups, we can make a self-reliance, better tomorrow, better India. India has the third largest startup ecosystem in the world of annual growth of 12 to 15%. The figure shows that there is about 50,000 of the technical startups is registered in 2018 and 9,000 such other startups. In 2019, 1,300 technical startups has born, which clearly implies that the startup doesn't have any cost, create community, and 2 to 3 technical startups born a day. The pace of the startup ecosystem is increased to 14% in 2018, and the nature and the number of the startup incubators have raised to 11%. Foremost,
women entrepreneurs are stood from the 10% and increased to 14% in the past 2 years. Youth is the backbone of a country. The Facebook and the Microsoft are the two multinational companies. They have a prominent role to make a partnership with Startup India. To make our country self-reliant, we need the strength of the youth that makes our country better for tomorrow. The startup culture in India is mainly due to the ambitious nature of the youth. We want to maintain a better goal to make a self-reliant Atmanirbhar Bharat. Yes, for through the startups, we can make and give a better or a bigger tomorrow for our Indian economy. My dear fellows, this is the time for the 130 crores of the Indians to showcase their country's grit, determination, and collective response for the all setbacks caused by the pandemic. And keep in mind, Atmanirbhar Bharat doesn't mean that we are not self-containment. We are not isolating away from the world, and we are not protectionist. Atmanirbhar Bharat, which translates to a self-reliant India, a self-sufficient India, and is a policy pursuing for the technology more efficient, more economical, more self-sustaining and self-generating. Dear folks, the famous theater director Henrik Ibsen says, the strongest man in the world is who stands alone. As a dynamic and vibrant Indian youth, stand out from the crowd and make our nation proud as a Yuvaah in the global market through self-reliance and new innovation technologies. Thank you. Andhra Pradesh. I call India Atmanirbhar Bharat, and I say I am self-reliant. Yes, I see progress in India when goods are manufactured in India, processed in India, and marketed in India. A developed India by 2030 is not just a dream in the minds of many Indians. It is not just a vision, but it is a mission we can all take up and succeed. Yes, 2020 has been a dark year for all of us, and India has been fighting a lot this year, and the two major battles, and one against the COVID-19, the pandemic, and the other is the economic crisis situation. In this scenario, the central government has launched a package of 20 lakh crores, which is being established on May 12th, 2020. And this package mainly utilizes 10% of the total gross domestic product, that is the GDP of India. Atmanirbhar Bharat is basically Make in India version 2.0. And I say that this is very beneficial, and it focuses on the concept of Vasudhaika Kutumbam. And I believe that this program is not anti to other foreign countries. It is not just going anti to other foreign goods, but it is producing our own goods, producing indigenous products and marketing them in our own place, which will lead to development and progress. Well, India has been striving to achieve this self-development and independence since 1947. Since independence, we are striving for it. This idea called self-sustainability has always been in the heart of our nation. And definitely, during the War of Independence, it is Mahatma Gandhi who urged all the Indians to use the khadi clothes, the Swadeshi clothes, and the indigenous goods, which were being very well processed during the Swadeshi movement of 1920s. Well, after so many years, our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, again addressed the nation stating that here we have this Atmanirbhar Bharat achieving self-reliability and self-sustainability, where India stands independent among all the global nations. And according to this, he stated and quoted saying, "Local for vocal." This statement has turned the entire nation. Well, he has also told people, don't be afraid of this COVID-19. Take it as an opportunity. Take it as a step where we have established 5 basic principles of this Atmanirbhar Bharat. They are the pillars of this Atmanirbhar Bharat Abhiyan. 1 is economy. 2nd is the infrastructure.
Third is using technology in the system. Fourth is democracy. And third is nothing but, and fourth is nothing but, fourth is demography, and fifth is nothing but the demand. So using all these 5 things, we are going to build a nation with standard foundations. Well, this budget is being distributed to different sectors of the society. And this is done by the Finance Minister, Srimati Nirmala Sita Raman. So different bases has been divided and the criteria has been given. Now I would like to throw some light on the few major and the significant points which are being stressed in this Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Well, the first point, most of it is given to the MSMEs, which is the micro, small and medium industries. So these have been allotted 3 lakh crores of rupees for their development, because these small scale industries and textiles actually provide livelihood and employment to thousands of families. And I'm proud as a person of Andhra Pradesh, as Narendra Modi himself has addressed about the well-developed industry in Andhra Pradesh, that is the Kondapalli toys, in one of his Man Ki Baat sessions. This is a proud movement for all of us. Well, these MSMEs are given a time limit of 12 months, where in these 12 months they need not pay any EMIs to the government. They can make use and utilize all the given essentialities and the given funds from the government. And these are only applicable to the indigenous goods and not to the foreign products. So therefore, all of us will tend to buy Indian goods on the national or the foreign products. Well, the second most important is the Pradhana Mantri Garib Kalyan Yojana, or the package, is also involved in this Atmanirbhar Bharat Abhiyan. And under this, a lot of points are actually included. The first thing, the government has given an insurance of 50,000 to all the frontline workers, medical representatives who have been carefully working and taking care of all of us during these tough times. And the second thing, all the women who are actually involved in this Jan Dhan movement are given rupees 500 every month. And the third point, all the self-help groups are actually getting collateral-free money up to 10 lakhs earlier, but now it is increased to 20 lakhs. So now all these self-help groups, the women who are 10 to 12 living in a particular village, can take and make use of this money and bring it a national progress. There are people who are preparing masks, sanitizers, and several other things which are making India more sustainable. And the fourth important thing that I would like to quote here is, it is also giving Pradhana Mantri Kisan Yojana, and because of this, it is giving 2,000 to each and every farmer, where the farmer can use it for his agricultural needs. And the other thing is, it is also giving 1,000 rupees for all the women. It is an ex gratia which is declared for women, for physically handicapped people. And the next thing that I would like to focus here is the financial status. The Reserve Bank of India has actually announced a package of 3 lakh crores. Now there is a single question, which is $1 million rupee question. Even though the RBI has actually announced a big package, we are not at all seen in the great scenario. Why? To understand this, I would like to explain the banking scenario. How does banking system work in India? Actually, the banks take money from RBI at interest of 4 to 6%, and they give it to the consumers, that is the normal people, for 10 to 12%, and they get the profits. Now, what is the main reason for actually establishing this program called Atmanirbhar Abhiyan? Why is there a need to set up this program? The reason is, because of this COVID-19 situation, we don't have money in our hands. So the common man is not purchasing goods. So without goods, there is no companies, and without companies, there is no development and no economy. So to improve the entire economy and to build up and to stand up this complete economy of the country, this Atmanirbhar Abhiyan has been focused. And again, another important point is the EPFs, which is, because of this EPFs, it is actually giving to all those people who are working in the government sectors. So people who are getting salaries below 15,000 are actually given a concession.
where they have to pay or cut their salary for 12% from the employee and 12% from the employer, which adds up to 24%. But now they need not worry because the government will pay the entire amount. But what is with the people who are earning above 50,000? So these people need not pay the 12%, but it is reduced to 10%, where 2% goes into their own pocket. So the economy is slightly increasing in small sectors. And the other thing that I would like to focus is the government has given a lot of improvement and assurance to mostly agricultural goods and Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, where it is giving the fishermen some funds, and also to the animal dairy technologies. We know that India is the #1 producer of milk in the world. It is the 3rd largest producer of eggs and 2nd largest producer of meat, so we should be proud of it. So government still wants to give emphasis and give it a large amount of significance, where funds are released, where people can work on it. Also, power. The discom companies. These discom companies play a major role in our society. We can't even imagine a single day without electricity. But in these COVID-19 times, the electricity consumption has gone down to a drastic scale. So the telecom or the discom companies are finding it very difficult to provide electricity at a cheap cost. So it is always the consumer who will be affected. And we have also seen recently the electricity bills have very well increased. So the government has also given a fund of 90,000 crores to relieve the stress on these discom companies. Well, after all these things, the TDS and the TCS, that is the tax deducted at source and tax collected at source, has been reduced to 25%, so that it is very helpful for all the common people. And the last and the final thing is the effect on contractors. The contractors have taken a lot of projects between this COVID-19 situation, and they were unable to complete it because of lack of resources, lack of money, and whatnot. So the government has taken an initiative and given funds. It has extended the time limit to 6 more months, where all these contractors can work and extend. And they were also given loans based on the work that is done till now. Well, this is all about Atmanirbhar Bharat Abhiyan. But what has the youth to do in this? 65% of the Indian population is young, energetic, and dynamic. I say that India is a country. I'm born in a country where mother is treated as goddess. I'm born in a country which has incredible history and promotes unity in diversity. I'm born in a country which has incredible cultures, traditions, and whatnot. And I'm proud to be an Indian. But this India, unexpectedly, and it's really pathetic to say that we are still a developing country. In fact, in spite of having so much exuberant youth. Why? The reason is this Atmanirbhar Bharat. And that is why the lack of Atmanirbhar Bharat is because that is leading to that of this unemployment, poverty, and whatnot. Everyone has to stand independent. Now, I would like to say the era of startup. These startups have actually revolutionizing this entire society today. We have seen a lot of changes taking place, especially in this 21st century. A lot of companies came up. A 12-year-old kid from Maharashtra is a CEO of 12 companies and is giving employment to over 500 people. And this, I say, is called Atmanirbhar Bharat. And this, I say, is called self-sustainability. And this, I say, is called self-reliability. And yes, I say, I would like to relate the startup story with just a small incident. There is an IIT graduate, IIT Delhi, and he went to a cafe and he was waiting for the menu list, and I've seen all of them waiting for the menu list, and it is when he got an idea and then kept this menu list onto online website. After a few days, it grew and it was extended to various other states. And today that we call it as Zomato, which is the well-established and the well-successful startup in the entire nation. Along with it, we have Swiggy, we have Ola, we have Paytm. Now almost all the bank transactions are without direct contact because of this Paytm. This is called self-sustainability. This is uplifting India, as according to me. Well, this era of startups has created a huge change. But I would like to say, is this Atmanirbhar Bharat Abhiyan really useful and helpful? Yes. To 80%, Atmanirbhar Bharat Abhiyan is useful. But I find a small limitations in case of few things. For example, the RBI have given a fund for all these banks. But
these funds are actually given to those who will be starting up a small business, but it is very low percentage. That is only just 20% of them start up small businesses. So what about the rest of people? What about the common man? So it is better to invest this amount even in the small scale industries and sectors also. The rate can be improved. So this is one small thing that we observe today. One man with courage will make the majority. So let that one man be me, you, he, she, and each and every one of us present here. It's not just the government, it's not just us. It is the sole responsibility of all of us to combine together, to work together. We, the youth, the young generation, are the torch bearers for this entire enlightening India. And we have to take up the responsibility onto our shoulders. If not us, then who? If not now, then when? It is the responsibility of every citizen, every individual, every student to take this onto our shoulders. It is not just India's economy, but it is our economy. It is every individual's economy. Atmanirbhar Bharat is not just for India, but Atmanirbhar Bharat is for me, for you, for he, she, and each and every one of us present here. Let's all stand together and build up a nation with pulsating foundations. Let us make an India which will survive, sustain, and thrive as a developing, independent, integrated India. And I'm proud to be saying that India will be one among the finest countries with the fastest growing economy in the top 10 countries in the coming progressing world. And I say that India will emerge as a global challenge because of this Atmanirbhar Bharat Abhiyan, where youth will be the major contributors in this program. Well, this situation is all the more same with all the countries. But what is the speciality, especially in our country? There should be some difference, right? So, I would like to conclude by saying that it is the responsibility of each and every citizen. Even an entire journey will start with a single step. So let that first step be ours. Let we bear the entire responsibility on our shoulders and make this India rich and humble. It is not just the responsibility of the government, but the sole responsibility of each and every citizen in this entire nation who would like to see development, who would like to see what is the Vision India and the Mission India. We have always set these goals, Vision India, Mission India, but nothing has accomplished till now. But we will see the developed India in the future years to come. Thank you for giving me this wonderful opportunity. Thank you. Today, I would like to share a few words about the given topic, that is youth and Atmanirbhar as well as era of startups. Youth. We all know that youth plays a major role in the development of the nation. The faces of the youth reflects the faces of our present, of our past, and our future. So we can say that youth are the commonwealth of the whole world. Even great philosophers such as Swami Vivekananda sir also said that a strong nation can be built only with a strong youth. And also, APJ Abdul Kalam sir said that youth are never useless, they are just userless. In this way, we can think that how youth plays a crucial role in this society and how we can utilize our youth for the development of the nation. But what do you mean by Atmanirbhar Bharat? Because during the fight for the independence from British rule, our freedom fighter Mahatma Gandhi sir asked Indians to boycott the usage of their clothes and foreign goods and services and asked the Indians to make their own khadi. This was the first step taken towards the Atmanirbhar Bharat, which means self-dependent or self-sufficient or self-reliant India. Means we are going to depend on ourselves. So that was the first step. But why we are using this word again in 2020s and 2021? Because on May 12th, 2020, our Honorable Prime Minister gave a loud and clear call to the nation, giving a kickstart for the Atmanirbhar Bharat, and also announced a special economic and comprehensive package of Indian rupees 20 lakh crore, which is equivalent to 10% of India's GDP. So this is massive. But why do we need this package at this particular time? We all know that over 12 months, the whole world is facing a crisis because of a virus called COVID. So we are seeing many economies were collapsed due to this virus. Over 81.9 million people were tested positive, and out of them, 1.79 million people died tragically. So that was the situation of the present world, means every economy is going to collapse. So that's why the importance of this package is, we all know that. So anyhow,
we are observing that the world has completely shifted its attention towards health sector rather than producing manufacturing goods and focusing on the development of the nation. So this is the best opportunity for our country to strengthen this crisis as an opportunity. When the whole world is busy in this crisis, we can strengthen with a strong resolve. Because getting shattered and feeling sad is never acceptable for the mankind. We have to save ourselves and we have to move on. But how? How can we restart our economy and overcome this crisis is the big question. We have been listening from the last 2 decades that the 21st century belongs to India. We have also seen that in this situation, we use this crisis as an opportunity. I will give you one example to explain that. In the beginning of this crisis in India, not even a single PPE kit was manufactured in India. And 95 masks were produced in a very small quantity. But today, we are manufacturing almost more than 2 lakh PPE kits and more than 2 lakh N95 masks daily. We are tied up with many automobile companies for making ventilators. IIT students were created a low-cost ventilator called Pranavayu. So we are focusing in every sector. We are not only making goods for ourselves, we are also exporting many things to the world. This is the best example. We can say that yes, we are using this crisis as an opportunity. So that's my example. And when it really comes to self-reliant or self-sufficient India, India is never self-centric arrangements because India is never selfish. We never isolated ourselves. In order to make my point strong, I can give you an examples from the past too. First one, be it tuberculosis or malnutrition or polio, Indian campaigns have influenced the whole world. International Solar Alliance is a gift that was given by India to overcome or to tackle with the global warming. International Yoga Day was also a gift from India to relieve stress. And like this, Indian medicines gave a fresh life for different people in different parts of the world. That is why India is known as pharmacy of the world. So that's why India always focuses on the phrase called Vasudhaiva Kutumbakam, which means the world is one family. Our culture reflects that. So that's why the actions and the goals of India always reflects the welfare of the whole world. So, but now, how can we make a change in this crisis is the big question. For that, we have to be strong in 5 sectors. I don't say that our development should restrict it only to these 5 sectors. These are the main 5 pillars I'm going to discuss. Number 1, economy. Our economy should be a quantum jump. Means it should be, we should develop in a very faster way because we don't have time in this crisis. We have to be, rather than an incremental change, we should have a quantum jump. Number 2, infrastructure. Many MNCs are interested to invest in India, but they're just stepping back just because of some improper infrastructure. So we have to make our India a modern infrastructure. Number 3, demand. We have to increase the demand and we have to make it up to demand. For that, every entrepreneur or every stakeholder who belongs to the supply chain management should be empowered. And number 4, a technology-driven system, because in this situation only technology helped us. If we are conducting any competition or even from other places just because of this technology through virtual. So that's why our system rules, our policies should be based on technology. Our past policies can never afford a future policies. That's why we have to focus on a technology-driven system. And next, a vibrant demography. Of course, we all know that India is the largest democratic country and we have a very great demography. And is our development restricted to only these 5 sectors? No, not at all. We have to focus on the skill development too. That's why I am going to use youth in this particular Atmanirbhar Bharat. How can we increase our skills? Because from many decades, our education system is in a such way that even our parents think that getting a good job is our final destination for a better life. That's wrong. Getting job is not at all a primary solution. We have to be in a position to provide job. For that, the present skills are not at all enough for us. We have to improve our skills. The skills can be related to vocational, employable, and entrepreneurial skills too. For that, the government has initiated a National Education Policy 2020 to improve the skill development of the youth. So this focuses on
employable, entrepreneurial, and vocational skills from the primary education. We definitely need this because why youth? How can youth relate it to Atmanirbhar? What can youth contribute to that Atmanirbhar? Because nowadays innovations and startups plays a major role for that. The youth should be engaged in entrepreneurials. They should never get back when they think that yes, I should make a startup. The parents or the faculty or the society should not discourage them when they are interested in startups. Because what do you mean by startup actually? Startup means it is any company which is funded and home ground in its India. I can say that as of course almost 90% of the startups in the beginning were definitely a failure. But we have to overcome those failures. We have to be consistent. We have to make changes in the workforce. We have to implement different new ideas, not being a copycat. We have to have our own ideas and thoughts. In such a way, we can improve our startups. I will give you an example how some of the startups now become best companies. Reliance, best example. In the beginning days, Reliance used to sell man-selling textiles. Even ITC just sold tobacco in the beginning days. Did they have their failure? Maybe they have a failure, but now today they are one of the biggest companies which give a lot of money in the economy of the India. So that's why we can say that a failure can never be is never permanent. We have to change our rules and we have to move on. That's why the youth should be prepared in such a way they should overcome their failures. They should never get fear because of those failures. Have you guys remembered Y2K crisis? Year 2000 crisis. That was it is a software bug which is also called as millennium bug, where different countries have invested millions and millions of dollars to overcome that crisis. But at that time, only India used that opportunity and gave a big pool of engineers. At that time, many companies such as TCS, Infosys have strengthened their bases in the IT sector. Many cities like Hyderabad, Bangalore have become IT hubs just because of that crisis. This is the capability of India, that we can convert any crisis into an opportunity. So that was the best example. And many disasters are also made into an opportunity to develop themselves. That was the capability of India. So that's the reason, in order to make strong in different kinds of pillars, that's why our Honorable Prime Minister have given that special economic package. This economic package not only restricted to some sectors, it focuses on each and every sector, like farmers, fishermen, like home industries, cottage industries, small scale industries, MSMEs, middle class people too, who are the honest taxpayers. In every sector, this package or these rules are going to focus on. So in the Atmanirbhar Bharat also mainly focuses on Make in India and Vocal for Local. Why? Why do we need a vocal for local? Is it that much important? Yes, of course it is. Because in this tough situation, only local fulfilled all our demands. So now it is our turn to make the local as the mantra of our life. Even global products are once upon a time, they are local. People started using them, they started liking them, they started promoting, they started branding, and that's why they become global from local. So people should now start supporting local too. They should not only use local, they should proudly say that yes, I am using my local products. For example, yes, I am wearing a dress, and you all know that this type of textile is known as Mangalgiri cotton. Mangalgiri is situated in Andhra Pradesh. Yes, I am using a local product, and I can proudly say that yes, I am supporting my local. So in this way, each and every person should also take a part. At this point of time, we cannot be 100% sure of using local products, but at least we can make a change. So that is very important. So in such a way, we can make our self-reliant India very successfully by supporting each and every sector, like entrepreneurs, like employees, like small industries. Everything makes a part in the economy. So that's why we can definitely make our India a self-reliant India. For that, by following some of these instructions and making the youth much more capable of virtual learning or any other skills to make their startups, to develop themselves, so that one day India will definitely become a self-reliant India. And we can proudly say that yes, 21st century definitely belongs to India. This can definitely happen when ethics fall in our duty. Who can stop us from making India self-reliant? So if other countries know how to create problems, then India knows how to solve those problems. And one day we will definitely do this. Today we have resources, we have power, we have the best talent in the world.
So we will make products, we will increase the quality, we will also make the supply chain much more modern. We can definitely do this, and we will do this. And this is the only thing we can do at this time. I think I gave something valuable. Thank you so much for giving me this opportunity. Have a nice day. Jai Hind. एक निर्भर से हमने पाया आज़ादी अंग्रेजियों से, एक निर्भर से हमने पाया आज़ादी अंग्रेजियों से, और अभी आत्मनिर्भर से हम पाने वाली है दूसरी आज़ादी, और अभी आत्मनिर्भर से हम पाने वाली है दूसरी आज़ादी. I recall those days when my grandparents used to sit in the dawn of light of night, enlightening our brains. They sharing their views and stories, telling that once India was a very developed nation. And the same story I was listening from my parents' side, where I was listening about the same Mother India, telling that it was developing nation. I was that small that in those days. I thought that develop and developing was quite bigger word, and thought that it was something big and something that. And the time and age camped out and it dragged out. I realized something about why India had become a developing country from a developed country. Why and it had been so developed in such an extent. Then I realized that without knowing history, we can't create mystery. So what I did is, I sweat back, I dwelt back the past, and have been went back to the post-Indian independence struggle, where in 19th I was hearing the Swadeshi movement, where in 19th I was listening about the cooperation movement, and I was hearing the voices of all Indians saying, be Indian, buy Indian, be Indian, buy Indian. Later I came back like that only to the centuries of kingdom rules, where India was stressed with so much of treasure flourishing. My mother India welcoming all by carpeting to this country. And little drift back to the ancient history, I saw so many civilizations which were a very great example to thousands and thousands of countries, such with a great development have been seen. There came a doubt. Again, in the post-independence struggle, are we have been colonized in the sense, in the name, in the brand of globalizations? There I stuck out. And not coming out of this post-globalization struggle, post-independence struggle, I just want to speak out about the 2020, that which we had been passed out just day before yesterday. Even it has given us so many bitter experiences, but it is the fact that it has made us to realize what we were and where we are and where we should be. As an Indian, it is our pride to say that rather than telling 2020 a very drawback to the debate, it is the realization point that which made us to stand up and say proudly that we all are Indians. Where we have came to know that 2020 has taken out the traditions, customs, culture, creeds that which our India was following so on so many days. And it stood as an example to the overall world countries by giving a replica showing our own culture as a great brand. And why not I speak about a great personality vision of 2020 when I speak about the 2020 year? That is none other than APJ Abdul Kalam ji, who dreamt about a developed India from a developing India, from making the strong pillars so strong, that is the sectors of infrastructure, education, information communication technology, defense, and various other creeds. And these, you may have get a doubt that what is the topic have been given, what I am replicating. Here I want to make a conclusion that means I want to band out that history where we have dreamed of a developed country, where we have seen our Mother India in a prized and raised manner. And the dream of APJ Abdul Kalam ji is nothing but the word and the term called Atmanirbhar Bharat Abhiyan, that which was announced by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Where I feel and I want to salute the government of India. It has been phased out and it has been trackled out. The chains that our Mother India had been tackled out and had been garlanded our Mother India with such a beautiful theme called Atmanirbhar Bharat. As we are familiar that every year we will be adding some, means the university, Oxford University will be having some words in the dictionary. In the same sense, this year, a new word have been excambled the whole world, that is none other than COVID-19, which is used in each one's life. But this COVID-19 that which came nowadays has been marked a historical place in history and had been changed the life of each and everybody in the world. That which coined a term by our government of India called Atmanirbhar Bharat, which is meant
making India self-reliant and self-sufficient. Here we need a small clarification again. Here, self-reliance and self-assistant doesn't mean the isolation of India from other countries. It means the amendment and the branding of India in such a way that is, let us be so clear of the present situation only. If a victim from corona had been taken and kept in an isolation ward for 7 days of tests, a victim, solo victim, has to just interact with the doctor where he was isolated from the whole world. It was such a typical thing, I say, where there is a social thing and social world surrounded again. As a human being, we are social animals where everybody's interaction should and must be there. But India, such a huge country with such a huge population, how can it survive without interacting with all? So here we want to make a clear and statement that self-reliance and self-assistance doesn't mean isolating the whole world and isolating the country of our India from other Asians. It means that being vocal for local and local for global. That is what the main theme behind this Atmanirbhar Bharat Abhiyan is. And this pandemic had shown our clear-cut eruption of this Atmanirbhar Bharat theme to come out within the India and to come out within the youth and to come out within the each citizen with making the patriotism, nationalism as a theme of best manner, where we have seen so many present days problems facing in the sections like vulnerable section facing financial problems at the time of pandemic. And the health facilities lacking, where there were no PPE kits, where there were no testing trials, where there were no proper beds to live in India for proper victims to get codified from coronavirus. These had made our Indians and our government to realize that where we are standing up and where we were standing and where we should stand by 2023. These not only had replicated any other things, but has thought of making the nation called Bharat building. If we assume our India as a building, they decided to make 5 strong pillars so eminent and efficient. That is economy, infrastructure, demand, vibrant demography and system. What these 5 pillars will do? These 5 pillars will make the innovations in such a grand way, and it increases the exports and decreases a minimal imports from other countries, which graphically will increase and save the foreign currency, and also will make the small and medium entrepreneurs so strong with making the 5 trillion crore economy vision coming true within short period of time in India. Along with this, they have been focusing on 4 L's, that is land, labor, liquidity and loss, by bonding of bond forms for making and have a change in Atmanirbhar Bharat Abhiyan, that is through making a proper chain link in agriculture and bringing out some demands properly, clear-cut laws and rational tax system and various other 2 measures that were being taken. In this short period of time, I feel very proud to say that my India, our Atmanirbhar Bharat, have come up with so many successful stories by these within short period of pandemic time itself. Why can't we say that the vision of Abdul Kalam ji, the vision of Modi ji can't come true? If it is planned in such a way, our plans get into the transmission of thoughts, that thoughts turn into actions, that actions which will make the thoughts come into reality for sure on the day or off the day, but taking some time. These type of things may lead some time, but the improvement and encouragement will surely lead the path of success to my mother India for sure. As I want to speak the success story of this Atmanirbhar Bharat, why not I speak about this theme of PPEs, where first in India no PPE kits were being manufacturing nor being taken out. At the time of pandemic, it has given a tough competition to the China, where it stood second in manufacturing of PPE kits. And also, the IIT Alumni Associations had captured a 21 crore thousand collection in bonding and in improvement of the infrastructure in IITs. Why can't I speak about the 5G network that has been going to brought down in India? And also, why can't I speak about the great Jawans and Jai Kisans, where the development of agriculture and defense is going to be seen soon back in India as sure as can. Where now it's time to see both sides of a coin, where if there are positives, we see negatives. If merits, demerits. In the same sense, I want to say and I want to make clear of some thoughts that people having in their minds about the Atmanirbhar Bharat Abhiyan demonetization, where Economic Times had republished a
little essay in one paper, that which I read it from newspaper. There it was been translating and producing an article on manufacturing of mobiles in India under this Atmanirbhar Bharat, where the chips and where various instruments that were being used in mobile phones were made in China and made in Taiwan. So the society transmitted that as a negative, as a fact of cause. Some positives also will be there and some negatives also will be there. But as the citizens and as the responsible youngsters, it is our responsibility to turn the negative impact also into a positive one, to replica, to make it a successful story of Atmanirbhar Bharat. For that I want to answer to everybody is that a baby born out can't run immediately. If we take the examples of great athletics like P.T. Usha, Milkha Singh, have they been running by birth only? Have they came out of their womb mother by running only? Obviously no. They came out, they crawl, they fall, they walk, they run, and until they have been reached the high peaks in their life. Then, here coming to the matter of running ages, we think that how does this Atmanirbhar Bharat make a very successful sounding? Here comes the youth of the nation. They are the youngsters. As we see the history, we see a social animal transmitting itself into a very well civilized one. And we are seeing the same animal inculcating back to the roads of difficulties in life, without having clear achievements and clear goals in taking out to the life. I want to speak of youth at the backbone of this nation. They are the supporters, they are the innovators, they are the energy givers of nation. There is no doubt in telling that the youth, the nation's future is dependent on the youth itself. Then we have a doubt, how? How does it comes? It comes by achieving the goals. It comes by achieving the goals and making them into vast realities. It sounds humorous, but it is a fact that nowadays achieving of goals is different thing. Setting of goal itself has become a great difficulty to the youth. It has become a very great difficulty. It sounds so hard and it sounds so sad. But there are various causes even for it. The new education policy 2020 is going to bring out the skill protected, skill mandated, and it's going to remove the brand of marks. It is going to replace the paper education and is going to replace it by proper education, providing the skilled, energetic, and innovative youth to the nation to produce a great warmth, skilled persons, and youth personalities to this Mother India. Vivekananda ji says that, think high, dream high, keep them day by day in front of you, because that actions turn into reality by creating a great desire in ourselves, that which burning desire will help in achieving the goals of each citizen. Because we can't believe in God until we believe in ourselves. Don't think ourselves as weak, because strength is what we inculcate in upon. We can achieve anything. Every power is within us. You can do it is the mantra that which we want to embed in ourselves, because everything is within us. We can reach to the heights of peaks of summits where the India can't see back again to what the colonization, what the globalization, what the liberalization, what the privatization may take place. But it is the step for us to realize in such a manner to take the Atmanirbhar Bharat not as the mantra, not as something, to take it as breathe, to take it as depth. If we are living, the Atmanirbhar Bharat is also to be lived upon among us. By telling this, I want to say that even though by seeing this pandemic, so many people started telling it was in Kalagnana. It was in Kalagnana. If something miracle happens, it was in Kalagnana. If something deficit happens, it happened in Kalagnana. It was written in Kalagnana. I'm damn sure that if we follow up these type of schemes in particularly, in generally, with depth by taking it to heart, we are going to face various types of Wuhan viruses, various types of coronas, corona's daughters, corona's sons, what not. It was written in Kalagnana. We are going to face out it without any drapish measure at all. Even not speaking of all this, do we Indians can't remember that APJ Abdul Kalam satellite was taken in a Bulaka to the satellite system where the Atmanirbhar has been started, then they were only. I was spoken about the history of India at first itself, where the seed was sown by the Indian patriots
at history itself. It was trying to bloom, it was trying to come up, but the soil on it had been fallen so, where the growth was not seen. Again, the hope, the sunlight of APJ Abdul Kalam came and fallen on that seed, but it grew a little, it was growing like that. And then again, it is the Atmanirbhar Abhiyan, that which is suitable climate for the seed called Atmanirbhar to grow up and to bear fruits, flowers, branches. Who knows that seed is going to become a banyan tree tomorrow, tremending a big tree like our Timmamma Marimanu represented in Kadapa district. Such an one can become this Atmanirbhar Abhiyan, where the India can proudly say, my India again back to the version of helping hand rather than lending hand. Who knows what may become to the next. Now, at last, I would like to say that the car is ready and the kapimi is ready. The key is ready. The road is ready. The proper rider, the proper driver of that car should be ready. That is none other than the youngsters. Here I want to make a small clarification that youngsters refers to the term between 18 years as per all ideologies. That means from the childhood to adolescent age. But my dear Indians, I want to be very sure and want to be very clear that age doesn't matter. The innovative thoughts, the patriotic innovations, the wish, the burning desire that they want to do to this mother country, the worries, the fire within us is what the youngsters, is what the great personality spoke about. It doesn't matter about the age factor at all. If we speak so, we have been read in a newspaper that when 75 years old lady has been completed her PG. This means that youngsters means not only the age one, differentiated one, it is the desire and it is the thoughts that which we want to sow up. Saying that and hoping so that my mother India will rise to such an heights where each and every country will look to it as soon as possible. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you one and all. युवा है हम, देश की शान और पहचान है हम, मदमस्त सी बहती बयान है हम, प्रगति की ऊंची उड़ान है हम, भारत के युवा है हम। तिरंगा हो से ऊंचा होगा, तिरंगा हमसे ऊंचा होगा, आत्मनिर्भर कल हमसे होगा, देश का कौशल हमसे है, माटी की खुशबू हमें है, हमें है, हमें है, हमें है, देश की एक आवाज है हम, भारत के युवा है हम। नव भारत का निर्माण करेंगे, समर्थ देश को साकार करेंगे, नई सोच की रोशनी में सबको लेकर साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे, साथ लड़ेंगे हो, एक स्वर में उठी पुकार है हम, पुकार है हम, पुकार है हम, भारत के युवा है हम, देश की शान और पहचान है हम युवा। राष्ट्र के यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद जी के विचार हमें और देश के युवा को हमेशा से ही प्रेरित करते आए हैं। और उस समय जब पूरा विश्व ठहरा हुआ था, तब क्या राष्ट्र के युवा का मन और मस्तिष्क भी ठहरा हुआ था? बिल्कुल नहीं।
युवा सपनों को, आकांक्षाओं को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने देना चाहिए, क्योंकि युवा नए आइडिया से, फ्रेशनेस से वो भरा हुआ होता है, ऊर्जा होती है, तेजस्विता होती है, शार्पनेस होती है, उस पर अतीत का बोझ नहीं होता। युवा विचार, उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा को दिशा देना किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक रहा है। इसलिए सर्वव्यापी इस महामारी के बीच में युवा महोत्सव का आयोजन एक कठिन चुनौती थी, पर पूरे देश के युवा को एक मंच पर लाना, उनको प्रोत्साहित करना, यह भी जरूरी था। इसलिए इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हुआ। पिछले 20 दिनों में राष्ट्र ने युवा प्रतिभा और इच्छा शक्ति का एक अविस्मरणीय उदाहरण देखा है। राज्यों के स्तर पर अनेक जगहों पर 7 लाख से ज्यादा युवाओं ने 24 प्रतियोगिताओं में भाग लिया। देश के युवा वर्ग को रचनात्मक और सकारात्मक गतिविधियों में शामिल रखना हमारी प्राथमिकता रही है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के साथ मिलकर इस वर्ष कई आयोजन किए गए। हाल ही में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार किए जाने का विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास भी किया गया। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड के हिमालयों में विंटर एल्पाइन स्किल्स क्लाइंबिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में भी पर्वतारोहण के कार्यक्रम आयोजित हुए। युवाओं के विचार और सोच को मंच देने के लिए राष्ट्रीय युवा संसद का 698 जिलों में आयोजन किया गया। इसमें 2,34,000 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से राष्ट्रीय स्तर के 3 विजेताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश के हर युवा तक पहुंचने का बीड़ा उठाया और इसके लिए राष्ट्रव्यापी प्रसार अभियान को जारी किया। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही युवा महोत्सव और युवा संसद तकरीबन 1,10,00,000 लोगों ने देखा। हमारे लिए यह एक सुखद अनुभूति है कि हमने देश के लाखों युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन कर इस महोत्सव की भव्यता को कायम रखा। इन सब आयोजनों के साथ अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव देश के युवा वर्ग को एक नवीन ऊर्जा और प्रोत्साहन देने का अनूठा प्रयास कर रहा है। हर मुद्दे के कई पहलू होते हैं और वो सामने आते हैं जब एक सकारात्मक चर्चा होती है। एक विषय तो हमने चुन लिया है, पर उसके अनेकों पहलुओं पर चर्चा करेंगे देश के चुनिंदा युवा मस्तिष्क। जी हां, मैं बात कर रही हूं हमारे अगले खंड की, जो है पैनल डिस्कशंस ऑन इंटरनेशनल एंड न्यू एज इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। सिक्किम। On the event panel discussion, and for this year topic given to me is international and new age Indian entrepreneur. Thank you. Welcome, Yogesh. I'll be moderating your thoughts and opinion. So first of all, I would like you to say, what is entrepreneurship? Entrepreneur is doing a business by taking a financial risks. Every new innovation, every new discovery come when people takes risks. So it is important to take risks. So I suggest to youth to come forward and take more risks to gain a more success. So what if youth take up service job instead of entrepreneurship? What is the disadvantage? What is the loss they suffer? By doing a job, one father or mother, he start with by doing a job, after he retired, he again come to the zero. But if he have done a startup, after he retire or after his end, his child should not have to start from zero. It will be boost for
her child or it will be boost to country also. So, what is your idea about international entrepreneurship? And who do you know some of them, famous names? International entrepreneur means to do a business outside the national boundary. There are many factors which decide a international entrepreneur. One among these is relation among countries. Just in, we know more than 100 apps are banned by Indian government. It is due to the Indo-China relation. So, in entrepreneur, the main focus is, especially in international entrepreneur, the home country and international country. It depends on it to, by banning such a app, our youth get more opportunity to develop an app and work for it. And some other factors are global factor, which include a corona pandemic. In this period, whole country need a vaccine, whole universe need a vaccine, masks, sanitizer. So those entrepreneurs who are working on it get a good opportunity to develop their goal. What are the things that you require most, what you think are most essential for entrepreneurship? Can you just go on for entrepreneurship just after your simple BA or MA degree, or what is required? To do entrepreneur, there are three things required. One is friends, families, and fools. Fools, I'm not joking. Fools means a person who invests on our entrepreneur. So how about skills and the capital and all those things? What about skills? Is India doing anything for younger generation's skill program to upgrade their skills for entrepreneurship? Being a representative from Sikkim, I am happy to announce just a few months ago, our Honorable Chief Minister had announced a very good initiative, startup scheme, which is going to cover all sectors from poultry to service to hospitality. So such type of program is done by state government, which also include a skill development program. And from a national government, there are a lot of program which the government has sanctioned, but due to some reason, it is not had been implemented at the ground level. But I feel in future it will be implemented in a ground level too. Some of the schemes are, one is Atal Mission, Make in India, and 55 minutes loans. Such type of scheme has been launched by India government. And most important is Atmanirbhar Bharat. From this, government has sanctioned so much of money to the youngsters, but it is our responsibility to come forward and take that benefit, because government is not going to bring in your home and invest you. It is our responsibility because it is for us. So I suggest from this also, youth to come forward, make a project and approach to the government. Thank you. How do you think entrepreneurship can make India Atmanirbhar or self-reliant? Being a country with the highest population, our Honorable Prime Minister usually used to say, with a million problems, there are billion minds. So, from the entrepreneur, people can create job, not get in a job. One entrepreneur can involve more than 10 to 20 people in a job. So, being the country with a major problem as the unemployment, through the entrepreneurship, people will get more job in the country. So if we go for Atmanirbharta, self-reliance, and entrepreneurship within the country, so do you think we will have no relation with other countries and no export-import, or what do you think will happen to young India? India being the country, till now, there are few and successful entrepreneurs in a country. But what I feel is, like the foreign country, till now, we are not able to compete with them. So,
to the Atmanirbhar Bharat, government is providing financial and moral support to the person or a youth who is trying to be involved in entrepreneur. So if they succeed, they can go abroad too, which can boost to them and to country also. As a moderator, I would like to say that you can always buy raw material, sell raw material for your business, isn't it? So can you name some of the, entrepreneurs or entrepreneur, things that are going on in Sikkim? Something by youth here. Yes, in your state. In my state, just one among is Yuvaah Basnet sir. He is also an entrepreneur. Because entrepreneur does not mean you have to make an infrastructure, you have to build big infrastructure. Entrepreneur means take risks. There should be a circulation of money directly or indirectly. Just Mark Zuckerberg, he does not have to do anything now. He have work hard now. We are giving in money, we are advertising. So Yuvaah Basnet sir is one among him. And there are a lot of entrepreneurs, especially in Sikkim. People are more involved in rural homestay. Being a state with a tourism sector, our state has more people involved in a tourism sector. So one name is Yuvaah Basnet sir. Okay. Now, as a young person, do you think you would have gone for entrepreneurship or service? So I would prefer to be entrepreneur because I can involve more people, I can provide them a job, rather than if I involve in a job, again after my retirement, I have to start from a zero. Why do you think we are focusing on youngsters most when we talk of entrepreneurship nowadays? Why? India being a country where 1/5 of the population is from 15 to 24 years of age, and 65% of the people are below at the age of 35. So, being a country whose average age is in 27 to 29, so it is a high priority, youth should come forward. Yes, youth should come forward because they are the future of India. So if they start entrepreneurship, we will certainly become self-reliant one day. So we are doing this. No? Acha, then can you say what are the things in which if we go ahead, we need more skill and capital for entrepreneurship? Suggest some of the examples, cite some. Skilled is one among it because entrepreneur, there are a lot of sector of entrepreneur. Some involved in a service sector, some involved in a hospitality sector, some involved in an infrastructure sector. Especially in the field of infrastructure sector, they need a more skilled people to move it forward. How can an young entrepreneur help others? Young entrepreneur develop an attachment faster than the other, being old. Because being a young, we are not involved with more responsibilities. Because the old people, especially who cross 35, 40, they are involved in a responsibility. So they, due to some reason, they can't focus on it. So being a young, if we get involved in an entrepreneur, we can give our 100%. You can provide jobs to others, no? That is how you can mostly help. Achha, if we don't start entrepreneurship now, what will happen to our India? If the youngsters don't take up that, how will it help? I mean, it will harm India. From past decade, business in our country are handled by few high-profile people. So, if we don't come forward, then those people who are already involved, they will occupy all the status, all the business. So,
we should come forward, because I have already said government is providing a lot of facilities through different startup schemes, different skilled schemes and so on. That is good, but because when we take up entrepreneurship, we are the masters and we can provide to others, otherwise we are the servants, you know. So what sort of business, you know, I asked you previously also, is most suitable for Indian youngsters? What type? Yes. Business depend on the situation. In Corona period, in the Corona time, the people, the entrepreneur who work in the field of masks and sanitizer get more opportunity. So I don't preferably suggest, look after the situation, look after your talent, then go forward. Do you think girls should also go for, you know, entrepreneurship, or is it only the men? No. Girls should also come forward to the entrepreneur, because talent is available to all. All have a talent. So if the girl will also come forward, then unitedly, girl and boy, we can make our country very high. So are they already into this type of business, and what are they producing, manufacturing, even in Sikkim? Especially in Sikkim, already I have said that most of them are involved in a tourism sector, but also girls of the Sikkim are mostly have involved in a design sector. I have seen in design sector they are more involved. Similarly, some are taking infrastructure too. So altogether, girl are also involved in all type of entrepreneurship. Okay, they're mostly into garment and anything else, you know, all the export, import type of thing. So do you think the farmers, agriculturists who are now totally confined to their, you know, land and agriculture, they should also do something like this? They should have some business, side business, some entrepreneurship their children should have? Or they should continue with agriculture? Agriculture is some type of entrepreneurship too. So they are more skilled on that field. So I suggest to the, especially the farmers, to work in farming too, but with the new innovative ideas, so that they can produce more. So whatever they produce after that, what is it that they can do? Can they do something of their produce instead of just going to sabji mandi and marketplace and just sell off, you know, dispose off? What else can be done with the agriculturists' produce to make them richer, uplift the economy and India, you know, make it more Atmanirbhar and rich? In every village or a town, government has created a different cooperative sector. So cooperative means the people of the village, they unitedly make one association and run it. So I suggest they unitedly sell it to a higher market rather than a middleman, so that they can gain a good profit from it. Also, if their production is more, they can turn that raw material and sell it further. Have you heard of anything like processing and business and preserving? Anything like that? Processing food, preserving? Any any preservation factory in Sikkim? I guess in Sikkim, regarding preservation factory, there are small entrepreneur like bread making. They use this preservatives, and it will be used in a hotel sector, tourism sector. They have this fruit preservation factory in Singtam, and they have many more like that. No? So farmers sell it. Okay, anyway. So is the people in India are mostly said to be, say, the marginalized people are there, then middle class and poor people. So what about them? How can they start their business? If they have no money, how do they go in for it? Okay, for money already I have mentioned, Yeah. if they have the talent,
through a startup scheme, government is providing fund. Also through Atmanirbhar, also different bank are providing a subsidized loan to such type of entrepreneur. Loan, okay. So with loan, they make the capital out of that and they produce, things. Okay, can you name anybody who has been very successful, any Indian entrepreneur? Not now very young, but once upon a time, any age old. Ritesh Agrawal. Okay. He is the founder of Oyo. Okay. He has very well planned and make this company Oyo, because now it is said that our world has been contracted. It means with the ease of the transportation, with the transportation being a cheap, more people travel here and there. So he has very well planned and make a company Oyo. What is the advantage of being Atmanirbhar? If you are dependent on yourself, our country is dependent on itself, what is the benefit? Why be Atmanirbhar? First, it will help country to be a self-sufficient. Also, it has a long-term impact. It will help to us as a long term. So this is it. Now we've heard him, and he's wonderfully presented why youth should take to entrepreneurship and how Indian youth will make India Atmanirbhar by taking up different business of their choice, getting skilled, and those who do not have capital, how they get loans subsidized from banks, and how the startup scheme started by Prime Minister Narendra Modi is there, which is being pursued in Sikkim by Chief Minister P.S. Tamang, and how men and women can do it at par. So thank you. Punjab. Greetings, ladies and gentlemen. Today we have come over here for a very sterling panel discussion. My name is Sahas Ramal. We have Madam Gurkamal, we have Madam Gurveen, we have Madam Garima, and we have Mr. Deepak for this very sterling panel discussion. I hope this turns out to be very lucrative for all of us. Today, on this very day, I am remembered of Martin Luther King Jr., where he said, "To other countries, I may go as a tourist, but to India, I visit as a pilgrim." That's the power of our nation, and that's the essence of this very beautiful nation, India. But on this very minute, on this very second, on this very moment, we have 7.8 billion people living on this planet. And those 7.8 billion people, 60% of those population is actually employed. Now, let me just squeeze it down further a bit more. We have 37% of the world's brain from India of the 7.8 billion people. Furthermore, if we squeeze it down, but in India, the worst part is that we have only 5.44% of the research output. Further squeeze it down, the employment population rate in India is only 3.84%. So let's just be honest, there is some confusion, ladies and gentlemen, which apparently we are facing today. Because at some point, we are talking about a $5 trillion economy. And at the same point, we are super poor. So we cannot be super poor and super poor at the same time. But I am still remembered of our Prime Minister Manmohan Singh Ji, the great economist, when in 2008, he had welcomed all the new MPs in the wonderful parliament, and he had said, "The youth is hungry. The youth is impatient. The youth needs stability. The youth wants to get its hands soiled because it wants money." So we hope that this panel discussion will be very, very wonderful and productive as well. Madam Gurkamal, what is your point of view on this? Well, thank you, sir. When we talk about youth, youth of our country is passionate. The other day I was reading an interview of Jeff Bezos. He is the founder of Amazon, and he said a very beautiful thing, that we all have passions in our lives, and we don't choose our passions choose us. But we need to be alert to them, because sometimes what happens is that
our intellectual, insecure selves overrule our passions, and that needs to be guarded against. If you have a passionate idea, you already have one foot into this world of entrepreneurship. If you have heard about the PAD project of the village Kathukheda, it's in district Harpur, around the outskirts of Delhi. The women there, they did not have access to affordable sanitary pads. The girls had problems, they were dropping out of schools, and eventually the girls, they came together, they raised funds, and they started manufacturing and marketing their own sanitary pads. These girls are the entrepreneurs. The youth is the entrepreneur of this young India. Oh, very wonderful. I did get your point over here, but to me, I have one question as well. That is passion only the most imperative thing that you want to say for an entrepreneur to become, for a startup to work, or is it more to it? Well, I talked about passion because that gives you the idea, but that's not enough. I said 1 foot into this world of entrepreneurship is because of your idea, is because of your passionate idea. But there are other aspects as well. The most important is your idea, and second is the execution of that idea. Third is the timing of your idea. Fourth, the funds. And fifth, which is how flexible you are, how much you can adapt with the changing times. Let me exemplify this. Now, during this pandemic, all of us were bored and depressed because the movie theaters were shut down and there were no sources of entertainment outside the walls of your houses. Now here comes into light the Starlight Drive-In Cinema. It opened on the Canal Road in my hometown, Ludhiana itself. It is the first kind of drive-in cinema in the entire North India region. Now what you have to do is park your cars, recline your seats, tune in your FM, and enjoy the movie experience, the safest movie experience outside your houses. And this is called Movie Under the Stars. Perfect idea, perfect execution, perfect timing. That's how you start an entrepreneurship in your country, and that is what the youth is doing. Very wonderful, ma'am. Your 5-point theory is actually pretty wonderful and enchanting as well, I must say that. Ma'am, Gurveen, do you want to say something on this? Do you want to add furthermore something to it? What is your take on it? First of all, I want to thank my dear co-panelist for beautifully exemplifying the 5 factors. But I have a doubt. You may have a beautiful idea of a Starlight Drive-In cinemas, but do you have the proper planning and execution to this brilliant idea of moving cinema without fuel and money? Are you getting that for free? So this is the point which bothers me the most. And the worthy moderator, this is the factor where I can answer your question. The factor where we lack in India is funding. In India, we have less than 250 incubators, whereas in countries like USA and China, they have incubators in thousands of number. And that's why they are leading in startups. And if you're still underestimating this power of funding, then sorry, you're mistaken. You are living in a country where 80 million people are below poverty line. 300 million people are uneducated, and 700 million people have no access to internet. And that's why you are mistaken. You can't build a strong building on a weak foundation. And that's all my point, sir. Thank you so very much, ma'am. Talking about other countries as well, talking about the international perspectives as well, I think you have very well lucidly highlighted the key points which need to be fret upon. Right. Madam Garima, what is your take on it? Well, sir, priorly, when I come up in an argument, I come up with sheer facts. Countering my worthy panelist, what she said right now, I solidly believe that all you need is an idea and an internet connection, not the so-called capital, labor, and food cost concept. It's so simple as that. Just as we have YouTubers, we have 25 million Instagram business accounts. We have got young entrepreneurs which are actually switching globally thanks to digitalization. All this is possible because of schemes like the Atmanirbhar Bharat, Startup India, Skill India. What I more firmly believe is what we need is a right mindset. Because with a right mindset,
the battle is half won. My worthy panelist also highlighted about the illiterate population of India, but I can proudly say that past in the time of independence, when most of the population, the 90% population, yes, the 90% population was below the poverty line, we still came so far, and there's so much more to go, and we should be proud of it. I firmly believe that we may not succeed every time, we may even fail, but this tells us never to give up. Very wonderful, ma'am. Your points have been really very relevant, and the way that you tackled her point over there is indeed commendable. Thank you so very much. And sir, now coming up to you, what would you like to summarize over here? What would you like to say about this, taking from the viewpoints as she has talked about the 5-point theory that she has in her mind and the sanitary pads, entrepreneurs as well. Then we came up to her. She talked about international countries, international entrepreneurs, talking about incubators. That is why China is more successful. Talking about her, she has talked about capital. What is your view take on this particular topic? जी साहस शुक्रिया। मैं अपनी बात की शुरुआत मोहतरमा की बात से ही करना चाहूँगा। बड़ी ताज्जुब की बात है कि हम इसी ज़मीन पर बैठे ये कह रहे हैं कि हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम वर्चुअल स्पेस की ही बात कर लेते हैं। वर्चुअल स्पेस में सबसे ज़रूरी क्या होता है? हमारी जानकारियाँ, हमारी निजता और हमारा डेटा। मगर इस डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आप भूले नहीं होंगे 2019 में जब फेसबुक ने 27 करोड़ लोगों का डेटा लीक कर दिया था। पिछले साल में चलते हैं 2018 में कोबरा पोस्ट ने यह खुलासा किया और पेटीएम पर यह आरोप लगाया कि पीएमओ से सिर्फ एक कॉल आने पर पेटीएम ने अपने पूरे यूजर्स का डेटा उनको दे दिया था। इस सवाल का जवाब कौन देगा? दूसरी बात कि भारत सरकार जो फंडिंग स्कीम्स लेके आ रही है उनका क्या? पहले हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस टुडे की 2019 की रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि इस स्कीम का 75% हिस्सा भारत की अर्थव्यवस्था को हरकत में ला ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब से इस स्कीम का ऐलान हुआ है तब से लेकर आज तक क्रेडिट की मांग बढ़ ही नहीं रही है। और दूसरी स्कीम स्टार्टअप इंडिया, अगर हम ऐसे ही एक और रिपोर्ट की बात करें जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, वो 33,000 स्टार्टअप्स के ऊपर बेस्ड है, उनका सर्वे है। और उसका नतीजा पता क्या है? उसका नतीजा है कि 80% लोगों को इस स्कीम का फायदा तक नहीं पहुंचा, 1 रुपया तक उनके हाथ में नहीं आया। इन स्कीम्स के बारे में कौन जवाब देगा? और 100 बात की एक बात, हम जहां जी रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, वो श्रेणियों में बटा हुआ है, असमानताओं से भरा पड़ा है। ऐसे गैर बराबरी वाले समाज में अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचें तो ये देखना पड़ेगा कि एक एंटरप्रेन्योर किस मकसद से अपना काम कर रहा है। क्या वो जनसाधारण के कल्याण के लिए काम कर रहा है या सिर्फ अपने निजी मुनाफे के लिए? मुझे तो ये लगता है कि ज़्यादातर भारत के एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ निजी मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि भारत 162 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा पड़ा हो और इनकी सफलता की कहानियां हवा में तैरती हों? ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत की जीडीपी सियाचिन के तापमान की तरह माइनस में जा रही हो और इनका नाम तमाम दुनिया के अमीरों में प्लस होते जा रहा हो? इनको देखकर तो मुझे बस राहत इंदौरी याद आते हैं कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, ये फ़ायदे की तजारत है, चलो इश्क करें। शुक्रिया। Very well, sir, very well, and I love your points over here. I love your point of view as well over here. But you know, I really tend to think one thing over here कि बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो एक चीज़ भूल जाते हैं इस भारत देश में और वर्ल्ड ओवर भी, कि नौकरी और रोज़गार में फ़र्क होता है। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं नौकरी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि रोज़गार उनके लिए क्या क्या कर सकता है।
And we all can agree to disagree to one thing, that is that we all are hungry for money. We all want money. I think that's why we are living for this world. Right? Ma'am, do you want to add certain facts to it? Do you want to add anything more to it? Well, money is necessity. That is something we cannot survive without, and that is why we are pushing ourselves into this world of entrepreneurship. We need it. And ma'am, do you have any concluding remarks from your side? The only thing I want to say is to be good only to yourself is to be good for nothing. So if entrepreneurs are earning money, then they should invest it in other fields as well. Right, right. Ma'am, do you have any concluding remarks from your side? I most certainly believe that we all are living a self-centered life. But on seeing it on a global panorama, one can see that if we are moving more firmly towards it, each small step can turn out together in unison and be a better one. Sir, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, मगर ये देखना भी महत्वपूर्ण है कि एंटरप्रेन्योरशिप किस आर्थिक संरचना में हो रही है, किस आर्थिक ढांचे में हो रही है, ये देखना बहुत ज़रूरी है. जी सर. And thank you so very much. We have agreed to disagree on certain notions, and this indeed has been a very wonderful, laboring and fruitful conversation. I think that we cannot escape the advent of startups, as they are the fourth industrial revolution according to me, and we have to succeed in the coming of future as well. Thank you so very much. I, Sakshi Sharma, with my co-panelists, Mr. Sharandeep Singh, Mr. Dhirender Singh, Mr. Amit Sharma, and Ms. Ujjal Preet Kaur are here on today's panel discussion about international and new age Indian entrepreneurs. Well, I would like to start this talk by an instance from my own life, where my brother once said to me that, Sakshi, if today you are not going to build your dream, then tomorrow somebody else is going to hire you to build his or her own dream. Well, at that point, I realized that I don't want to be an employee doing 9-to-5 job living somebody else's dream. I want to pursue my own goal, my own dreams that I want to live. So here I would like to have the opinion of Mr. Sharandeep Singh, who is also a young entrepreneur, that what was that point in your life that you realized that I want to become what I am today, and what is new age entrepreneur according to you? Thank you, Sakshi. Well, I have a very different opinion about the year 2020, where most of the people among us took a deep sigh that yes, finally 2020 is over. But I believe this was the year that helped us to realize our potential. It helped us to recognize who we are and what our strengths are. If I have to talk about myself, I am a plant enthusiast. And I love raising small succulents wherever I live, whether it's a hostel or my house, but I couldn't do it on a larger scale because of my bachelor's. But during the pandemic, alone and frustrated as we all were, I decided to opt it as a business. And today I'm running an Instagram handle with more than 4,000 followers on it. And I am earning handsome amount of money out of it. We always say there are 4 factors of production. One is land, labor, capital, and entrepreneurship itself. But I don't think in this journey from 0 to 4,000 followers, I have ever used land, I have ever used labor. All I needed was small investment, a creative mind, and a digital platform. This is what we call new age entrepreneurship. See, if you're making something out of a renewable resource, then it's new age entrepreneurship. If you are fulfilling a purpose or a cause in this world, then it is called new age entrepreneurship. If you are following your passion and making a difference, then it's called new age entrepreneurship. I totally agree with you, Mr. Sharan. Even in my opinion, an entrepreneur is someone who takes an initiative to solve the real life problem with his or her own innovation,
creative ideas and carries it forward. Today, entrepreneurship has gained a lot of respect with people from diverse backgrounds giving it a very big picture. Boosted by the success stories of some entrepreneurs, people have developed the gut to explore their ideas and venturing into the business avenues. Even the data of NASSCOM reflects that India is the third largest base in the world with over 3,000 startups present in India. Moreover, India this year has improved his position in Global Innovation Index by 4 ranks and now stands at 48th rank among 131 countries, and I think that's a great achievement. Well, thank you so much, Mr. Amit, for your statistics. But we cannot deny the fact that agriculture is the backbone of our economy. So, I remember that once a man said to Sardar Vallabhbhai Patel that what is your culture? To which he replied, agriculture is my culture. About 70 to 80% of our population is dependent upon agriculture for its livelihood. Well, I would like to have opinion of Ujjal on how the farmer plays an important role in today's entrepreneurial world. Well, thank you, Sakshi. I think that agriculture is the most underrated aspect when we talk about entrepreneurship or startups. Even talking about India, we rank 11th in manufacturing, 12th in services sector, whereas we are the third largest agricultural GDP in the world. As it is rightly said, that God looked down on his planned paradise and said, I need a caretaker. So God made a farmer. If we are privileged enough to have this discussion today, we should thank a farmer first. A farmer is the backbone of this country in terms of economic security, food security, environment sustainability, and leading a minimal lifestyle. And I think that these statements make it point clear that why agricultural entrepreneurship or progressive farming is needed the most. Well, Ujjal, can you cite us some of the examples to support your argument? For sure. As we all know that Punjab and Haryana are majorly agricultural dependent states. And being the breadbasket of country, majority of households are linked to agriculture. Let me cite you some examples. A man from Sangarur named Avtar Singh has opened a venture named Bioscape Farms where he is doing commercial flower seed productions. He started just with 2 acres and today he covers more than 700 acres all over the India and is exporting seeds to countries like Holland and USA. He has annual turnover of more than 7 crores. Then talking about a farmer from Haryana named Udaivir Singh. He started organic honey production with flavors like saffron or neem and has annual sales of near around 80 lakhs. And I think that India can only be Atmanirbhar if its farmer is Atmanirbhar. बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और मैं इतना कहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा अपना मानना ये है कि किसी भी ज़ख्म को बेहतर दिखाने से बेहतर है कि उसको बेहतर किया जाए। क्या बात है। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फोर्ब्स मैगजीन ने एक सर्वेक्षण किया दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 25 स्टार्टअप्स का, उसको उन्होंने अपनी मैगजीन में जगह दी, उसको छापा और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उस 25 टॉप स्टार्टअप्स में से भारत के सिर्फ एक स्टार्टअप को जगह मिल पाई जिसे हम सब एशियन पेंट्स के नाम से जानते हैं और सारे स्टार्टअप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। वहीं दूसरी ओर अगर मैं पूरी दुनिया में ऐसी 10 सिटीज़ की बात करूं जो स्टार्टअप्स और इनोवेशन के हवाले से जानी जाती हैं, उसमें भी आपको जानकर ये हैरानी होगी और हमको हताशा हाथ लगी हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान की एक भी सिटी दुनिया की टॉप 10 सिटीज़ में शामिल नहीं है स्टार्टअप्स के हवाले से और इनोवेशन के हवाले से, जिसका परिणाम हमको देखने को ये मिला कि वर्ष 2015 में हमारे भारत के स्टार्टअप्स के लिए जो फंडिंग आई थी वो $7.5 बिलियन की फंडिंग्स मिली थी, जो कि बहुत कम है। और उसका परिणाम 2015 से 2016-17 में ये देखने को मिला कि $7.5 बिलियन से भी घट के वो $3.5 बिलियन पर आ गई। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे स्टार्टअप्स की भारत में क्या हालत है। Well, Mr. Dhirendra, I want to ask you that why the Indians, they are so hesitant
right, to become entrepreneurs or to have their own startups. बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ और एक मैं स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, उसके अनुसार और कुछ बिंदुओं पर मैंने बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, वो मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहला जो मैंने जाना है, जो मैंने रिसर्च की है, वो ये कि हमारे भारत के स्टार्टअप्स में लैक ऑफ इनोवेशन है। हम कस्टमर की नीड को ही अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ही प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। दूसरा जो सबसे अहम कारण है हमारे इंडियन स्टार्टअप्स में, वो नेगेटिव कैश फ्लो, यानी कि हमारे डेटाबेस में, हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में पैसा दिखता तो है, कागजी तौर पे दिखता है, वो चेक के माध्यम से होता है, परंतु ऑन हैंड कैश नहीं होता है, जिसका परिणाम ये निकल के आया है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी की एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 90% स्टार्टअप जो है वो विद इन 5 ईयर बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसका परिणाम ये है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्टेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। हम स्टार्टअप को खड़ा तो कर देते हैं, परंतु हमारे पास एक बड़ा विजन नहीं होता, उसको हम स्केलेबल नहीं कर पाते हैं, उस बड़े स्तर तक नहीं ले जा पाते हैं। Well, I beg your pardon. Here I would also like to add that because of the lack of vision or failure in the marketing and hiring the unskilled workers, and maybe because of not availability of enough capital resources, are also some of the reasons why the Indians are so reluctant to have their own startups, right? And rightly quoted by our own Prime Minister Narendra Modi, we may have millions of problems, but at the same time, we have billions of minds. Also, Sakshi, I think that vision of Atmanirbhar Bharat or Atmanirbhar Youth is not new. Gandhiji laid its seed back then with Swadeshi movement, where he appealed the youth of India to produce, consume, demand and supply on their own, and we are carrying it forward today. Well, the vision that you are talking about, I want to know how the government has played its role in making the youth self-reliant. Well, Sakshi, I would like to answer your question. Definitely. Keeping in mind all these problems which my co-panelists has discussed, the government of India is trying to create such an ecosystem where the mentors will help the youth to start up, grow, as well as stabilize their business. The expeditions like Atmanirbhar Bharat, Startup India, Stand Up India, Make in India are the beginnings of India's self-realization of its potential. Moreover, according to Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, they are exploring their tie-ups with EDII and US-based company Vadhavan Foundations, which train the new, or we can say youth of startups within 500 colleges of India, and they have around 7,300 mentors and trainers. Apart from this, Sakshi, please just give me a few seconds. Definitely. Yeah. Apart from this, the government of India has reserved rupees 10,000 crores for supporting the youth, for supporting the young entrepreneurs, new startups, okay, which will be distributed among the youth by an installment of rupees 2,500 crores per year, and that's a very good thing. Well, in this case, I would say hats off to our government. But I want to know how deep this vision has penetrated to the ground level. So, Mr. Sharandeep Singh, what is your take on this? So yes, Sakshi, I won't take names of Ola or Zomato or Swiggy. I want to take names of people from the very basics of our society. From people like Indu Kumari starting her very small venture of tea shop with just an investment of rupees 180, to people like Devolina selling chane ka achar, to people like Anita selling khatta meetha bangan. I mean, these are the people who have ignited the very first spark of the Atmanirbhar Bharat. Well, we cannot forget that India is a country where we can find maximum number of youth. But do you really think that youth in our country is capable enough to fulfill the mission of self-reliance? बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, मैं इतना कहूँगा कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ईमान निकलेगा। क्या बात है। दिलों में कुछ बड़ा करने का अरमान निकलेगा। क्या बात और है। मेरी पीढ़ी के ये युवा
भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। क्या बात है, इसका क्या मतलब बात ये है, है क्या कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर साध भी है, साधन भी हैं स्टार्टअप्स को खड़ा करने के लिए। आज हमारे युवाओं को ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ साधना की। अगर वो हो जाता है सकारात्मक तरीके से तो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को ज़रूर छुएंगे। जी बिल्कुल मिस्टर धीरेन्द्र जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी दैट द टाइम is ticking and this discussion can go on and on. But not to forget that there are 5 P's to become a successful entrepreneur. The first, passion, the most important one. Second, patience. Third, persistence. Fourth, people. And last, profits. Of course, why we are in this business, right? And it is high time that we realize that if not now, then when? And if not us, then who? Thank you. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं मुस्कान कटोच आप सबका स्वागत करती हूं हमारी आज की इस पैनल डिस्कशन में, जहां हम सब एकत्रित हुए हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे देश की नींव से जुड़ा हो, जो हमारे सच्चे विकास से जुड़ा हो, जो हम सब युवाओं से जुड़ा हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की। आज इस सदन में रखे हुए विषय कि अंतर्राष्ट्रीय और नवयुग के भारतीय उद्यमी, उस विषय पर आज हम कई युवाओं से बातचीत करेंगे। हम उनकी राय लेंगे कि उनका क्या मानना है। मैं सबसे पहले हमारे आज की पहली पैनलिस्ट जैस्मीन जी का स्वागत करती हूं, हमारी दूसरी पैनलिस्ट ज्योति जी का स्वागत करना चाहूँगी, और हमारी तीसरी पैनलिस्ट जसलीन, और हमारे चौथे और आज के आखिरी पैनलिस्ट सौरभ जी का स्वागत करना चाहूँगी। आज हम इन चारों युवाओं से बात करेंगे कि इनकी क्या राय है इस विषय पर। वो कहते हैं ना कि आज किसी भी देश के सच्चे विकास के लिए उस देश के पास उसके युवाओं का साथ होना बेहद ज़रूरी है। और मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि आज भारत देश में ज़्यादा मात्रा में युवा पाए जाते हैं। आज वर्तमान की बात करें तो भारत देश का ऐसा कोई भी क्षेत्र अनछुआ नहीं रहा हमारे भारतीय एंटरप्रेन्योर्स के नए स्टार्टअप्स, उनकी नई नीतियों से। आज हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र हो या हम आम आदमियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, आज हमारे भारतीय एंटरप्रेन्योर्स ने हमारी ज़िंदगी को भी मानो आसान बना दिया हो। इसी से जुड़ा मेरा आज का पहला सवाल है जो सीधा जैस्मीन जी के पास जा रहा है। तो जैस्मीन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या एक युवा होने के नाते आपको भी लगता है कि आज हमारे भारतीय एंटरप्रेन्योर्स ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है? जैस्मीन जी। Thank you, Muskan. We can't not talk about apps when discussing about the new age entrepreneurs. New age relates to diverse cultures, and it's the transition from medieval times to the so-called modern era, which encompasses various work environments. Entrepreneurship has been the need of the hour in every era. With the development in the field of science and technology, especially with inventions like television and the World Wide Web, facilitated in the convention of ideas, which resulted in cluster growth of entrepreneurs with a hunger for business development. Entrepreneurs today are opportunistic. They sense the need of the people and indulge in intense research and bring us apps that cater to different scenarios. Let's take an example of the power sector. The power sector today is bearing the brunt of people because of the huge gap between demand and supply. Here's when entrepreneurs come into action. They utilized wind and the sun to manufacture power. They use these two non-exhaustible resources to generate power at cheaper rates. It's the need that generates an idea. Anita Kulkarni, the mastermind behind Transplant Care, an app that improves transplant care, was developed because she was having a hard time dealing with hospital visits, doctors, and whatnot, while her husband was recovering from a transplant surgery. Who knew I needed an app that would buzz me in every time I had to drink a glass of water? We have apps for everything. Craving for chole bhature or pav bhaji? Order from Zomato. Want to visit your friends or family? Book a cab on Ola. Want to watch a movie? Sure, book a ticket on Book My Show. Craving a delicious cup of tea, order it from Chai Point. And it doesn't just stop here. We have Byju's for education, Flipkart for shopping, 1mg Pharmacy for medicines, Make My Trip for vacations. You name it, we have it. Indian entrepreneurs have emerged as global leaders and are proving to be trendsetters in their field of expertise. Let's talk about Birlas and Tatas.
They were the beacon of hope for young entrepreneurs. These brilliant minds deciphered the word impossible. They read impossible as I am possible. If we have the courage, if we have the spark to decipher the word, the sky won't be the limit anymore. We will strive to achieve success. All of us here have the potential. It's just the courage and the risk-taking ability we need. Me, you, all of us. We can be entrepreneurs, we can create history. Thank you. बहुत खूब जैस्मीन जी, आपने बहुत ही उम्दा तरीके से अपने विचारों को प्रकट किया। अब मैं जाना चाहूँगी हमारे दूसरी पैनलिस्ट के पास, ज्योति जी। जैसा कि जैस्मीन जी का कहना है कि आज हमारे जो भारतीय एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बदौलत आज महिला सशक्तिकरण को बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है, तो इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? Thank you, Muskan. I completely agree. I am reminded of a young African girl who was molested and raped several times by her own relatives. But now she's ruling the world. Yes, ladies and gentlemen, I'm talking about Oprah Winfrey, an American talk show host, writer, author, and philanthropist. I am reminded of first female Indian entrepreneur, Kalpana Saroj, who is on whose name the famous film, Oscar-winning film, Slumdog, has been renamed. I am reminded of Madam C.B. Walker, who is India's first female millionaire. I am reminded of all those Indra Nooyi and all these people who are and will be forever the living examples of super successful women. Now I'll quote some of the government initiatives and schemes which have been created to boost entrepreneurship businesses in India. Make Up India, Start Up India, and these all schemes have been initiated so that our entrepreneurs can boost themselves. Also, it's not the government initiatives but also foreign companies which have come across to stand. How these entrepreneurs have come across and stood against all the barriers. And we are all aware of the examples like McDonald's came to India, they introduced Mac Aloo Tikki in the menu, and we know that this is the love for them, of how they love potatoes, and this is all led to the competition and successful competition. Thank you. बहुत खूब ज्योति जी, आपके भी विचारों को आपने बहुत अच्छे से प्रकट किया। अब मैं जाना चाहूँगी हमारी तीसरी पैनलिस्ट यानी कि जसलीन जी के पास। जसलीन जी, जैसा कि ज्योति और जैस्मीन ने बताया कि आज भारत सरकार की नीतियों द्वारा हमारे जो भारतीय एंटरप्रेन्योर्स हैं वो न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी सफल साबित हो रहे हैं, तो इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हम जानना चाहेंगे। Thank you, Muskan. I'll say there are always a loophole in system. It's been 4 years of Startup of India, but still only 8 out of 50,000 of startup has belonged to the unicorn. I believe that all the Indian government schemes has failed just because lack of intuition and lack of experience, lack of subsidies that are provided by the local government to the young entrepreneurs that are entering in the global market has not been succeeded. Because our government is supporting to the corporates who are the wealthy mouths, who just needs money and get rich, and poor are being more poor and more poor. I'll say the most prominent scheme, Make in India, that has been initiated to grow for the growth of the exports has also been the failure of our very own government, just because due to the lack of the policy, lack of implementation, and lack of regulation. And when we talk about startups, it has no implementation to our young entrepreneurs, just because of red tape, corruption, and whatnot. Every bureaucrat's inefficiency. And I'll further add about the barriers that our young entrepreneurs are facing in the legal and political environment, and also the institutional funds, labor, taxes. Nothing is much more efficient. So many such questions are still unanswered, and that's it. बहुत बहुत शुक्रिया जसलीन जी।
अब मैं जाना चाहूँगी हमारे चौथे और आज के आखिरी पैनलिस्ट के पास, जिनका नाम सौरभ है। सौरभ, जिस तरह से जसलीन ने अपने भावों को रखा, अपने विचारों को रखा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि इस विषय पर आपके क्या विचार हैं। Thank you, Muskan, first of all. In spite of all the successful entrepreneurial stories that my fellow panelists were putting across forward, I would like to take a step ahead and mention all the pitfalls and barriers associated with international and new age Indian entrepreneurs. Starting from the very basic, when you start young as an entrepreneur, what are the difficulties that can come your way? A, you don't have any experience in running a business. You simply don't know anything when started young, and you cannot compare your school life problems and solutions to real life world problems and solutions. B, you don't have any credit history. You don't have any banks to finance you. You don't have any banks to support you monetarily. You don't have any money put aside. You don't have any asset or any prized possession, and you can't even keep your house as a collateral because you simply don't own one. Also, when you start young, it's hard to find trust of customers, and because of which it is hard to find big contracts. And you can say because of which it is hard to get successful. Also, when you start young, you have very little time to live your life. You have time to live your life eventually, but till then it's too late for you. Now, going by the statistics, as my fellow panelists were also going, according to the findings of the survey by Institute of Business Value and Oxford Economics, about 90% of the startups, 90% of the startups, my dear friends, fail within the first 5 years of their establishment. I like to tell you that India has about nearly 50,000 startups, out of which, as my fellow panelists also mentioned, only eight of them could make it to the unicorn and $1 billion valuation. My fellow panelists also mentioned how McDonald's became a success and everything, but I would like to name few of the internationally famous companies that failed miserably in Indian market. We have examples of eBay. We have examples of Fiat, General Motors, who launched the Chevrolet car. We have examples of Sahara. We have examples of Kingfisher. Elaborating one of them, Dunkin' Donuts, another famous US-based company, famous in India for its sugar spiked menu and breakfast donuts, could not adapt to Indian market. Since starting in 2012, according to the statistics, it had to close 60% of its stores by the end of 2018. We can talk about things, but practically it's not easy to implement. Lack of access to funding, lack of knowledge of the market, lack of knowledge of foreign market, language barriers, semantic barriers, and there are so many other barriers. In the end, I can conclude by saying that definitely I'm not against the idea of entrepreneurship because that's how an economy works. But I'm definitely against how things are taken for granted on behalf of government, on behalf of us as people, on behalf of us as youth, or on behalf of entrepreneurs themselves. Thank you, that's all. बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आपने भी अपने विचारों को बहुत ही बखूबी रखा। आज हमने सुना चारों युवाओं को, कुछ युवाओं का मानना है कि आज भारतीय युवा जो भारत के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ना केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत देश का झंडा लहरा रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ युवाओं का इससे विपरीत मानना है। और आज अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज 90% भारतीय स्टार्टअप 5 सालों में शुरू होते ही बंद हो जाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो 80,000 भारतीय स्टार्टअप्स में से केवल 6,400 भारतीय स्टार्टअप ही फंडिंग इकट्ठी कर पा रहे हैं। इसका मतलब आज केवल 8% भारतीय स्टार्टअप ऐसे हैं जो फंडिंग इकट्ठी कर पाते हैं। इसका मतलब आज हमारी सरकार को ये समझना होगा कि जो कागजी तौर पे नीतियां बनाई जा रही हैं उन्हें कागज से ज़मीनी स्तर पर भी लाना होगा और उन्हें अमल करवाना होगा, ताकि हमारे युवा ज़्यादा मात्रा में स्टार्टअप शुरू करें और ज़्यादा मात्रा में हमारे आज भारतीय स्टार्टअप सफल हों, ना कि ज़्यादा मात्रा में शुरू होते ही बंद हो जाएं। क्योंकि आज हमारे भारतीय एंटरप्रेन्योर्स ही हैं, भारतीय स्टार्टअप ही हैं जो एक दिन हमारे भारत को आत्मनिर्भर भारत कहला सकते हैं। और वो कहते भी तो हैं कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है, अभी तो सारा आसमां बाकी है। विद दिस
हम आज की इस पैनल डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। मैं सभी चारों पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने आज हमें और हमारी इस पैनल डिस्कशन को समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान। पोत अगणित इन तरंगों ने डुबोए मानता में, पोत अगणित इन तरंगों ने डुबोए मानता में, पार भी पहुंचे बहुत से यह बात जानता मैं, किंतु होता सत्य यह भी सभी जलयान डूबे, पार जाने की प्रतिज्ञा आज बर्फ स्थानता में डूबता मैं किंतु उभरता सदा व्यक्तित्व मेरा, हो युवक डूबे भले ही है कभी डूबा न यौवन, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। युवाओं की जोखिम मोल लेने की इस उत्कंठा, इस आत्मविश्वास को सलाम करते हुए मैं अनुप्रिया आज के इस डिस्कशन में इस विषय पे बातचीत करना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय उद्यमियों के बारे में। उद्यम का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जरूरत है ज्यादा से ज्यादा क्षमता की कि हम अपने नुकसान एवं फायदे दोनों को झेलने की क्षमता रख सकें। पर कहीं ना कहीं ये जो चीज है आज हम में कहीं ना कहीं कम होती हुई जरूर जा रही है। आज हम लोगों का जो रुझान है वो सरकारी नौकरियों की तरफ ज्यादा लगता है। हम लोग दुखी हैं इस बात से कि क्यों सरकार रिजर्वेशन नहीं हटाती है कि मैं जनरल हूं, मैं एससी हूं, मैं एसटी हूं। हम लोग दुखी हैं इस बात से कि हमारे भारत में रोजगार के अवसर कम हैं। हम लोग दुखी हैं इस बात से कि हमारे भारत में जिस तरीके की पढ़ाई की जा रही है, सुंदर पिचाई जी ने भी कहा था कि उस तरीके को थोड़ा सा हमें बदलने की जरूरत है। हम सभी दुखी हैं इन सब बातों से, तो क्यों ना इन सब बातों से दुखी होने के बदले कुछ ऐसा किया जाए कि हम सब कुछ परिवर्तित कर सके। इलॉन मस्क को लगा था कि हम अपने प्लैनेट अर्थ पे ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने सोचा चलो मंगल ग्रह चलते हैं। लोगों को लगा कि उनका जो विचार है वो अच्छा नहीं है, ये पागल है, परंतु उन्होंने कंपनी स्टार्ट की स्पेस एक्स। आज आप सभी टेस्ला कार का नाम जानते हैं और आप सभी जानते होंगे कि टेस्ला से जो प्रॉफिट मिलता है वो बहुत ज्यादा है। किंतु ये बात बता दूं, आज उनकी जो कंपनी स्पेस एक्स है, जो कि शुरू ही इसी बात के लिए की गई थी कि हम मार्स पे जाएंगे, वो कंपनी आज टेस्ला से ज्यादा कमाकर उन्हें देती है। तो ऐसे ही विचारधाराओं की हमें जरूरत है और ऐसा नहीं है कि हमारे भारत के युवा ऐसा नहीं कर रहे, काफी उस क्षेत्र की तरफ अग्रसर भी हो रहे हैं। जैसे हमारे दीपेंद्र गोयल जी की बात चल रही थी, उन्होंने जोमैटो की शुरुआत की। श्री हर्षा मछीती जी हैं, फिर हमारे पास पेटीएम है, हमारे पास काफी सारी ऐसी चीजें हैं। हमारे पास अर्बन कंपनी है जो बहल जी ने शुरू किया था। हमें इन सब युवाओं को, जो कि बेसिकली हमारे सीनियर्स हैं, हमें उनके पथ पे चलना चाहिए और हमें सोचना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, एग्जैक्टली उनकी बात को कोट करना चाहूंगी, Youth should be converted from job seekers to job givers. हमारे भारत के युवाओं को जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला, व्यवसाय देने वाला बनने की जरूरत है। ये जो बात हम लोग कर रहे हैं वो मैं अपने वक्तव्य में कह चुका कि हमें अपने साथ साथ औरों को भी प्रेरित करना है कि हम उन्हें भी अपने साथ लेकर के चलें। प्रतिस्पर्धा का युग जरूर है, लेकिन इस बात को मैं एक बहुत छोटी से उदाहरण से जोड़ूं। मैं सफल लोगों की बात नहीं करूंगा, उसका कारण आज जो यहाँ सफल होंगे ना, उन सबके नाम कल अखबार में आ जाएंगे, लेकिन जो असफल होंगे इसका अर्थात ये नहीं कि उनके पास कोई आइडिया नहीं था या उनके पास कोई ऐसा विचार नहीं था कि वो दे सके। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो असफल जरूर होते हैं, लेकिन उनकी असफलता के पीछे कोई ना कोई सीख होती है। लेकिन एक कोरोना काल हमने जो भी देखा, बहुत से लोगों की नौकरियां छूट गई, बहुत से लोगों को घर जाना पड़ा, किन्हीं को निकाल दिया गया तो किन्हीं की ऐसी मजबूरी आ गई कि उन्हें छोड़ना पड़ा। मैं मुंबई मायानगरी की बात करता हूं, वहां का वड़ा पाव बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सब लोग उसके लिए एक तरीके से मैं कहना चाहूं कि दीवानापन है। हम लोग भी वहां जाते हैं तो मुंबई का वड़ा पाव खाना। एक व्यक्ति, उसकी नौकरी छूट जाती है, जब नौकरी छूटती है वो घर आ जाता है, मुंबई का रहने वाला होता है, मानव नाम है उसका, लेकिन वो सोचता है कि मैं क्या करूं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि लॉकडाउन खुल गया, लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकल रहे हैं, लोग बाहर का खाना नहीं खा रहे, लोग बाहर किसी दुकान तक नहीं पहुंच रहे। उसने एक काम किया, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहां पर गाड़ियां रुकती है, उसने एक सिटी वड़ा पाव नाम से वड़ा पाव का पैकेट तैयार किया और वो सिग्नल पर जाकर के उन गाड़ियों तक पहुंचाने लगा। आपको जानकर के आश्चर्य होगा
कि उसने इस विगत 6-7 महीने के दौरान उसके 3 साल की कमाई से ज्यादा का अर्न कर लिया। तो वो उसका एक इनोवेशन था, उसने सोचा कि मैं ऐसा कर सकता हूं, हार नहीं मानी। निश्चित तौर से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्तियां मुझे याद आती है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी दाना लेकर जब चढ़ती 100 बार गिरती, लेकिन फिर भी वो चढ़ना नहीं छोड़ती। एक कलमकार ने लिखा कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें और स्वार्थ साधना की आंधी में अरे वसुधा का कल्याण न भूलें और सील विनय आदर्श शिष्टता तार बिना झंकार रही और शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। सिर्फ शिक्षित होना ही आवश्यक है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम उस कृषि में आधुनिक पद्धति को अपनाते हुए पशुपालन और खेती में भी अगर युवा आगे आ जाएं तो निश्चित तौर से बहुत 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 उम्दा उदाहरण बन के आ सकते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वहां के एक उद्यमी, बहुत बड़े उद्यमी हैं, आप कहेंगे तो मैं विद प्रूफ आपको दिखा सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाया और अभी 2-3 दिन पहले अखबार में उनकी एक मोटिवेशनल स्टोरी छपी जिसमें एक पपीते के पेड़ से आप क्या उम्मीद करते हैं कितने पपीते उन्होंने लिए होंगे? एक पपीते के पेड़ से 150 क्विंटल पपीता उन्होंने लिया। आप और हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये सच भी होगा, लेकिन उन्होंने शिक्षा के साथ साथ उस खेती और पारंपरिक चीज में भी अपना ध्यान दिया। हम लोग नौकरी की तरफ जा रहे हैं, प्रतिस्पर्धाएं बढ़ रही है। एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं कि आज अगर आईपीएल का मैच हमें खेलना है तो कोई गारंटी नहीं कि हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन अगर एक किसी देश के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टेस्ट सीरीज हो रही है, निश्चित तौर से हमारे जीतने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सामने एक ही टीम है, वही 11 खिलाड़ी हैं, उनकी मानसिकता समझनी है, उनका ही खेल समझना है और उनके विरुद्ध अपनी चाल जमानी है और हमें जीत जाना है। एक तरफ लाखों की भीड़, एक तरफ चंद लोग। अब हमें अपना रास्ता चुनना है कि हमें किस ओर जाना है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास भी मिल जाएंगे। बड़े बड़े उद्यमियों की बात करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, लेकिन फिर भी मुझे गर्व है कि हिंदुस्तान में जन्मा व्यक्ति विदेश में जाकर भी अपना नाम करता है, लेकिन उतना ही दुख होता है कि हिंदुस्तान से शिक्षा प्राप्त करता है, आईआईटी आईआईएम में पढ़ता है और अपनी शिक्षा का उपयोग वो विदेश में जाकर के करता है और विदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है। अरे हम तो उस महाराणा प्रताप की संतान है जिसने राजमहल त्याग दिए और अपने आप को इस देश के लिए समर्पित किया। तो आप भी अपने अंदर राष्ट्र को समाइए। मैं गर्व से कह सकता हूं जब भावना राष्ट्र के लिए आ जाएगी तो हमारा भला भी होगा और राष्ट्र का भी होगा, लेकिन सिर्फ एक तरीके से, आत्मनिर्भर। इसका अर्थात ये नहीं, मैं फिर से कह दूं, सरकार भी ये नहीं कह रही कि स्वदेशी अपनाओ तो विदेशियों का बहिष्कार करो। उनसे सीख लीजिए, उनकी टेक्नोलॉजी अपनाइए, उनका ज्ञान लीजिए, उनका अनुभव लीजिए और उसमें कुछ अपना मिलाइए। जब कुछ अपना पास्ता और मंचूरियन और ये सब चाइना की चीजें हम कहते हैं, लेकिन वहां तो खाते ही नहीं। हमने इसे अपने आइडिया से बनाना चालू कर दिया और हर घर में अलग टेस्ट से बनता है। और वह भी अगर कोई धंधा या उद्योग उसका भी करना चाहे तो वह भी, लेकिन हमारी एक सोच ये हो गई है कि छोटा कार्य, मैं एमए हूं, मैं बीटेक हूं, मैं ये कार्य कैसे कर सकता हूं। जब तक कि मैं अंदर से नहीं निकलेगा और राष्ट्र अंदर नहीं आएगा, न तो हम कुछ कर पाएंगे न राष्ट्र को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं अपनी बात रखना चाहूंगी इस छोटी सी लाइन से कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस चीज पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। जैसे कि आपको पता है आज हमारे देश में हर एक व्यक्ति, जब भी किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप ये क्या करना चाहते हैं, आप बड़े पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हो, तो उनके पास 2 ही आंसर होते हैं। एक तो वो ये बोलेगा कि मैं ऑनर होना चाहता हूं किसी कंपनी का, जिसकी सोच बड़ी होगी वो ये जवाब देगा। लेकिन दूसरा जो आमतौर पर कहा जाता है कि मैं सरकारी नौकरियों में जाना चाहता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि यदि हम सरकारी नौकर बनेंगे तो हमारे देश में हमारी वैल्यू ज्यादा होगी, समाज वाले वैल्यू ज्यादा करेंगे और हमारे परिवार वाले ये कहेंगे कि अगर तू सरकारी नौकरी में होगा तो तेरी शादी अच्छे घराने में हो जाएगी। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीति है, या कुरीति बोलो या फिर अच्छी बात बोलो, क्योंकि ये कहा जाता है एक सरकारी नौकर अगर तुम हो तो वो आगे बढ़ेगा, और अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उसका क्या। आज बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। ऐसे कई व्यक्ति बैठे हैं जो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो खुद आगे बढ़ते हैं। और मैं भी उसी सोच को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि मैंने अपना ये करियर स्टार्ट किया था, जब मैं स्पीच देने लगी थी तब मुझे नहीं पता था कि इसका आगे जाकर मैं कहां तक बढ़ूंगी। बस मुझे ये ध्यान था कि मैं
बढ़ती जाऊंगी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मुझे बढ़ना है। बस बात सिर्फ इतनी है कि अपनी सोच अगर थोड़ी सी अलग रखे, थोड़ी सी विभिन्नता अपने समाज से रखे या फिर अच्छी विभिन्नता रखे, तो हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा जो बात यहाँ पर की जा रही है उद्योग की, इनकी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश में मुकेश अंबानी है। उन्होंने जब स्टार्टिंग की थी, उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। उन्होंने बस स्टार्टिंग की। तो सबसे पहले शुरुआत होती है आपके फर्स्ट स्टेप से। अगर आप पहला कदम बढ़ा लेते हो तो आगे बढ़ जाते हो, और जब पहला कदम आपका बढ़ता है तो आगे जाकर आपको एक सोच मिलती है और इसके अलावा सॉल्यूशन भी मिलता है कि आखिर आप क्या करना चाहते हो। कुछ जोड़ना चाहूंगी मैं आपकी बात में और आपकी बात में। तो आपने सबसे पहले शुरुआत की कि हम जानते सिर्फ उन्हीं लोगों को हैं जो सफल हो जाते हैं। अखबारों में सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम आता है जो सफल हो जाते हैं। परंतु यदि हम उद्यमियों की बात करें, केवल इसे भारत तक ना सीमित रखते हुए हर उद्यमी की बात करें, तो हमें ये बात जाननी चाहिए कि उद्यम के क्षेत्र में एक मानसिकता होती है, जिसे समझाने के लिए मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूंगी। क्या हार में, क्या जीत में, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो किंतु कर्तव्य पथ से भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। हमें हार जीत की परवाह किए बिना केवल विश्वास होना चाहिए। तो अपने आप पे मेरे पास कुछ नहीं है, किंतु मेरे पास एक विश्वास है। जब मुकेश अंबानी जी ने अपना कारोबार शुरू किया था तो उनकी मदद की थी धीरूभाई अंबानी जी ने, जो कि उनके पिता थे। यदि हम एक बहुत उद्यम के क्षेत्र में बात करें, नए इनोवेशन जिसे कहते हैं उसके क्षेत्र में बात करें, तो धीरूभाई अंबानी जी एक अच्छा उदाहरण हो सकते हैं। मुकेश अंबानी जी की कैपेबिलिटीज पे डाउट नहीं है। तो मैं अपना उदाहरण केवल इतना देना चाहती हूँ कि हम इस चीज की जरूरत नहीं है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। हमारे पास एक ही चीज होनी चाहिए, आत्मविश्वास, काम करने की शक्ति, अड़िग रहने की शक्ति। हार मानूंगी ही नहीं मैं। इलॉन मस्क की मैं अगर बात करूं, उन्होंने पेपाल स्टार्ट किया था। पेपाल जब उन्होंने शुरू किया, बहुत पैसे मिले। पैसे मिलने के बाद सबने उन पैसों का अलग अलग जगह पे प्रयोग किया। उन्होंने सारे पैसे अपने सपने को पूरा करने में डाला। केवल एलोन मस्क ही क्यों, जेफ बेजोस की बात करें, आज अमेज़न A to Z स्टोर से बदल के आज अमेज़न बन चुका है, और जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। तो उद्यमियों ने हमेशा इस बात को जाना है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप ही नहीं प्रवेश करता। कार्यों की सिद्धि के लिए आवश्यक है प्रयास। इन्हीं प्रयत्नों से, यत्नों से, जतनों से एक ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति जो आसपास अपनी हो रही दिक्कतों को ध्यान देके, अगर उसे लगता है कि मुझे ये दिक्कत महसूस हो रही है और वो चाहे कि ये दिक्कत मैं नहीं चाहूंगा कि बाकी लोगों को महसूस हो, तो उस क्षेत्र में कुछ काम करे। मैंने स्वयं ने काफी ऐसी चीजें सोची हैं। तो मैंने अपने ऐप का नाम भी सोचा है, द कृषि। मैं भी उद्यम के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हूँ। जल्द ही आप इसको प्ले स्टोर पे पाएंगे, किंतु तब तक मैं थोड़ा उसके सबसे जरूरी है ज्ञान। मैं एक इंजीनियरिंग की छात्रा हूं, तो जरूरी नहीं है कि ऐप बनाने के लिए मुझे केवल तकनीक की ही ज्ञान हो, ये जरूरी नहीं है। यदि केवल तकनीक के ज्ञान के साथ मैं उद्यम के क्षेत्र में विस्तार करने की कोशिश करूं, नहीं हो सकता। उद्यम के क्षेत्र में मुझे जरूरत है एक बिजनेस एप्टीट्यूड की भी। मुझे एक ऐसी मानसिकता की जरूरत है जिसमें मैं ये देख सकूं कि अगर मैं आगे चलूंगी तो मैं इस तरीके से आगे बढ़ सकती हूं, इन जगहों पे मैं पीछे हट सकती हूं। मैं अगर चाहूं तो सबसे पहले मुझे लोगों की मदद लेनी चाहिए, और हमें लोगों को जो रोजगार उत्पन्न करने की बात है, सबसे बेहतरीन जो समय होता है किसी नए उद्यम को शुरू करने वाला, वो होता है जब आप युवा हैं, जब आप कॉलेज डेज में हैं। उस समय पे आपके अध्यापक, आपके दोस्त सब आपकी मदद कर सकते हैं। उससे अच्छा समय एक उद्यम के विस्तार के लिए कुछ नहीं होता। यदि हम अपनी अच्छी मानसिकता के साथ थैंक यू। आपकी बात को मैं यहाँ से जहाँ आपने छोड़ा वहां से उठाता हूँ। निदा फाजली लिखते हैं कि नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, अरे कैसे दीमक खा गई ये मेरा हिंदुस्तान। इसका अर्थ ये है कि आज का युवा
आप में से 70% युवाओं के पूर्वजों के पास जमीन होगी। 100 एकड़ जमीन अगर मुझे या आपको मिलती है तो हमारा पहला दिमाग ये आता है मैं वहां प्लॉटिंग कर दूं, उनको बेच दूं और शहर में शिफ्ट हो जाऊं। क्या किसी ने ये सोचा कि मैं पे वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाऊं, मैं राजस्थान के राज्य पशु ऊंट को वहां पर पाल करके सरकारी योजनाओं का लाभ उठाऊं? तो निश्चित तौर से सरकारी योजनाओं में कहीं कमी थी तो वो स्टार्टअप इंडिया आया है। स्वप्रमाणिकता, अनुभव में छूट, कर में छूट, ये सब इसलिए दिया गया है कि युवा आगे आ सके। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि युवा आगे आए। जी मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि आपने कहा कि तकनीक होनी चाहिए, तकनीक हो या मत ना हो प्रयास करना चाहिए, उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि जब हम प्रयास करते हैं तो जरूर हमें विफलता मिलती है, जरूर हम हारते हैं। ये बात सच है कि हमें हार जीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किंतु मैं ये कहना चाहूंगी कि हार से जो सीख मिलती है उससे बड़ी जीत और कोई हो ही नहीं सकती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। युवाओं के लिए मैं सिर्फ इतने बात से अंत करना चाहूंगी। युवाओं ने सदा इस चीज को समझे है, अगर देखना ही चाहते हो मेरी उड़ान को तो जाओ, जाके जरा ऊंचा करो इस आसमान को। यदि इसी मानसिकता के साथ हम सभी चलेंगे तो हमारा देश ही नहीं विश्व भी प्रगति की ओर अग्रसर करता रहेगा। धन्यवाद। दिल्ली जिसका विषय है अंतरराष्ट्रीय और आधुनिक भारतीय व्यवसाय पर पैनल चर्चा। आपसे एक विचार साझा करूं। आज मेरे लिए हर्षित होने और प्रफुल्लित होने की बात यह है कि अपने शैक्षणिक काल में मैंने जितनी भी पैनल चर्चाओं का अनुभव तथा रसपालन किया है उसमें से यह पैनल चर्चा सबसे युवा पैनल चर्चा है। हम युवाओं के पास इतना अनुभव तो नहीं है, परंतु हमसे साझा करने के लिए तजस्सुम से भरे विचार और प्रश्नों का पिटारा जरूर है। मेरे विचार से यहाँ उपस्थित हर कोई इस विषय के बारे में तथा इसके मूल पहलुओं के बारे में पहले से ही अवगत है। इसीलिए समय को व्यर्थ न करते हुए मैं प्रत्यक्ष रूप से इस पैनल चर्चा का आरंभ करना चाहती हूँ। मेरे विचार से उद्यमी बनना और मजबूती के साथ एक नए युग की शुरुआत करने में अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। इसीलिए मैं चाहूंगी कि मेरे इस विचार पर आप में से कोई भी अपनी राय को साझा करे। आप में से जो भी अपनी राय को साझा करना चाहता है वह स्वतंत्र रूप से बोल सकता है। मैं चाहूंगी कि आप अपनी राय को साझा करें। मुझे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है। उद्यमी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा योगदान निभाती है। इसके कुछ सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलू हैं। मैं आपका ध्यान पहले नकारात्मक पहलुओं की ओर ले जाना चाहूंगी। इसमें कुछ ही लोगों को उद्यमी बनने का अवसर प्राप्त होता है, इसमें कर अत्यधिक होता है। और मैं आपका ध्यान सकारात्मक पहलुओं की ओर ले जाना चाहूंगी। उद्यमी क्षेत्र अर्थव्यवस्था को तकनीकी सेवा प्रदान करता है, नौकरी के अवसर प्रदान करता है, जिससे हमारे देश में बेरोजगारी कम होती है और हमारे देश का विकास भी तेजी से होता है। हमारे देश में गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। आपको ज्ञात होगा 1996 में हमारे देश की जीडीपी ऐतिहासिक रूप से गिरी और वर्तमान में हमारे देश की जीडीपी 23.9% तक गिरी है, जो कि गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। परंतु मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी जीडीपी विश्व में 5वें स्थान पर आती है और 2.94 लाख करोड़ डॉलर हमारे देश की जीडीपी है। यही राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को प्रस्तुत करते हैं। हस्तक्षेप करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या आप मुझे कुछ ऐसे उद्यमियों के उदाहरण दे सकती हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था की नींव पर उद्यम के बल से प्रस्तुत किया है? हाँ, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बहुत खुशी होगी। हम सभी जानते हैं हमारा देश उद्यमी क्षेत्र में कुछ कम पीछे नहीं है। संजय कुमार, श्रवण कुमार, ये दोनों ही 2 डायमेंशन नाम की कंपनी के ओनर हैं जिन्होंने ये कंपनी खोली, और रितेश अग्रवाल जिन्होंने ओयो रूम सामग्री पोर्टल खोला। आज ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत सफल हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के उदाहरण जो आज हमारे सामने हैं, जो
आज अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा सफल हैं। अब मैं अपने साथियों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, राजनीति। यदि मैं उस शब्द का उच्चारण करूँ तो हम सबके मस्तिष्क में केवल एक ही शब्द आता है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। अंतर्राष्ट्रीय एवं आधुनिक भारतीय व्यवसायों के क्षेत्र में राजनीति क्या योगदान निभाती है? क्या इसमें भी भ्रष्टाचार है या इसमें स्वस्थ राजनीति का उपयोग किया जाता है? मैं चाहूंगी आप इस प्रश्न का उत्तर दें। राजनीति के बारे में आप जो विचार रखते हैं वह उससे बिल्कुल ही अलग है। राजनीति सामाजिकता, नैतिकता, दार्शनिकता, विज्ञान सभी के बारे में अवगत कराती है। हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आज की राजनीति स्वस्थ राजनीति नहीं है, परंतु यदि भारतीय नवीन पीढ़ी अंतर्राष्ट्रीय रूप तथा राष्ट्रीय रूप से उद्यमी हो जाए तो राजनीति में मानव चमत्कार भी हो जाएगा। हमारे उप मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए गए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम की गतिविधि के बारे में विद्यार्थी जैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में जो आने वाले नेता हैं वे काफी रचनात्मक सोच के होंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि राजनीति ही है जो आज के नए युग की शुरुआत को मजबूत कर सकती है। यहाँ मैं कुछ पंक्ति बोलना चाहूंगी कि माथे पर आंचल बहुत छूटा पर तू उसका परचम बना लेती तो अच्छा था। यदि हम इसके नकारात्मक प्रभावों को छोड़कर सकारात्मक पहलों पर मेहनत करें तो समाज में नए युग की शुरुआत 100% होगी। मेरे लिए तो जिज्ञासा और ज्ञान से भरा क्षेत्र विज्ञान है, पर मैंने तो सुना है ये विज्ञान और वरदान और अभिशाप दोनों है। इसमें किसकी क्या राय है? इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगी। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता महसूस होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विज्ञान भौतिक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। विज्ञान को प्राचीन काल में भौतिक विज्ञान के नाम से भी जाना जाता था। विज्ञान एवं तकनीकों ने आज की युवा पीढ़ी को इतना आकर्षित किया है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी कदम से कदम मिलाकर विकास की ओर आगे बढ़ रही है। हमारी आज की युवा पीढ़ी उत्साह एवं उमंग के साथ विकास के पथ पर चल रही है और उनकी इसी उत्साह को बढ़ाए रखने के लिए सरकार ने भी उनका भरपूर योगदान दिया है। उदाहरण के तौर पर मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि पहले हम कच्चा माल सस्ते दामों पे दूसरे देश के लोगों को बेच दिया करते थे और उनसे बनी वस्तुओं को महंगे दामों पर खरीदते थे, परंतु आज की युवा पीढ़ी ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा इस्तेमाल और प्रदर्शन किया है कि हम उनके कच्चे माल द्वारा वस्तुओं का निर्माण स्वयं अपने देश में करते हैं। और ये विज्ञान और तकनीकी हमारे लिए वरदान है, क्योंकि ये सिर्फ युवाओं को ही आत्मनिर्भर नहीं बनाती हैं, बल्कि पूरे देश को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाती हैं। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी ने समाज के प्रति अपना क्या योगदान दिया है? इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश की युवा पीढ़ी ने उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ सांस्कृतिक प्रथाएं एवं मूल सैकड़ों वर्षों में विकसित होते हैं और व्यक्तियों के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करते हैं। ऐसे ही उदाहरण के लिए भारत में जातीय व्यवस्था ने हिंदुओं को 4 वर्गों में विभाजित किया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज उद्यमिता ने न समाज में हमारे भाईचारे की भावना विकसित की, परंतु समानता को भी बहुत बढ़ावा दिया है। प्रसिद्ध उद्यमी एवं पद्म भूषण सम्मानित धर्मपाल गुलाटी जी, जिनसे तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे, ऐसे ही फ्लिपकार्ट के संस्थापक विक्की बंसल एवं कृष्णाचार संस्थापक कृष्णा यादव, इन सभी ने न सिर्फ उद्यमिता में अपना नाम कमाया, बल्कि आज देश के लिए मिसाल कायम की है। किस प्रकार सफलता उन कदमों को चूमती है जो हर संभव प्रयास करते हैं और कुछ पाने के लिए पूर्ण निष्ठा करते हैं। ऐसे ही कामयाबी किसी को भी मिल सकती है, इसमें कोई छोटा बड़ा या अमीर गरीब नहीं देखा जाता, बस कुछ पाने की चाह होनी चाहिए। इस पर मैं कुछ पंक्ति बोलना चाहूंगी। मानव की बेहद मुश्किल है कठिन रास्ते पर चलना, मानव की बेहद मुश्किल है कठिन रास्ते पर चलना, पर नामुमकिन भी तो नहीं अपनी मंजिल को पाना। न गवार है मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना, न गवार है मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना, जो भी है पाना अपने दम पर है पाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। ऐसी ही महिला उद्यमी से आप सभी को मैं परिचित कराना चाहूँगी।
चाहूंगी प्रिया पॉल, जिसे आप सभी भली भांति जानते होंगे। इन्होंने राजेंद्र होटल्स की अध्यक्ष हैं इस समय, और सरकार ने भी इनकी हॉस्पिटैलिटी उद्योग में बहुत योगदान दिया है। ऐसे ही बेंगलोर की किरण मजूमदार शाह, जिन्होंने 1978 में बीकॉम की कंपनी शुरू की है। अपने विचारों को मैं आप सभी के समक्ष सिर्फ कुछ पंक्तियों में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उद्यमी बनना और उद्यम करने के लिए प्रेरित करना हालात की मांग है। आत्मनिर्भर बनना जीवन की मांग है, और कदम से कदम मिलाकर चलना समय की मांग है। तो आइए हम सभी कदम से कदम मिलाकर प्रकृति के पथ की ओर चलें। तेज दौड़ने वाला खरगोश कुछ पल चलकर हार गया। तेज दौड़ने वाला खरगोश कुछ पल चलकर हार गया। धीरे धीरे कर चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। कौन कहता है कि विकास के लिए सिर्फ गति ही जरूरी है? मित्रों, यदि हम सब अपने साथ साथ मिलकर अपने देश के विकास के लिए एक साथ खड़े हों, तो हमारा देश भी वापस से सोने की चिड़िया बन सकता है। आप सभी सदस्यों का अपने मतों, अपने विचारों तथा अपने प्रश्नों को साझा करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, तथा सभी श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद देती हूँ धैर्य के साथ इस पैनल चर्चा में अपनी भागीदारी निभाने के लिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश। नमस्ते, मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आप करिश्मा वारसी, आप हर्षवर्धन सिंह, आप अरुण यादव एवं आप सूरज चौहान जी। आज पैनल डिस्कशन प्रथम स्थान। आज का जो हमारा विषय है वो है अंतर्राष्ट्रीय एवं नवयुग के उद्यमी। मैं समझ सकता हूं कि जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो सबके दिमाग में एक सवाल ज़रूर घर कर रहा होगा कि वो है कि एक उद्यमी या फिर एक एंटरप्रेन्योर क्या है। जहां तक मेरी समझ है, एक एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति है जो नवाचार के माध्यम से उद्योग की स्थापना करता है एवं उस प्रक्रिया में आने वाले प्रत्येक रिस्क के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानता है। एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपके पास कोई डिग्री या फिर एलिजिबिलिटी की आवश्यकता नहीं है, मगर आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। और आज के टाइम में जो काम कर रहे हैं समसामयिक जीवन में, आज के अंतर्राष्ट्रीय एवं नवयुग के उद्यमी जो वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, बहुत ही प्रेरणादायक है। और आज के वह युवा जो अपने आप को एक उद्यमी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जैसा कि आप अंतर्राष्ट्रीय एवं नवयुग के उद्यमियों की बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा जेफ बेजोस का, जो Amazon.com के CEO और फाउंडर हैं, जिन्होंने जब देखा कि जब वो छोटे बचपन में उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पे लगातार यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को रेवेन्यू जनरेट करने का फॉर्मूला बनाया और उन्होंने उस चीज़ को यूज किया और ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाए जिस पे उन्होंने सबसे पहले किताबों को बेचना शुरू किया और धीरे धीरे करते हुए उन्होंने विश्व के सारे उत्पादों को बेचना शुरू किया और आज विश्व स्तर में सबसे आगे हैं। जेफ बेजोस जी के बारे में मैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहूँगा जिससे नए युग के उद्यमियों को सीखने की आवश्यकता है। जेफ बेजोस जी ने अपना व्यापार एक छोटे से गैरेज से शुरू किया था और उस समय उनके पास ना कोई विशेष प्रकार की डिग्री, ना कोई विशेष प्रकार का प्रशिक्षण था। बावजूद उसके उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अपने उद्यमिता को आज विश्व पटल पर स्थापित किया है। जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग बात कर रहे हैं, तो मैं एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी पर्सनालिटी से आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। मुझे लगता है कि हमारा ये जो पैनल इस नाम से भली भांति परिचित होगा, जिनका नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क एक ऐसे उद्यमी है जिन्होंने 10 साल की उम्र में कोई खास डिग्री नहीं की, 10 साल की उम्र में उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी जितना कि एक ग्रेजुएशन का बच्चा नहीं पढ़ता है। उन्होंने 11 साल की उम्र में एक कंप्यूटर गेम को डेवलप किया और उसे $500 में बेचा। उसके बाद उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप Zip2 नामक कंपनी के साथ शुरू किया। अनेकों संघर्ष के बाद उन्होंने अपने इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जिसका टर्नओवर $8 मिलियन था। उसके बाद उनके पास कई हिंड्रेंस आए रास्ते में, मगर वो आगे बढ़ते रहे। उसके बाद उन्होंने X.com कंपनी, एक ट्रांजैक्शन की कंपनी है, उसको लॉन्च किया। उसके बाद उन्होंने एक कंपेटिबिलिटी के साथ कोलैबोरेट करके पेपल से तो आप सभी वाकिफ होंगे कि पेपल नाम की कंपनी, एक वो भी ट्रांजैक्शन कंपनी है वर्ल्ड वाइड, उसकी स्थापना की। एवं उसके फेलियर के बाद वो फेलियर नहीं रही, मगर उनके शेयर होल्डर्स ने उनके साथ कुछ ऐसे काम किए जिससे उनका शेयर उसमें से निकाल दिया गया। फिर भी उनके पास $22 मिलियन का टर्नओवर था। अगर वो चाहते तो एक अमीर आदमी बन के बैठ सकते थे, मगर उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट में विश्वास करना सीखा था, इन्वेस्टमेंट में फोकस करना सीखा था। उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपेंड करवाया। उसके आगे उन्होंने, अगर मैं बात करूँ तो SpaceX नामक
वर्ल्ड वाइड टॉप कंपनी जो एरोनॉटिक्स की है उसकी स्थापना की। उसकी स्थापना के लिए उन्होंने कोई विशेष डिग्री या किसी संस्थान से जाकर उसकी शिक्षा नहीं ली, उन्होंने अनेकों और हजारों किताबें पढ़ी, उसके बाद उन्होंने स्पेस एक्स नामक कंपनी को स्थापित किया और एक बहुत ही प्रेरणादायक आज के नवयुग के उद्यमी को इनसे काफ़ी कुछ सीखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, आप जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्यमियों की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार आज हमारे भारतवर्ष में भी ऐसे बहुत से कुशल और कामयाब उद्यमी हैं। उदाहरण के तौर पर हम टाटा को ले सकते हैं। टाटा समूह ने एक बहुत ही छोटे से व्यवसाय साबुन, डिटर्जेंट साबुन और खाना पकाने वाले तेल से अपना व्यवसाय शुरू किया और आज वह चाय से लेकर 5 स्टार होटल, सुई से लेकर स्टील और लकटकिया नैनो कार से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण कर रहे हैं। फिर चाहे वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कम्युनिकेशन हो या फिर सॉफ्टवेयर हो, आज सभी क्षेत्रों में वह एक कुशल उद्यमी के तौर पर हैं। टाटा समूह का जो मुख्य उद्देश्य था वह था समझदारी, जिम्मेदारी और एकता से समाज के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, जिससे कि हर किसी को शरण मिल सके। रतन टाटा जी की एक फिलॉसफी थी, क्या कंपनी के लिए अच्छा है और क्या दुनिया के लिए अच्छा है। मुझे लगता है अगर आज के युवा, आज के नव युवा और आज के उद्योग, आज के जो युवा हैं और नए भारत के युवा हैं, अगर इस फिलॉसफी के साथ काम करें तो मुझे डेफिनेटली यकीन है कि हम विश्व स्तर पर उद्यमिता के क्षेत्र में भारत का झंडा गाड़ सकेंगे। जब आप युवा की बात कर रही हैं तो मैं एक मात्र 9 साल की उम्र के युवा अद्वैत ठाकुर की बात करना चाहूँगा, जिन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में अपनी खुद की एक वेबसाइट बना ली और 12 साल की उम्र में स्टडी रूम में बैठकर उन्होंने टेक्नोलॉजी कंपनी का स्थापना कर दी और 2015 में उन्होंने एपेक्स इन्फोसिस जैसी एक विशाल कंपनी का स्थापना की जो विश्व स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। इनसे आने वाली पीढ़ियों और उद्यमियों को सीखने और प्रेरणा लेने की जरूरत है। जैसा कि आपने प्रेरणा की बात कर दी है तो मैं आज आप सभी के सामने एक ऐसे प्रेरणादायक एंटरप्रेन्योर, लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर की बात करना चाहूँगा जिनका नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, संदीप माहेश्वरी जी। संदीप माहेश्वरी जी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो यात्राओं में विश्वास रखते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, लोगों के जीवन को कैसे हाई क्वालिटी दे सके उस पर विचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनकी पर्सनैलिटी ही सिर्फ आपके लिए इंस्पायरिंग होगी, उनकी कंप्लीट लाइफ भी आपके लिए मोटिवेशनल होगी। उन्होंने एज ए फोटोग्राफर अपनी शुरुआत की और मुंबई में उन्होंने देखा कि मॉडल्स के साथ कैसी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को उस स्तर से ऊपर उठाया और आज अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया कि उनका नाम वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, आप जिस तरह प्रेरणा की बात कर रहे हैं, इसी तरह हम शहनाज हवेली वाला जी का उदाहरण ले सकते हैं। आज वह दिव्यांग होने के बावजूद एक कुशल और कामयाब उद्यमी हैं और वह मुख्यतः विशेषकर वह दिव्यांग लोगों को हाथ से बने उत्पादों के गुण सिखा रही हैं, उनमें रोजगार के अवसर, उनको रोजगार प्रदान कर रही हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं। आज वह समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य कर रही हैं। बहुत अच्छा बात कही आपने करिश्मा। और आजकल जो उद्यमी है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। ये उद्यमियों की, ये एंटरप्रेन्योर्स की फ्यूचरिस्टिक विजन की बात हो गई है कि देखिए उन्होंने सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा बाईजूस, वेदांतो, अनअकैडमी। खैर वेदांतो तो रिसेंट में आए, लेकिन बाईजूस और अनअकैडमी ऐप ऐसे थे जो बहुत पहले लॉन्च किए गए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि हमारे आगे ऐसी भयानक महामारी आने वाली है। इस क्षेत्र में उनके द्वारा चलाया गया पहल शिक्षा, इस पेंडेमिक के टाइम में भी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कारगर साबित हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए गए डिजिटल इंडिया अभियान को ये संपूर्ण रूप से संतुष्ट कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है जिसका एडमायर करना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने डिजिटल इंडिया को एक पहल की, उसी प्रकार आत्मनिर्भर भारत की भी पहल की है और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आज हम युवाओं में रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं और उन्हें एक कुशल उद्यमी के रूप में हम उन्हें विश्व स्तर पर पहुंचा सकते हैं। और आज के उद्यमी आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से लोकल प्रोडक्ट को किस ग्लोबल स्तर पर पहुँचा सकते हैं और उन्हें एक विश्व पहचान दिला सकते हैं। हम सभी उद्यमियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज के नए युग के उद्यमियों को बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें मुख्य रूप से पूंजी की समस्या होती है। पूंजी की समस्या, सरकार की बहुत सारी योजनाओं के तहत ऐसे नए उद्यमियों को अपनी उद्यमिता को स्थापित करने के लिए अवसर मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और ग्रामीण स्तर पर एक कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है, जिससे उस उद्यमी, जो नए युग का उद्यमी जो अपना उद्यमिता स्थापित करना चाहता है, उस तक वो मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उद्यमी अगर अपने अनुभव के आधार पे अपनी उद्यमिता को स्थापित करना चाहता है और शुरुआती दौर में असफल होता है, तो ग्रामीण इलाके के समाज के लोग वो उसे हतोत्साहित कर देते हैं और वो अपनी उद्यमिता को स्थापित नहीं कर पाता है। आपने अच्छी बात की बहुत, लेकिन मैं मानता हूँ कि थोड़ी जटिलता है, थोड़ा संघर्ष है, थोड़ी कठिनाई है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के वीर जवान
द मोस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड -53 डिग्री सेल्सियस याचीन ग्लेशियर पे किस तरीके से दुश्मन के सामने सीना तान के खड़े हैं, वो अपने संकल्प से और अपने सिद्धि से किस तरीके से पूरी देश की सुरक्षा कर रहे हैं। अगर वो अपनी पूरी तन्मयता के साथ अपने कार्य को कर रहे हैं तो हमें भी इन जटिलता को, इन संघर्ष को, ये जो कमियां हैं उनको किराते करते हुए अपनी उद्यमिता को स्थापित करना चाहिए और संकल्प से सिद्धि के माध्यम से भारत को नए परिवेश में वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ उभरना चाहिए। बिल्कुल हर्षवर्धन जी ने आपने सही कहा। हमें इन समस्याओं और उद्यमियों की जो समस्याएं हो रही हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। कुछ समस्याओं का समाधान है, जैसे पूंजी इकट्ठा करने में उद्यमियों को बहुत दिक्कत होती है, तो हम क्राउड फंडिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सोशल व्यवसाय प्लेटफॉर्म है जैसे कि किकस्टार्टर, इंडीगोगो, जहाँ पर उद्यमी अपने आइडियाज़ और प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करें तो लोग उन पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, वहाँ से वो पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। और जैसा आप अरुण जी ने कहा कि लोग उत्पीड़न करते हैं, आलोचना करते हैं, उनके लिए उद्यमियों को इंस्पिरेशनल होना चाहिए, उनको अपने निगेटिव माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। उनको इंस्पिरेशन के लिए अच्छी किताब जैसे रिच डैड पुअर डैड किताबें और कुछ अच्छी मूवी देखनी चाहिए जो एंटरप्रेन्योर्स के लाइफस्टाइल पे बेस्ड है, उनको वहाँ से प्रेरणा लाए, जैसे बैंड बाजा बारात जिसमें 2 पार्टनर्स ने मिलकर एक अच्छे उद्यमी का काम किया, और गुरु और रॉकेट सिंह जैसे मूवीज़ को देखना चाहिए और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने से उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को पैदा करना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आज के उद्यमी वेस्ट मटेरियल का भी प्रयोग करके एक नया स्टार्टअप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बेंगलुरु और चेन्नई की प्लास्टिक से बनी रोड को हम देख सकते हैं। अगर हम एक किलोमीटर स्टेट हाईवे को प्लास्टिक को अगर हम कैटलिस्ट और तार के साथ मिक्स करके रोड बनाएं तो लगभग हम 2 से 3 हज़ार किलो प्लास्टिक का प्रयोग हम 1 किलोमीटर स्टेट हाईवे के लिए कर सकते हैं। और मुझे लगता है इससे 10 साल के अंतर्गत ही प्लास्टिक की सुविधाओं में, प्लास्टिक की समस्याओं से हमें निजात मिलेगा और हम नए रोजगार लोगों को प्रदान कर सकेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को हम सुदृढ़ बना सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात करी करिश्मा, लेकिन इसी सीरियल में आपने अभी कुछ देर पहले लोकल प्रोडक्ट के बारे में जिक्र किया था, तो उस लोकल प्रोडक्ट में हाल ही में चलाए गए इसी टाइम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा चलाए गए एक पहल, एक अभियान वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल इनिशिएटिव के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने भारत के ओरिजिनेटेड प्रोडक्ट के विभिन्न सेक्टरों के बारे में बात की है। उन सेक्टरों में उन्होंने खादी पर भी विशेष जोर दिया, एवं विशेष जोर तो उन्होंने सब पे दिया है, लेकिन खादी से मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि खादी हमारी एक ऐसी परंपरा है जो हमारे राष्ट्रपिता और हमारी स्वतंत्रता संग्राम से आ रही है। उसके बाद हम अगर देखें तो हमें अपने भारत के कुछ प्रोडक्ट, हमारे उद्यमियों को इस पे इनकरेज करना चाहिए कि हम कैसे अपने भारत के प्रोडक्ट को वैश्विक ट्रेड पर ले आएँ, जिसमें हम ब्लैक टर्मरिक का उपयोग कर सकते हैं, गोल्डन स्वीट पोटैटो का उपयोग कर सकते हैं, और लोकल फॉर वोकल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस पर मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाए गए अभियान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का नाम लेना चाहूँगा, जिसमें गोरखपुर के टेराकोटा जिसे GI टैग तक दे दिया गया है, वो हमारी सिर्फ संस्कृति नहीं है, वो रेवेन्यू जनरेट करती है, वो हमारी ऑक्यूपेशनल संस्कृति है। उस ऑक्यूपेशनल कल्चर के थ्रू हजारों युवाओं के बीच स्वरोजगार के अवसर प्रदान हुए। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा विषय इस पे बात करने के लिए, और ये काफ़ी अप्रिशिएबल है। और अगर हम आगे उपाय में आता हूँ मैं आपके, अगर आगे हम उपाय पर आते हैं तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है या जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचने में बहुत ही परेशानियाँ हो रही हैं, तो वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन की कमी कह सकते हैं। तो हमें एडवर्टाइजमेंट की मदद लेनी चाहिए, और जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ हमें लगता है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन को इन सब योजनाओं में इंक्लूड करना चाहिए, एकेडमिक स्टाफ को इन सब योजनाओं में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये 2 स्टाफ ऐसे हैं भारत के जो प्रत्येक स्तर के लोगों तक, रूरल से अर्बन तक डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, तो ये सब योजनाएं स्पष्ट तौर पे फलित होंगी। करिश्मा, आपने अभी अपशिष्ट पदार्थों से उसे कैसे उद्यमियों द्वारा उसे एक नया रूप देके उसे उद्यमिता को स्थापित करने की बात कही, उसमें मुझे अभी मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया हरियाणा के वीरेंद्र यादव का। वीरेंद्र यादव ऐसे उद्यमी हैं जो कृषि के क्षेत्र में अपशिष्ट पदार्थ यानी कि पराली को इकट्ठा करते हुए उसे फैक्ट्री, जैसे पेपर की फैक्ट्री, पेपर मिल की फैक्ट्रियों में ले जाकर दे करके उससे 1 वर्ष में लगभग 50 लाख रुपए जो है अपना कमाए। और उसी बात को जोड़ देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कहा कि पूरे देश के किसानों से मैं आह्वान करता हूं कि वो इस अभियान को, प्रत्येक क्षेत्र के किसान इस अभियान को लागू करते हुए, जिससे 2 फायदे होंगे। पहला, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, और दूसरा, उससे पैसा कमाते हुए अपनी उद्यमिता को स्थापित करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने गैर कृषि गतिविधि और आपने वोकल फॉर लोकल की बात की, इससे ये हम इसको आगे बढ़ाते हुए ये केवल
आत्मनिर्भर भारत और किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत को हम सक्षम बना सकते हैं, उसको हम केवल अपने एमएसएमई के माध्यम से जोड़ सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग जो हमारे भारत की जो मूल अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पूरे देश के रोजगार में 45% रोजगार केवल एमएसएमई के माध्यम से आता है। जो हम निर्यात करते हैं उसका 50% केवल हमारे एमएसएमई के माध्यम से आता है। जो हम अपने उद्योग लगाए हुए हैं उसका 90% केवल एमएसएमई के माध्यम से आता है। इस तरीके से हमें अपने उद्यमिता को आगे बढ़ाते हुए विनिर्माण क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में एमएसएमई के माध्यम से उद्यमिता को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे आज के युवा उद्यमी को कार्य करना चाहिए। किस तरीके से हम आज के इस अर्थव्यवस्था में वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करते हुए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को तय कर सके, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21वीं सदी जो होगी वो भारत की सदी होगी, क्योंकि संपूर्ण विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। अब हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर जैसा कि हम सभी ने काफ़ी डिस्कस किया इस बारे में, तो मुझे लगता है कि भारत में प्रत्येक सेक्टर में, चाहे वो मेडिकल हो, एजुकेशनल हो, ग्रामीण हो, फूड हो, प्रत्येक सेक्टर में उद्यमी अपना कार्य कर रहे हैं, उद्यमिता पनप रही है और वो ऐसे उन्नति की ओर अग्रसर एक पौधे की तरह है। और वो बहुत ही जल्दी, जैसा कि आपने कहा कि 21वीं सदी में वो बहुत ही जल्दी ऐसा वृक्ष बनेगा जो छाया देने के लिए तत्पर होगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि अब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज रेडी टू बिकम अ मेजर इकोनॉमिक पावर ऑफ द 21st सेंचुरी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि हमें सभी क्षेत्र में भारत में उद्यमिता के अवसर हैं और इस उद्यमिता के माध्यम से हम अपने मूल जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के माध्यम से महात्मा गांधी जी के स्वरोजगार योजना, नानाजी देशमुख के सर्वभूतो हिते रतः ग्रामोद्योग योजना के माध्यम से, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा से इस नए उद्यमिता के युद्ध में उद्यमी को आगे बढ़ाते हुए पूरे विश्व के लिए रोटी की टोकरी बनने का काम करेंगे। उत्तराखंड। आज पैनल डिस्कशन में हमारे साथ हैं शुभ अग्रवाल और आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय एवं नए युग का उद्यमी, इंटरनेशनल एंड न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप। तो शुभ, व्हाट यू थिंक अबाउट इंटरनेशनल न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप? So what basically an entrepreneur is, he is a businessman who starts his own business and particularly on financial risks. But what we should understand is that he is not just a businessman, he is a transformer of the society. A businessman's job is not just to earn profits, he transforms the market. He creates supply, he creates demand as well, and he is the supplier of the commodities. We should not consider an entrepreneur as just a profit-earning filthy man. They work for the social causes too. We can take the example of Dhamil Seth, CEO and founder member of Pharmacy. He is working with a campaign called Ekagrata, which aims at making the country this poverty-free and corruption-free. Okay, so what's your idea? So the idea which I use, the name which I use for my idea is Profitable Packaging Solutions, and the tagline is Solutions Without Confusions. We are in a decade which is about to see some radical and progressive changes in the industrial sector, and we have been very privileged to be a part of a movement called Vocal for Local. And this movement can be made successful only with the help of new manufacturers. But there is a problem in the Indian market which the new manufacturers are facing. That is regarding packaging. Every manufacturer is a master of the goods that he produces, but he is not a master of packaging. He has to compete with the established MNCs and the existing manufacturers in the country. But the Indian market has a problem of high one-time costs for packaging. It includes cylinders, offset plates, the dies which have to be made for packaging. And these are the problems that are faced by manufacturers these days. A recent example was seen during the lockdown phase of the pandemic. There was a huge demand for sanitizers, and a lot of pharmaceutical firms switched to making sanitizers. They had all the raw materials, the bottles to pack them, but they lacked in the flip-top caps which are used in sanitizer bottles. Alongside the plastic for injection molding firms, they started to producing the flip-top caps which are in huge demand. Both of the trades could have profited a lot from the business, but they lacked contacts with each other. What our venture supports is that
the manufacturers should be linked to the plate makers, the cylinder makers, the designers, who are the background or the hidden heroes of this industry. And they should get the recognition too. They'll profit from their business, and the manufacturers will get their jobs done at low costs. How do you look Indian market for new entrepreneur? For a new entrepreneur, the market is widely open. There are a lot of trades where people can indulge in. The online business is not yet established in the Indian market. We have all the companies from international, they are all the MNCs which are set up in India. There's a huge scope for new entrepreneurs in the Indian market. Thank you. Thank you. नमस्कार आप सभी को मेरा। चलिए कुछ हिंदी में भी बात करते हैं, अच्छा लगेगा। मेरा नाम पंकज पांडे है, मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूं और मैं एक गांव में रहता हूं जिसका नाम गुरुड़ा है। क्योंकि अगर बिजनेसमैन बनना है तो गांव का नाम भी आना चाहिए, क्योंकि हम गांव से हैं तो गांव से शुरुआत होगी। पिथौरागढ़ तो बहुत बड़ा है। तो मैं गुरुड़ा का निवासी हूं, एक गांव का। तो मैं यहाँ पहुंचा हूं तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि मैं गांव से शायद पहला आदमी हूँगा, तो ये सबसे बड़ी बिजनेसमैन की यही बात है। तो जो टॉपिक है आज उद्यमी है। इंग्लिश में शायद कुछ बोलते होंगे, लेकिन मुझे उद्यमी पता है तो मैं उद्यमी में बात करूंगा। उद्यमी होता क्या है, कहाँ से वर्ड आया, करता क्या है, ये काफ़ी एक पजल टाइप का है। लेकिन उद्यमी वह होता है, वो रिएक्ट तब करता है जब सभी सोए रहते हैं या जब कोई नहीं करता है, उस समय जो उद्यमी होता है तब रिएक्ट करता है। वो एक संरचना बनाता है, एक प्लानिंग बनाता है, आइडियाओं का एक समूह बनाता है और उसी वक्त मार्केट में लाता है जब उसको जरूरत होती है। मैं सिर्फ एक डेमो देना चाहूंगा, एक एग्जांपल। हम सभी लोगों को पता है नोटबंदी हुई थी, सभी लोग परेशान थे, बैंकों में लाइन लगा रहे थे, कैसे अपने नोट चेंज करें, कैसे क्या करें। उस समय जो पेटीएम था, गूगल पे था, उसने अपना रोल वहां पे अदा किया था। किसी उद्यमी ने, किसी दिमाग वाले ने ही वो बनाया होगा, लेकिन उस समय तक किसी पब्लिक को पता नहीं था कि इसका यूज कैसे करना है, क्या करना है। सभी लोग लाइन में लगे हुए थे। लेकिन पेटीएम, गूगल पे, ऐसे सब ऑनलाइन जो भी ये चीजें थी उसी समय मौजूद थी, सबके पास मौजूद थी। यूज तब आया जब उसका वक्त हुआ। उद्यमी वही है, वही बात बोलते हैं, उद्यमी वही है, वो समय आने पर अपना जब दिखाता है, पत्ते दिखाता है, तो अपनी बाजी पहले ही जीत चुका होता है। There is no special need for new idea. We can utilize the old ideas with an improved service. We can add up. Like as I have told the example of Zomato and Swiggy. So earlier taxis were existing like Ola, and there is no company like Ola is existing earlier, but they have just changed the problem into opportunity. Like somewhere if we go, then if all on railway station, like ढेर सारे टैक्सी वाले आ जाते हैं, भैया कहाँ चलोगे, कहाँ चलोगे। अगर कोई स्ट्रेंजर जा रहा है, he don't know about that place, then they just मतलब वो उससे 500 की जगह 2000 ले लेते, तो उसे पता नहीं था पहले। लेकिन nowadays if we check on Ola, then whatever is the price, no one can't cheat us. So he just changed. Actually, this is a problem faced by the Ola owner. Once he was traveling from Mumbai to Pune, and during his journey, the taxi stopped, and he asked for more money, extra money, and he denied. Then he just leave him in between the way and gone. So this strikes in his mind, and he just make something like, first he tried for Ola trips to plan for vacation, but he failed, and then he started the Ola cabs. And nowadays we know that Ola cab is doing business in more than 24 countries, and it is expanding. So this is he makes problem into opportunities. We does not need so many new ideas, or we do not need to copy idea from other country. Whatever is a problem here in our country, we can just understand it, the need of user, what user exactly want, and in suitable price. Like my friend said about Ritesh. Ritesh is a owner of Oyo. So firstly, he started he start taking renting a house, 10 to 15 houses only. And after when he get fellowship from Thai fellowship of $1 lakh, then he just expand his business to almost all over the India, and not only in India. In India, it is at number 1, and in world it is in top 10. So he just means using these services, no one can cheat you. You can just go and check about the rate, and one another thing that I would like to mention is,
we have to make opportunity from the problem. Whatever the problem society is facing, we need to study that problem. We need to conduct, see some stats and data, and after calculating this, we need to add a extra chain, extra point in between problem and solution. And if you get the exact solution in favorable price, then you will be successful. Thank you. देश के युवा वर्ग को रचनात्मक और सकारात्मक गतिविधियों में शामिल रखना हमारी प्राथमिकता रही है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के साथ मिलकर एकता, सुरक्षा और फिट इंडिया मूवमेंट के प्रचार हेतु राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अंतर्गत इस वर्ष कई आयोजन किए गए। सिक्किम में समुद्र तल से 7000 मीटर की ऊंचाई से देश का पहला स्पोर्ट्स स्काई डाइविंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। ग्रुप कैप्टन जय किशन के द्वारा यह उपलब्धि कोरोना योद्धाओं और राष्ट्रीय युवा महोत्सव को समर्पित रही। HMI के सहयोग से कुछ और एडवेंचर स्पोर्ट्स के कार्यक्रम आयोजित हुए और हाल ही में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार किए जाने का विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास भी किया गया। 75 घंटों तक चला ये अपने तरीके का अनोखा आयोजन देश की आजादी के 75 सालों को समर्पित था। आइए देखते हैं इन आयोजनों की कुछ झलकी।
Last 10 meters. Shoot. आज आईएमएफ द्वारा एक और रोचक कार्यक्रम का आप आनंद ले सकते हैं। यह है भारत का अपना एडवेंचर फिल्म फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में भारतीय पर्वतारोहण से जुड़ी भारतीय फिल्म मेकर्स द्वारा निर्मित कुछ शॉर्ट एडवेंचर फिल्म्स आप देख पाएंगे और कुछ भारतीय ट्रैकर्स के दिलचस्प इंटरव्यूज भी आप देखेंगे। तो आइए आनंद उठाते हैं इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की ओर से एडवेंचर फिल्म फेस्टिवल का। In recent years, adventure film festivals have been gaining in popularity. Several international film festivals, including BAM, are featured in India, but sadly, content from the Indian Himalaya is virtually absent. Several of us at the Indian Mountaineering Foundation felt it's time to establish an India-centric, homegrown festival. That's how the IMF Mountain Film Festival got established 4 years back. The unique aspect of the festival is that only films shot in India are screened. Since the inception of the festival, it's interesting to note the reaction of the key stakeholders. Filmmakers now feel that they have a platform where their work gets recognized. Several athletes get featured in the films, which gets them fair amount of visibility. And above all, we are able to showcase the enormous adventure potential in India. Previous editions of the festival have shown films which include kayaking, mountain biking, ice climbing, snowboarding, trekking, mountaineering, bouldering, and rock climbing. Also in the mix are films on climate change and mountain culture. The IMF Mountain Film Festival takes place every February at the IMF campus at New Delhi. 40 films get screened in various categories. Filmmakers are on hand to introduce their films and take questions.
Close to 10 films get awards as the best films of the festival. After the festival is over, an India tour is announced, which runs for about 10 months, and close to 50 screenings take place across India. It's estimated about 20,000 adventure lovers view the films every year. I would now like to share details with you of 5 films which have been popular at the IMF Festival since its inception. All the films featured are available online, and I would encourage you to watch them. 70% of the Himalayas are in India, and what the films demonstrate is the enormous potential for adventure sports across India. I would encourage you to follow the IMF Mountain Film Festival. Thank you for your attention. घरे पड़ी नहीं रे जेजू बढ़िया चीज सबसे बढ़िया है वो Juju is bird and Rana is king. So to locals, this is king of birds. The local people love it so much that they want to have their own local taxonomy. जंगले राणा राज्य देवने जाए इनका खील के आ देवने It has a black head and orangish face and orangish throat, and it has a prominent black on its body with white spots. It's a high altitude pheasant. Western tragopans live in a very complex habitat, because of which it's very difficult to study and observe in detail their ecology in the wild. किसी ने आज तक वेस्टर्न ट्रैगोपैन का घोंसला नहीं देखा। वेस्टर्न ट्रैगोपैन मेरे हिसाब से इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये वेस्टर्न एशिया में पाया जाता है और बहुत ही लुप्त होने वाली प्रजाति है। The western tragopan is the flagship species of my home state, Himachal Pradesh. It's only found in the smallest slivers of the western Himalayas and nowhere else on the planet. The Great Himalayan National Park is one of the last pristine landscapes left in India, and many hidden creatures live here, sharing their home with the king of birds. I wanted to film this mythical creature, and what I got to experience was the passion of a few people who are trying their best to protect it. The guards patrol these forests even in the dead of winter, living far away from their families and mobile network. They brave the cold, the bears, and poachers without any safety net. Filming the more common pheasants also felt rewarding in this landscape. For months, getting close to these birds seemed impossible. But somehow, I had a feeling we would find them. A few months into our research, on a cold April morning, I saw him for the first time. It was only a fleeting glimpse. एक आधा उठा जान लोग का के मारने अब मारी भाई लोग के तब नहीं किछ रहे मारने लाई यहाँ राज्य Human disturbances is a very major reason why the habitat of the bird is shrinking. We are losing a lot of biodiversity across the globe. Reversing this process should start somewhere.
The most important value is roadlessness in the park. Great Himalayan National Park Conservation Area, GHNPCA, that will be about 3000 square kilometers, which is remarkable. Because nowhere in Western Himalayas we see such a compact area devoid of habitation. So that is an ace in conservation. There is another group of people who are losing their sleep for this bird. They are the ones who breed them in captivity. This bird is facing local extinction, and having a reserve population is critical to its survival. This is the only conservation breeding center in the entire world where Western tragopan is housed and bred. The Western tragopan is a highly dimorphic bird. Basically, by looking at the bird, you can make out which is the male and which is the female. चले गए बेचने, ये तो पालतू है, हमने खुद पाला हुआ है, इनसे ज्ञान है। मेरा नाम रोशनलाल डोगरा जी, मेरे को अभी 20 साल हो गई पेंट्री में काम करके जी। कोई पता नहीं थी इसके बारे में, इनके बारे तो फिर तो क्या सीखा जी, इनको देखा वे फिर मिट्टी में खेलते हुए देखा जी, कैसे खेल रहे, नहा रहे मिट्टी में, फिर अपने को कैसे वो सुस्तियाँ फैला रहे, तो टांगे यूं कर रहे, तो फिर दाना पानी देखा वे कैसे खाते हैं। There's a very unique thing about them. These are elevated nesters. They were always given ground nests, and the moment I knew that they were elevated nesters, that was the trick to be done. Since the past 7 years, we have actually managed to breed 37 chicks by natural means, which is in itself a great achievement. It's not easy to breed a shy territorial bird. Watching the Western tragopan's display is a treat for the eyes. Throughout the mating season, he relentlessly pursues his potential lover. Showing off his buffed body many times during the day, he nudges her ever so slightly. He has an elaborate and graceful dance routine that ends in a somewhat awkward chase. The vibrant wattle with the streaks of blue and red is striking, but the female isn't always impressed. I couldn't believe he let us see him for so long. He truly was the king of the jungle. What are the wild habits of the tragopan? Why does the tragopan species occur in a particular habitat, and what are the factors which actually govern this is something which really needs to be studied. Well, if we look at bird conservation in India, we lack fundamental understanding about many bird species and their status and distribution. Pheasants are one such group of birds which are very poorly studied. With its very rare and elusive nature, tragopan makes it to the top of the list. In these forests, biologists are making new discoveries to this day. And people need to see these animals in their habitat before they're gone. You have to love your park.
So in case you love your park, you will do anything for it. My search was finally over, but the story of this bird has only just begun. Thanks, Munmun. That was a great film. I wanted to ask you a few questions. So first up, I wanted to ask you that what is the process you follow for selecting the subjects of your film? Thank you, Mr. Maninder, so much for having me and for having this film. So my family comes from Himachal Pradesh, and I grew up in the mountains. But and I used to love animals. But whenever I used to watch television shows about animals, it was always about tigers and lions, which don't even exist in our landscape. So I grew up with things like this on my wall. This is a Western tragopan. And I always wanted to know what this bird is. I knew it was important, but I had no other idea about what it is. So what I like to film now is to bridge that gap of that huge knowledge gap which exists, where people who live in other landscapes in the world can actually see the animals which exist in their backyard on their TV. So I like to focus on these neglected species. Okay, that's interesting. So the other question was that I've trekked in the Great Himalayan National Park, and I know it's one of the areas where the species is found, and it's very tough to spot. Obviously, we didn't see one when we were there, but I wanted to ask you, what are the challenges involved in filming this particular the Western Trangopan? So yeah, it exists. The bird is endemic to a very small sliver of the mountains. So it exists in a very difficult terrain. So I would say one of the biggest challenges, like any expedition, is to just plan the expedition, do the logistics, tell yourself it's a mission worth going on. And once we went there, it was cold. So figuring out if your equipment would stay, your batteries won't die, there's nowhere to charge. So you're actually out there in the wild. This is one of the last places where we camped out. There's no electricity, nothing. So those are the logistical challenges. And I think another challenge is also convincing yourself to stay optimistic, because any locals I would sometimes meet would just say that you're never going to find it. Like, this is a worthless mission. Like, why would you do this? So just staying on that path was a huge challenge. And then, of course, when you're out in the wild, you have to be a little careful about brown bears and black bears, which are always in the area. So you have to, when you wake up really early in the forest, you have to be a little careful about not crossing paths with them. Did you follow any different approach in terms of actually finding out the bird compared to other people who have tried to film it in the past? No, I think, I think one of the major thing is actually to spend that much time there, right? And just to know, a lot of people would go birding, it may not be worth their time to spend months to find just one bird. So I was very clear that I wanted to video document this bird, which hadn't been done properly before. So my mission was very clear. And I think one of the things I do differently in my practice is giving equal importance to scientists and local people. So a lot of my crew always deals with, so I do take scientists with me, or actually I follow the scientists as they're doing their work, but I also give equal importance to the local people that live there. And I just stay very open to the information that I would get from both sides. Have you come across any evidence of any hunting of the Western Trangopan while you were there? Yeah, sadly, that's why I wanted to share this image. Hunting in these areas has reduced a little bit over the past couple of years. But what you can notice here next to the Devi in the mount, which are the local Devi Devtas, which are very important to the people of Himachal, you'll see these
this little flower, this red and black flower, which has been offered by people, that's actually made of the jujurana's feathers and its plumage and its neck. So it used to be hunted a lot for that. That was because it's such a rare bird, it was considered so lucky to be able to offer something like this. So I think this practice has sort of stopped now. These are just very old flowers also they've had. But I do get occasional images from Pakistan or Kashmir or Chamba and other areas of hunting still happening. Great Himalayan National Park just happens to be one of the safer places though. So things sometimes, always don't go to plan. So what was your plan B as you were planning this particular expedition? This was the ideal. This wild shot close-up of a Western Tragopan was something I almost didn't think would happen, and it did, so that's great. Because the mission was for National Geographic, there was almost no chance of not coming back with the animal. But my plan B was to film it in captivity. Because I knew there were scientists who were breeding this bird in a captive situation, I thought I would be able to at least document them there, because even that is sometimes very difficult. You'd think it's easy to film them in a zoo or something, but it's a very different situation to like a normal zoo. So that was my plan B, that at least I can get some behavior from captivity. That why is this captive breeding going on? I'm not clear on that. What is the objective of this exercise? So our generation is currently living through the 6th extinction of species. What that means is that species are getting wiped out very fast. So in India, the Central Zoo Authority has selected a couple of important endangered species, which they know are very close to extinction or are really declining in number. So they're breeding them. So it is a part of the zoo, but they're not open to public in the sense that they have these beautiful animals which are being bred, but they try not to imprint humans on them, hoping that one day they'll have a protected area where they could release them and they would live as wild as possible. So it's called conservation breeding, and it's not done for any entertainment sort of purpose. So they're kept very secludedly and they're treated with utmost, just a lot of care, yeah. That's interesting. And one final question, Monmon, was that what was the role of your teammates who were supporting you in terms of tracking down the Western Tragopan? Yeah, I think I'm just, as the expedition leader or film director, I think you're nothing but just a follower in a way, the biggest part I bring in is the time, the money, and just the collaborative spirit. What I try to do is get the others together who can actually take me there. So the local people who actually live there, they know where the bird is, they know all the knowledge about it. And if they're willing to share it, then that's how the film would get made. So I think like 100% of the credit goes to them. In most wildlife documentaries, I would say that's true. So the local people were, say, 50% of the story, and the 50% would also be the scientists who are working there. So I did work with some young scientists from Wildlife Institute of India. Meghna was one of the people who was camera trapping throughout the landscape of that national park. So she knew every chappa of the mountains, and she told me these are the places where I think it's ideal for you to camp out if you must. And then the local people sort of would add on to that knowledge. Yeah. Okay. Thank you, Monmon, and a great film, and we really enjoyed seeing it. Thank you. Thank you so much for having me. है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए आज आप सब लोगों को पता है कि क्यों आए हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने पर पिकनिक के साथ साथ साफ सफाई भी करेंगे हम लोग आज शॉप पे पहुंचेंगे रास्ते में जो लोग हमें मिलेंगे उनको भी एजुकेट करने की कोशिश करेंगे
सबको बताएंगे हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। हिलनी चाहिए शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी गाँव तक पहुँचाना है गार्बेज को, और वहाँ से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आएगी जो कि गार्बेज को डिस्पोज करेंगे प्रॉपर। कहाँ जा रहे फिर हम आज? हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मजे करने आए हो ठीक है, पर थोड़ा रिस्पॉन्सिबली मजा करो। बियर की बोतल उठाकर ऊपर ला सकते हो तो नीचे लेकर भी जा सकते हो। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं निकाल लिया जी, ये तीसरा बैग है। सूरत बदलनी चाहिए सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब टाइम टू टाइम हमें सब करते रहना चाहिए। अगर हम लोग की जिम्मेदारी लेंगे तो लेगा कौन। मज़ा तो आता है, पर हमारे साथ साथ लोगों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये सब हमें देखे, हमसे सीखे, थोड़ा बहुत अपने घर में करें। ज़रूरी नहीं है कि हमारे ट्रेल पे ही आके साफ सफाई, अपने अपने घर में काम शुरू करें ताकि इवेंचुअली हमारा देश साफ हो सके। भाई क्लीनिंग ड्राइव का एक और फायदा है कि हमारी योगा ऑटोमेटिकली हो जाती है यहाँ पे। हो जाएगा माउंटेन में हमारा अपना घर है, अगर अपने घर को साफ रखते तो पहाड़ों के भी साफ रखेंगे। पर्वत सी पिघलनी चाहिए हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। निकलनी चाहिए। Yeah, Pradeep, that was a very inspiring film. Really enjoyed seeing it, and I wanted to ask you a few questions. So the first question was that if you look at the at Healing Himalaya, can you give us a little background that how long back it started and what is your scale of your current operation? So I started this campaign Healing Himalaya in 2016, and since then we've been majorly focused on cleanup campaigns. So far we have organized about roughly 300 cleaning drives, and then we cleared mostly solid waste, which is most of the plastic waste, MLP, PET bottles and glass bottles. That is about approximately 800,000 tons so far, which is a huge amount, because let me share a fact with you that when we clean 1 kilograms of single-use plastic in the Himalayas or anywhere, we have to bend down about 350 or 400 times just to pick up 1 kg of single-use plastic. So the amount of Surya Namaskars that we do while cleaning drives, it's beyond imagination. So yes, and we focus mainly on the track routes wherein the footfall is very heavy. Every year with the number of tourists is above 40 or 50,000. So that's where we focus on, and this is how we started, and I'll tell you more about it in the coming days. Pradeep, that's quite interesting. I like your Surya Namaskar comparison. But what is the reason for the build-up, Pradeep? What is happening? Who are the people mostly responsible? Is it trekkers, trek companies, villagers? How would you, quantify it? I think it's because of everybody, mostly the trekkers also, the local communities also, the travel companies also. And if there are people who are, educated enough, then they lack some sort of infrastructure to dispose their waste.
So I think it's a contribution from every side, especially the travel companies and trackers. I would say that if they are aware enough, educated enough, and they come from the cities and they have some sort of, SOPs in their cities, standard operating procedures to mitigate the solid waste problem. So they should bring that habit and into the mountains also. They should educate the local communities also. Yes, and local communities also are also to be blamed because they try and capitalize on the situation that everybody is trying to travel or trek in the mountains. So at the same time, they also need to revive their dying belongingness towards the Himalayan region, especially the trek routes, because they carry all the food and all the requirements to such an altitude. They can also bring back it to the base village when it's empty. So I think everybody should come together, and especially the travel companies, they should motivate their travelers and trackers that they need to take care of their garbage whenever they are so far or so deeper or so higher in the Himalayas. So, if you were to just go a little deeper into the subject, Pradeep, what would be your key message to the trek organizers? You know, the ones who are putting up these treks. If you're saying 40,000 people are coming to some very hot spots, we could call them. Obviously, that garbage is getting collected. So, what should be their role? I see a lot of competition amongst these companies, and the best parts will be if they start competing in terms of becoming more green, trying and minimize their waste while all the trackers heading up to the mountains. First, I think they should support this idea that we need to create some system wherein somebody is there to take care of that garbage, somebody is there to rescue if somebody is stuck, and create these options, eco-friendly options, and educating their travel guides, trekking guides regularly. They should intervene at this level, that a couple of months, once in a couple of months, they should try and engage with their local travel guides, trekking guides, and then educate them to such a level that they become eco warriors for them. Things like that they should do, and travel and trekking for a purpose. They should promote this idea also at the same time, because we always go and try and nurture from the Himalayas or the mountain or the natural resources, but we never try and give it back, in a way. So they need to, for example, there's a company who's organizing about 100 treks in a year. So they should at least organize 5 treks wherein their main idea is to clean that trash. They should do something like this. And 5 tracks out of 100 should be focused on the solid waste management or cleanup drives. So things like that should be focused on, and because see, they earn their bread and butter from the mountains and the Himalayas, so they need to take care of this. Yeah, Pradeep. And yes, I agree with you. And one of the aspects to discuss is about volunteering. So a lot of trekkers do come to the mountains, but the concept of volunteering is kind of weak, like what you suggested. So if you're a trekker who's going to go into the mountains in the future, what is your message to trekkers, that what should be their role so that this kind of issue doesn't crop up in the future? They need to focus on very basic things, such as there are so many eco-friendly alternatives. Try and not to buy those so many PET bottles. There's no point buying Gatorade at a track route. You will not get that sort of energy. So rather carry your own bottle. Very simple but very effective. In a track such as Kheer Ganga, when we start cleaning, in just 2 days we collect about 6,000 to 7,000 PET bottles. That includes water bottles and also these energy drinks and etc. So if everybody starts using their copper bottle or glass bottle or steel bottle, how easy it will be for us, in a way. And then when you go for a trek, wherever you eat, you always ask for the empty packet. If you eat Maggie at some dhaba or restaurant, ask the restaurant owner that give me my Maggie packet, empty Maggie packet, I'll take it back with me. And the third and the most important, stop littering, because once you throw the garbage in the hills, it goes downhill with the rain or the wind. And it's very difficult for anybody who wants to clean that area. Very, very difficult. For example, for us, if we trek and clean, the track route of 10 kilometers will eventually become of 20 kilometers. So that's very tough for us. So your small contribution will, make a lot of positive impact, and especially it will make us make
very easy for us. Our Surya Namaskars will be limited in a way. Now, I've also seen that aspect that if you drink mineral water, which is regular mineral water, it actually doesn't have minerals, and you're only having pure water, and it leads to dehydration. So it's better to have water purification tablets, have bottles with built-in water filters. I think that can really minimize the damage. So it comes the next question. They should, get this message also. If they are educated enough, if they live in the cities, they come with some sort of background, they should connect with the local communities and also try and educate them, provide them alternatives. So that's the, best way to travel somewhere. So Pradeep, the next question which comes to mind is that after all this waste is collected, what is the waste management process in the hills? What is the status on that, and how is the state of Himachal Pradesh, for example, dealing with that? So currently, see, our government is majorly focused on the large-scale solutions, wherein they have this approach of building waste-to-energy plants. So try and collect all the waste and then create electricity out of it. But to support that idea, we need to create these small-scale units, and that's where we are focusing on. So major focus of our work is in the rural Himalayan region, where the footfall is again very heavy. And we try and build these small scale waste collection centers, or we can also call them MRF, material recovery facilities, as is shown in the picture. So what we can do with these MRFs is that we create this storage capacity of the waste. And this one particularly is in Raksham, it's Sangla Valley. And we'll collect waste from 3 villages and also from the army and ITBP units. And now what we'll do after collecting is there are multiple options. So we need to collect waste directly from the household immediately. Once everything is used, then you should give it to the waste collection center so that it has the maximum potential in it. Waste is not waste until it is wasted. It's a very basic saying in our field. And if we throw it away, then it is wasted. But if we use it, we can make it a part of circular economy or make it a part of value chain. So this is the idea behind these small scale waste collection centers. We'll collect the waste, segregate them, and we'll store it up to a certain level. And then what we'll do is we can utilize into multiple directions. Maybe we can give it to the waste to energy plants because they always need very well segregated, neat and clean garbage to incinerate and produce electricity out of it. Maybe we can make multiple options, such as we can make chairs out of it. We can make tables out of it. And then we can also use it for road construction in the remote areas, because every year we have to build our road again and again. And if we add plastic into it, the durability will increase of the road. So there are multiple options, but first we need the system in between. There are recycling units, there is garbage there, but the system in between is always missing. So these MRFs, these waste collection centers will be very handy, to collect, segregate, store, and utilize. And so, Pradeep, it was nice to see the Prime Minister, commending you on your work you have done. So that was quite a nice thing to happen. And how will that help you going forward? What do you feel? I think after a terrible 2020, that was the best parting gift for me. And it was quite a surprise for me also, because I didn't know that this is going to be featured in Mann Ki Baat. But yes, it gives me a lot of, and it encourages me, and also will try and do more this year. And I think because of the work that he has done so far in the Swachh Bharat mission, so the idea aligns, and maybe it will give a good momentum for our work. And the things which were supposed to happen in 5 years, now it will happen in a couple of years, I think. So it's a positive thing to promote people who work in far-flung areas, who are very not very popular in their subject, but because of him we are getting the limelight. And I think I'm very thankful and humbled. Right, Pradeep, thank you, and do keep up the good work, and we look forward to your continued success. Thank you. Thank you so much. Thank you.
रोशनी के बगैर तो आदमी अंधा है, ठीक है। तो इन गाँव के लोग, बच्चों, बूढ़े, बच्चे, हर कोई, हमने देखा कि रात को अंधेरे में बैठ के और हाथ में दिया लेके खाना पका रहे थे, और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो हाथ में दिया लेके उसका धुआं निकल रहा था। तो हमें सच में ऐसा लगा कि इन गाँव में बिजली लगाना कितना ज़रूरी है। Ning jo fa jare ono. Ni ki su tu pola jano de kion se mang putu ba. पहले तो मैं ट्रैकिंग करता था, 9 साल ट्रैकिंग किया था टूरिस्ट के साथ। ट्रैकिंग के समय बहुत सारे गाँवों से गुजरना पड़ता था, तो उन गाँवों में मैंने देखा कि लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं होता था, वो लोग दिया जला के बैठते थे। हमने सोचा कि अगर हम इन गाँवों तक मतलब लाइट या इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सके तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रिशियन का काम करना शुरू किया हमने। पहले सर्वे के लिए गए और हमें पता चला कि कौन कौन से गांव है जिसमें सच में बिजली नहीं है और उन गांव वालों को ज़रूरत है उस बिजली की। अपने स्टोर से उसमें सारा सामान लोड करके गाँव उस गाड़ी के साथ, सामान के साथ गाँव में निकल पड़ते हैं। हम जो प्लान लगाते हैं वो डीसी माइक्रो ग्रिड, जो 100 वाट, 75 वाट, 150 वाट और 250 वाट ऐसा होता है। और हमारे इसमें धूप सबसे मेन, सूरज का होना बहुत ज़रूरी है कि उस गांव में हम जो पैनल लगाते हैं उस पर धूप पड़े ताकि हमारा बैटरी चार्ज हो जाए और उनको बिजली मिले। गाँव वालों का एक तो लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है। वो मतलब देर रात तक, जैसे कि पहले क्या होता था, वो लोग जल्दी जल्दी खाना बना के जल्दी सो जाते थे, बच्चे भी सो जाते थे और पढ़ भी नहीं पाते थे। तो फिर इससे अभी बच्चे भी देर रात तक पढ़ सकते हैं और गाँव वाले भी मतलब बुज़ुर्ग भी देर तक काम कर सकते हैं। Đang tháo trên đường tục này, ta chỉ là tiền gửi đi đó trong tàu quay nữa rồi. 망청하게 샹샹구 창을 샹샹구 어떻게 할래?
아니 투라니오라 필요한 차나 저걸 미미 섬섬 차가서 미jel도 그때 만에 어디 렛 배드면서 미jel도 거저 이 필요한 랩보다는 많이 판독 전문도 겨. te khon iska mane ngaje yulpi chon mane ning tapane thuji chi juniale jizano khon exam tangmi na khon ikha security na ngaja light on tans na pura fitting pura clear chos na khon security ale 비질 도대파 터질 꾸직 다는 이 망했던 거 이상 라바지 땅매가 ये हमारा 87th गांव है जिसमें हमने अभी तक लाइट लगाया है। Thanks, Paras. That was a great film and we enjoyed it. I wanted to ask you a few questions so that we get to know about some details additionally. And first question was that what is the broad location of the work you have done in Ladakh and how long has it been going on? We wanted to just know that. So we started in 2013, so almost you can say 8 years back. And we are currently focused in Ladakh and Meghalaya. So for the last 7-8 years, we were in Ladakh, across Leh district, Kargil and Zanskar. And now we've moved to the Garo Hills of Meghalaya, sir. Okay. So just wanted to also understand that what is the cost of setting up a solar system in a village, in terms of, doing all the work and how long does that whole process take? So what we set up is a DC microgrid, and it's basically a combination of a solar panel, a battery and a charge controller. And this basically per household, it doesn't cost more than 50,000 rupees. But the idea is we are not giving light, we are giving electricity. That's the difference. So when we conduct an expedition, we ask the participants or the travelers to fund this thing. So normally a village would cost somewhere between 5 lakh rupees to 15 lakh of rupees based on how big and how far the village is. But it's a safe electricity, DC, no shock. So it's very, very optimized and efficient electricity, sir, based on solar. Also, we were just curious to know that the villages where the electricity has got established, what have been the significant changes in the lifestyle of the villagers? So over these 8 years, we have electrified more than 140 villages, almost more than 100 villages in Ladakh itself. And the impact has been profound, sir. They used to use either kerosene lamps in the areas of Zanskar or very small solar home lighting system. So when you introduce a LED based system where they can also, have a LED TV along with it, the impact has been profound. You can actually, when these Ladakh houses are very, very big, 15 rooms. So when you have LED light in every room, it becomes a very interesting concept of having an infrastructure development. And overall, we have seen the migration from these villages have stopped to regions like Leh and Padam, sir. And, in terms of education, are children able to study longer? Is that relevant? Or in terms of work, does that help them in terms of some work which they're doing because of electricity, or that's not got impacted much? So in the area like Changthang, where there's a lot of Pashmina herders, there they do a lot of weaving at home. So for their handicrafts or in the area of Chilling, which is near the Zanskar River, there are copper artisans. So for artisans, this is a boon because they used to use candle lamps and oil lamps, and sometimes it used to spill over. So for the students, we have also electrified a lot of hostels because most of these villages, they have one school. Among 10 villages, they'll have one residential school. So I think the impact has been profound, sir, because earlier the government has given them lights, but that was 15 years ago, 10 years back, and there used to be only one CFL or something. Now what we are doing is we are making sure that the LED goes into each and every room, so everyone can study and sleep and do work as well, sir. So another aspect, which is relevant to a lot of the young folks is the aspect of social entrepreneurship. So, Right,
you know, this is a classic case of social entrepreneurship. And what I was keen to know is that what is the reaction of your team being now perceived as change makers? So when we started this out, we didn't know we were a tourism enterprise or an energy enterprise. But the whole idea was we wanted to combine tourism and technology to make things happen in the Himalayan part of where our fathers served. Because I'm an ex-army officer's son, and some of my colleagues also had their father in army. So the idea was to see if we can do an impact, a tangible impact, and still earn revenue out of it. So all the villages which we electrified, sir, we have almost 40% of the villages we have set up these homestays, sir. So that we can allow more income coming to the villages, and in turn we also earn from the same thing. So we set these up, and then we've also introduced astronomy in most of these villages, because in Ladakh you have the clearest night skies, sir. So empowering the youth to use their villages as astronomy hubs for future as well, and also to create a sustainability, you have set up these charts as well. So for us, I think the main motivation is to travel, go to the remotest part of the world, and see if we can create a tangible impact, at least in energy access. That's great. And the final question, Paras, was that how do you engage the local youth in your work of electrification, and how do you make these installations sustainable in operation? So the whole idea is that we are just a team of 7-8 core members who are non-Ladakhi. The rest of the team, all engineers, all staff is all Ladakhi, sir. So we make sure that whatever we set up in these villages is actually assembled in Ladakh. So all the lights, all the material is first, the raw material is sent to Ladakh, they're assembled there. And then they are trained to set up these villages. So in these year of pandemics in 2020, I just went to Ladakh once, but we have already electrified 17 villages in Ladakh, sir. And I have been part of not even one single electrification. So the idea is to pass on the baton to the local community, because we want to move out so that they can create their own thing. And you train them and give them, it's be Meghalaya or Ladakh. The idea is to create more entrepreneurs or micro enterprises, so that in future they can take care of all whatever we have electrified, or even homestays. So we train the women on electricians as well as homestay owners. So tomorrow anyone else can join them, and they don't leave the villages, they stay where they are, and they get livelihood in wherever they're operating, sir. Thank you, Paras. I think it's a very interesting film, and the whole project sounds most interesting, and I wish you all the best for the years ahead. Thank you, Maninder, sir. Pleasure talking to you, sir. The only thing that may remain in my head is just rubbish. That rubbish that you breathe and and just like, that's rubbish, go, and then just jump. I started off from Bombay, Pedro started off from Bangalore. Both of us took the train to reach Delhi. We hung out in Delhi half the day. We took a bus to Shimla a few hours early in the morning at the bus stop. Took another bus and came to Rampur. So it was pretty hectic the first few days. So that way I'm not a big travel person. I don't like to be seated in one place for a long time. I don't know how it works. For me, it is very scary. For them, they were like chilling, they were like, zoo, zoo, zoo. I had never seen it before. मुझे चलते जाना है बस
I was wondering what that guy said back there, that anyone can jump with a parachute. You just need enough motivation or enough willpower to do it. What do you think? I think that's the same with anything else in life. You have enough motivation, you can do it. But with parachutes, I mean, I honestly don't know. No, parachutes don't fail. People do. He's like, what I do, we have broken bones, we have scars, stuff like that. But I don't think I don't want that any should scars be, or... yeah, exactly. That should be a way to prove that you're doing something crazy. So I have some drawings from 1997. So I was about 3-4 years of age. And there's like skydivers in there. I'm like, what? I don't even remember drawing this. Like, it's crazy. Like back then, I had that in mind already. That's awesome. And I've always liked flying things. I've always liked airplanes, paragliders, hang gliders, you know, skydiving, everything that has to do with air and being in the air and just, I don't know, Peter Pan stuff. I loved it. It's been a rough ride for me, especially convincing family and all. My parents are not gonna understand this, but maybe when they see all this, you know, when they see my community, they understand, okay, you know, this guy is happy doing what he's doing. Nice. They say base jumpers never grow old because they die young, or, you know, they die before graying out. But that's not true. I met some really amazing old-time base jumpers and they're still jumping. It's just that you need a level head and be super responsible. Pedro has a tap installed inside his mouth. I knew he could be a good partner because he wouldn't jump anything and everything. So there was a method to all the crazy stuff we were doing, you know. And it's good to travel with like-minded people just because you're not taking unnecessary risks, and that was important for me. Put her mind in me. We were undefined but free, function in the discotheque at sea. मेरे माइंड में थी वो, मतलब यही चीज़ है, तरंडा डांग, जो मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है जब भी आप किन्नौर, स्पीति या फिर कोई भी एरिया, इंटीरियर एरिया में आप जा रहे हैं तो। Konkankara was easy. It was just a big, like, tongue. It's a big concave surface. I think this is definitely more technical. There's not much margin for error over here. We can't be stupid, we can't take too many risks. All we saw were images and we didn't know how it's going to be. The image that I had, I used some calculations based on, you know, just extrapolating the height, and in fact we got like 200 feet more than what I had calculated, so that's pretty cool. Since it has never been done, it's like it has never been tested. So we're going to be like the test dummies. So the landing areas that we had there, we have to like really stick it. It's like small, everything else just big boulders where you can break your legs. You know, it's beaches down there. We're gonna land on the beach. It's like... Both of us are super stoked. Something really cool happening in this region. And oh yeah, so Pedro's gonna go handheld. He's gonna do a PCA for me.
3, 2, 1. Base. In the flight, I'm not thinking for sure. It's just, there's a switch. It's like entering on a different dimension. Controlling your emotions, nulling out all negative thoughts. I think it's like meditation. Oh fuck! Are you hurt, Sergeant? No, I'm fine. I stuck the landing. It's just that I came heavy on my leg, but it feels fine. So I was going towards Sajid. Whoa, man! And then I realized, whoa, that's so small. 180 degrees, nope. I'm not going there, man! Fuck that shit! Altitude, size of the landing area, and where's the other landing area, like all that situation combined, it's just an instant reaction. So it's like shooting, just like, you know, trying to center, boom. Fuck yeah! Hey! Yeah! Couldn't have done better. We've nailed our first base jump in Himachal Pradesh. I'm fine, super excited. Adrenaline kicking in now. Hopefully we shouldn't have any swollen bones. Very good landing. Good. Awesome. I'm proud of myself for that. Pedro, come in. Pedro. Pranav is a really nice guy and he's been guiding us through the mountains, which we don't know so well, and he does. This is his home. And so me and Sajid, in that specific time that we were like down there, like back and forth and crossing the river to one side and then just walking barefoot, across the river, oh, freezing water, and then cross, we're like hungry and thirsty. And then Pranav comes down here, guys, come on, let's go here. And he took us up, so that was awesome. Yeah. Without him, we would have been stuck in the landing area the whole night. Yeah. So this is the first jump in Indian Himalayas. Nice. Itchy. I know. The thing, the leaves. What are they? Sting weeds. Sting weeds. What are they called? Bichu grass. Bichu, yeah. I like bichu. The bichu grass exit. Bichu grass. Bichu grass exit. I like that. Bichu grass exit. Found it. I landed hard on a big boulder, especially my right leg. Luckily nothing was broken, but I could feel it right behind my knee on my ligaments side. So I decided to take it easy and not take any further big risks, and just give my leg a rest for a few days. Part of the adventure.
But Pedro was really keen on opening some more exits because there were some really beautiful vertical walls around the region where we made our first jump. Don't go, because then you get distracted with the footage, eh? Careful. People look at it and they're like, oh shit, this guy's gonna jump, he's got only a backpack. And he's like, what's gonna happen? It's the same with the motorbikes. Like, oh, they're spinning around and around. What if they fall? What if this happens? What if that happens? Oh my God, look, 1 inch away from something really, really bad happening. So whenever we see something like scary or out of the norm, people get attracted to it because yeah, it is extreme and it is scary. Because we're actually so close of turning something which is really cool into something really, really bad. You see yourself as an entertainer? Entertainer? I guess so. The whole concept is people fearing the unknown. People are eating unhealthy and having heart attacks early on in their lives. Isn't that risky? Driving, okay, that's one of the biggest killers. When we are sitting in a car, we don't think about it much. That's been accepted. The argument is that, yeah, but we're doing that for work, we're doing that for food. And I tell them, these things that I do, it's like food for my mind. शो खत्म पैसा आ जाए Yeah, Sajid, that was a great film, and we really enjoyed it. I wanted to just ask you a few questions. What was the exact location of the jump which was featured in the film? The location is known as Trandadhank. It's in Himachal Pradesh, I think somewhere towards the northern, northwestern part. I'm sorry, northeastern part, my bad. And there's a bit of history to the location. So the mountain was carved by some 1,000 or hundreds of Nepali workers that had been brought in by the Britishers, I think. And quite a few actually lost their lives during that whole process. So there's, I don't know if it's a ritual in Himachal, but they've built a temple around that location as well. So when we were jumping, we could see that. And otherwise, yeah, for me, I found the location online and I sent across the data to the foreplay team. As you can see in this image, I did the extrapolation by calculating, okay, that's the cut in the mountain. So basically a big lorry or a truck can pass through. So the minimum height you need for that is at least 25 feet, right? And that time the height I got was somewhere around 500 feet, which was lesser than the actual height. So the actual height was much more, around 600 feet plus. So that worked in our favor, basically. Okay, so I wanted to ask you also that as a base jumper, how do you ensure that you don't bang into the cliff from where you're jumping off from? Okay, so there's a lot of research that goes before you plan a jump, right? Like you need to, first of all, you need to ensure that the landing area exists. It's not treacherous like boulders, trees, power lines, etc. And then of course the point where you're going to be jumping off from. So
is it accessible? So of course, in our case, you could just take a car and go to the edge. The cliff was decently vertical enough for us. We still, just for our sake, we put a plank over there to jump off it. So as you can see in this image, that's Pedro jumping off. And a normal human, when you jump, you can just take, like, with one step, you can create a separation of 6 to 8 feet. If you run and jump, you can create much more. So that's the horizontal separation bit. The other thing we need to ensure is the gradient of the wall. So in our case, it was pretty vertical. Like over here, you see a bit of a gradient, but it was pretty vertical after that. When you're not wearing any kind of a body suit, which increases your glide ratio, then you need to ensure that you take a good enough leap and you're clearing the mountain in the right position. One critical thing over here is maintaining your body position, because if you go head down, or if your legs go down first, like, I mean, Pedro right now is in like a pretty good angle, so your deployment and everything takes place smoothly. But if he was head down, or if his legs were going first, then there can be deployment issues. So these are things you train for before you come and jump. So like everyone says, hey, I can do this, I can also go and base jump, and I don't disagree, you can go and base jump. But then knowing this, how your body position needs to be, or what to do when something goes wrong, that is what the training does. So that includes, like, if your parachute opens the other way around, what do you do quickly then? Do you go for your brake lines, or do you go for your control lines, or do you go for your risers? What do you do? So these are the key Another factors over there. question was that what is the reaction time for the deployment of the parachute, once you've kind of taken off on this scenario? Sure. So every jump has, there's a unique setting that we do for every type of a base jump that we do, be it buildings, be it antennas, be it mountains, be it bridges. So higher the mountain, like for example, in Norway, the mountains are like 1 kilometer high. That's 3,000 feet. The setting that I use over there is sort of similar to a skydiving setting. So the deployment takes place easily, slowly, and everything works, hopefully, if you've done your homework correctly. Because you've already reached terminal velocity. In this case, we haven't. We are still like super slow. It's like falling into dead air, right? So because I was the first jumper, kind of like the guinea pig over here, we did something called as a pilot chute assisted jump. So you can see Pedro holding the pilot chute or the bridle in his hand, and all I had to do was just jump, right? So the extraction will automatically happen because I trust Pedro and he knows what he's doing over here. That gives him enough data. Okay, this cliff is easy to jump with the pilot chute held in his hand. So the jump that he did was he threw the pilot chute directly from his hand. He didn't pack it inside his container. When you're doing higher jumps, then you pack it inside your container, and you take a decent amount of free fall, and then you deploy. Over here, our free fall was probably 1 or 2 seconds max. Maybe Pedro had more of that, 3-4 seconds. But yeah, I hope that helps answer your questions. What are the other risks involved in such an endeavor? Okay, as I said earlier, the base jump, any kind of a base jump doesn't start like by you just looking at a building or a mountain, right? You have to study different factors. So these are some of the factors I've listed over here. Your equipment, having the right kind of equipment for that jump, packing it correctly, ensuring that it should function the way it is designed to. And skydiving and base jumping equipment has gone a lot of iteration over the years, and what you use right now is some of the the best equipment you can get. So its job is to perform and to land you safely. Mistakes happen mostly because of human error, misjudgment, or complacency as well. The other crucial factor is, of course, weather. Understanding weather pattern. What are the winds doing? That's something we did in Trandadhank also for like 2 days. We tried to figure out which directions are the winds blowing, and what happens during morning, what happens during evening, what happens during afternoons. In fact, the window for us was somewhere around afternoon because things had calmed down, especially in valleys. Once the sun is rising, you have the katabatic and anabatic effect. So
you want to, you need to keep a watch on these things as well. Of course, the last and one of the most critical factors is physical and mental conditions. Sometimes we don't pay attention to these things. If you're tired already by walking on top to the top of the cliff, and you feel tired or exhausted, or you didn't have enough water, just back out. The mountain's always going to be there. You can go back, jump, do your jump again. Having the right people around you, having positive thoughts around you. Sometimes, like, I've seen people, they'll continuously talk about death, like, oh my god, they'll start freaking out. It happens with a lot of new people at times, or like experienced people just joking with new people, right? So you need to control all these factors and understand what your limitations are. One thing I take care of are legalities as well. So I try not to do anything illegal, especially in India, just because, law and order and all that stuff, plus our airspace is highly regulated, right? So I'll try to jump in places where the permissions already exist, or deep into the mountains where it's not a big issue. So, yeah. Okay, nice. And just a quick response from you on how is base jumping getting popular? Are there a lot of base jumpers around? How is the sport developing? To be honest, it's a beautiful sport, but it's a completely mind game. So before you think about base jumping, also you need to, at least the institutes that I know of, they require that you have 200 to 300 skydives before you even apply for a base jumping course. So they do pay attention to these things. There are some camps that happen around the world where you don't need all this experience. They just ensure, you can keep your body stable and do that. But I don't usually recommend that route, because you need to, first of all, it's a new medium for humans. So you need to be comfortable in this medium. The other thing is, you can, like, the dangers are like super imminent right in front of you. So you know what you're dealing with. You need to be able to control all these things. In India, I think there are around 5 active base jumpers, and that includes me, some of them ex-military, and a few civilians in those. Okay, nice. And just a last quick question from you, sir. Is there any difference in base jumping if you look at Himalayan setting as compared to something in the Sahyadris? There definitely is. So every terrain has its own unique challenges. It can be altitude. It can be the way the valley system works over there. So for example, the Sahyadri jumps are mostly around sea level or slightly above sea level. So the air is much more denser than what I would see in the Himalayas, right? Because you're up in high altitudes, the air is slightly more thinner. So your flying dynamics change, your free fall dynamics change, etc. These are just some of the examples. Like if you look at a building over here, the way winds function around this building is different because there are rotors that get created around them. The way this mountain is from Norway, the way you jump off this mountain and fly away from the mountain, that's a different type of a jump. Windmills, antennas, bridges, etc. They are also, because this is very open, they're more fun, but definitely they are also challenging. And of course, you need to check the legal aspects for these objects. Great. That's really interesting and a great film and a nice chat. Thank you, Sajid, for your time. Thank you so much. Thank you. But this Do you know what it takes to truly be wild? To listen to your heart, even if it makes you go after things beyond comprehension. Imagine the ground that takes your weight, breaking down under it, as you hang off from your limbs that have been numbed by icy wind. Imagine being hit by one of the countless waves in the infinite ocean, and where you might find yourself when you open your eyes. Imagine tearing through the downhill dirt where trees and boulders pass like wind in the hair. Scary, isn't it? Who doesn't have fear? I think fear and failure is a driving factor for me. I chase things. Like if I find something that scares me,
nosedive, go right into it. Every time I do it, I just say, okay, I'm scared, but let me do it. The whole community, baru kau kadang kam lu gajing support ka, but lagi ni ki, but naka hard work jong ka athlete hi ka labinya cakaman. The standard that people set for women is really low. Through this project, I found out about so many women in sports that I didn't know that were actually practiced. Many of the women who are in this project are just girls doing their thing. They're not getting anything out of it. They're just passionate about it. And these women are the only ones in their field. Anisa is downhill mountain biker, and she takes part in competitions in the boys section because there is no, there are not enough women. She's the only one. And that's a role model, right there. I don't want to wait anymore. I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, I've gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time races on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Struggle a lot, and they go through a lot of hardships, and I think if people show a little bit of encouragement and support somewhere and help them in some way or the other, they would it would be more than what they need. I hear a voice calling out for me. These shackles I made in a town to be free. Be it for ease, be it for love. I won't take the easy road. I've woken up in a hotel room. My worries as big as the moon. Having no idea what or where I am. Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope, there's a silver lining. Show me my silver lining. Show me my silver lining. I hear a voice calling out for me. These shackles I made in a town to be free. Be it for ease, be it for love. I won't take the easy road. I won't take the easy road, the easy road, the easy road. Oh, I won't take the easy road, the easy road, the easy road. Oh. Show me my silver lining. I try to keep on keeping on. Show me my silver lining. I try to keep on keeping on. Show me my silver lining. I try to keep on keeping on. Show me my silver lining. I try to keep on keeping on. I try to keep on keeping on. Thank you, Kopal. That was a great film, and we wanted to ask you a few questions. So the first question was that how did this idea of doing this particular film originate in your mind?
थैंक यू सर, सबसे पहले मुझे अपॉर्चुनिटी देने को। और लाइक ये प्रोजेक्ट वाइल्ड वुमन का आइडिया मेरे खुद की करियर से इंस्पायर हुआ। तो बेसिकली जब मैंने रॉक क्लाइंबिंग को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो क्योंकि ये स्पोर्ट बहुत नया था और लोगों को समझ में नहीं आता था, तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ते थे, और लिटरली वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए सब कुछ। तो मैंने सोचा कि जब मुझे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और मैं इन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या और भी गर्ल्स ऐसी हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम आती है और वो कैसे फेस करती है। तो ये प्रोजेक्ट वाइल्ड वुमन इस पूरे प्रॉब्लम्स का जवाब है, कि हमें कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती है और वो हम कैसे फेस करके आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो भी वो, हाँ, तो सॉरी, यही है सर। So, Gopal, how many girls are involved in this project, and can you give us a little background of how you were able to get them together on one platform? सो इस प्रोजेक्ट में टोटल 14 वुमेन एथलीट्स हैं, अलग अलग में, फ्रॉम रॉक क्लाइंबिंग टू आइस क्लाइंबिंग, कायाकिंग टू सर्फिंग, लॉन्ग बोर्डिंग, ऐसे स्पोर्ट्स जिनको लोग जानते भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में ऑलरेडी हैं। तो ये पूरे वुमेन को खोजना बहुत ही इंटरेस्टिंग काम, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसी वुमेन एग्जिस्ट करती है इंडिया में, और वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था मेरे लिए। लेकिन ये वुमन मिली मुझे और मैंने इनको शूट किया। तो मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, लाइक उनमें से कुछ वुमन के बारे में, जैसे दिस इज रिंजिंग दोमा भूटिया फ्रॉम सिक्किम। शी इज 32 years old and she is one of the टू टैंडम पैराग्लाइडर इन इंडिया जो कि कमर्शियली फ्लाई करते हैं। दिस वन इज सुनीता चौहान। इनका एक बेटा भी है, एंड नाउ ही इज लाइक 8 or 9 years old। और ये फुल टाइम एक राफ्टिंग कंपनी, जो कि उत्तराखंड बेस्ड कंपनी है, उसके साथ काम करती है। और शी इज अनीशा नायक फ्रॉम मैंगलोर, and she is full time surfer, and she really wants to open her own surfing school in India। सो ये पूरा प्रोसेस था प्रोजेक्ट वाइल्ड वुमन का। और फाइनली इस फिल्म के थ्रू जो मुझे लोगों को मैसेज देना है, वो ये देना है कि चलो प्रॉब्लम्स हैं हमारे सोसाइटी में, बट ये प्रॉब्लम्स ह्यूमन मेड प्रॉब्लम्स है। इट्स नॉट लाइक कि चीजें बना दी गई एंड यू हैव टू फॉलो दोस रूल्स, क्योंकि वो रूल्स किसी की लाइफ का या करियर को वेस्ट कर रहे हैं। तो कल्चर के साथ साथ हम और भी सारी चीजें कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि इफ यू वांट टू पोस्ट दीज काइंड्स पोस्ट, देन यू विल नॉट बी सोशली एक्सेप्टेड पर्सन। ऐसा नहीं है, तुम सोशली एक्सेप्टेड भी हो सकते हो और तुम ये सारी चीजों को परस्यू भी कर सकते हो, ऐसे स्पोर्ट्स को जो कि ग्रेविटी एंड एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आता है, जो कि फुल ऑफ रिस्क है। So, Gopal, what are the typical issues which the girls face at home when they're doing these adventure sports? टिपिकल इश्यूज तो बहुत सारे हैं, लाइक डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें जो तो नोटिस करने तो मिल ही जाएंगी हमको। बट इस फिल्म में, लाइक, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दोज गर्ल्स हैव स्पोकन देयर माइंड, मतलब बहुत ही खुल के उन्होंने सारी चीजों के पे बात की है। जैसे सो दिस पिक्चर इज फ्रॉम द फिल्म इटसेल्फ, जहाँ पे हम चॉइसेस की बात कर रहे हैं कि चॉइसेस क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लोगों को चाहिए होता है कि हम हर किसी को रेगुलेट करें, वन पर्सन वांट्स टू रेगुलेट अनदर पर्सन एंड हिज चॉइसेस, हर चॉइसेस आल्सो। तो इस फिल्म में मैं ये बता रही हूँ कि चॉइसेस इंपॉर्टेंट है, हर जेंडर की चॉइसेस इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक कि गर्ल है तो उनकी चॉइसेस को हम नजरअंदाज करके चल सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम उनके ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए बेसिकली अलग जेंडर को, क्योंकि हम नॉर्मली सोचते हैं कि गर्ल्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं है बॉयज के कंपैरिजन में। फिर वो चीज इसमें दिखाई गई है इस फिल्म में। और फनी चीज ये है कि एक टाइम के बाद लोग सोचते हैं कि अरे गर्ल्स तो का मैरिज करा के उनको सेटल डाउन करा देना चाहिए, क्योंकि वही उनकी लाइफ है, उनका करियर सेट हो जाएगा अगर हम शादी करा देंगे तो। ऐसी बात नहीं, किसी भी एज में, कोई भी एज में हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये फिल्म में बिल्कुल दिखाया गया। क्योंकि मैंने इस फिल्म में फ्रॉम द यंगेस्ट लाइक 16 year old टू 35 years old की वुमेन को कवर किया है, from mother to single, from the mother to little girls who are still pursuing their studies। तो ये सारी चीजें हैं। So, Gopal, what has been the change in the
in the mindset of people who have seen the film? Has there been any change in the way they approach the subjects you have discussed? डेफिनेटली सर, क्योंकि जब भी ये फिल्म अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में गई फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई वुड से, एंड द बिगेस्ट वन वाज रिसेंट बाम्फ। तो वहां से जिन भी लोगों ने इस फिल्म को देखा, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए, और I was really shocked to read those emails because they told me that living in UK is not different from living in India. I mean, कुछ डिफरेंस है, कल्चर ओपन है थोड़ा, बट दे आर ऑल्सो फेसिंग सिमिलर इश्यूज। एंड ये फिल्म देख करके उन्होंने लिटरली उसी पॉइंट्स को हाईलाइट किया जो कि लाइक एक मैसेज था मैंने जो रिसीव किया। सो अभी वो लेडी 50s में है अपने, बट इन हर यंगर डेज शी वांटेड टू परस्यू माउंटेन बाइकिंग, बट नोइंगली और अननोइंगली उसके फादर ने उसको हमेशा ऐसा कहा कि आर यू श्योर, डू यू रियली वांट टू ट्राई दिस स्पोर्ट, डू यू रियली वांट टू गो अहेड। एंड उसको उसकी वजह से उसको खुद के ऊपर डाउट बना रहा, और उसने कभी उस डाउट को ओवरकम नहीं किया। और फिर जब वो पूरी मैरिड होकर के लाइफ उसकी चली गई, और उसने जो भी चीजें स्ट्रेंथ और बिलीफ खुद के गैदर की एक जगह, और उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, वो तो कर सकती थी, वो बस एक लोगों का डाउट था जो कि उसने खुद के ऊपर भी आने दिया, और उसकी वजह से उसने कभी डाउनहिल माउंटेन बाइकिंग की नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि आज वो डाउनहिल माउंटेन बाइकिंग प्रैक्टिस करती है कुछ थोड़ा टाइम निकाल करके। तो मेरे पास बहुत सारे अलग अलग एज ग्रुप्स के मैसेजेस आए, इनफैक्ट खुद के एथलीट्स के मैसेजेस मुझे आए कि स्टार्टिंग में जब मैं उनके पास फिल्म बनाने को गई, तो उनको मेरे ऊपर बिलीफ नहीं था कि मैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी इस पूरी स्टोरी में, क्या स्टोरी स्ट्रक्चर होगा। जब उन्होंने ये फिल्म देखी तो उनको एक्चुअली काफी अच्छा लगा, उनको लगा कि नहीं, लाइक दिस इज समथिंग विच शुड कम आउट, और उनको लगा कि उन्होंने कम एफर्ट्स दिए हैं, बल्कि उनको ज्यादा एफर्ट्स देने चाहिए थे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जो कि सोसाइटी में कन्वे की जा रही है इस फिल्म के थ्रू। Gopal, one more question is that has this film been shown around the world or in other festivals? When can we see the full longer version of the film? फिल्म तो बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई है, लाइक लंदन माउंटेन फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने पीपल्स चॉइस अवार्ड लिया था। फिर अभी जैसे मैंने कहा बाम्फ में ये फिल्म को दिखाई गई थी, और भी बहुत सारे अलग अलग, पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, केन्या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वगैरह वगैरह। IMF इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया था मैंने, और अभी ये फिल्म पूरी रिलीज हो गई है इंस्पायर क्रू के वेबसाइट पे। तो अगर किसी को पूरी फिल्म देखनी है तो दे कैन विजिट द वेबसाइट एंड दे कैन रेंट द फिल्म फॉर 72 आवर्स फॉर सर्टेन पेमेंट, और वो एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और फिल्म रिलीज की गई है जिसमें मैं काफी टाइम से काम कर रही थी, एंड दैट फिल्म इज ऑल्सो अबाउट क्लाइंबिंग एंड पैशन एंड स्ट्रगल एंड फ्रेंडशिप। Okay, Gopal, thank you so much. I think it's a very interesting project you have chosen, and and a very, very relevant project. And I hope that it will continue to greatly support all the women who are involved with you. Thank you so much. Definitely, sir. Definitely. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much for making me part of this thing.